and towards on the right corner there will be Ankit Jat. So that is also a very good contest. You know, I don't have a problem there. What I will also feel for the Aravali Arrows are if their Raiders can't do well. Now that is my only concern. If the Raiders don't get points, it is going to be a tough match for Aravali Arrows. That's why I once again say if Aravali Arrows' Raiders do well against the very set defense of Nilgiri Knights, it will be a good contest. जी हाँ, इंपॉर्टेंट वहां पर क्रम रहने वाला है। बट अब आइए मैच नंबर 78 की तरफ चलते हैं। पलनी टस्कर्स वर्सेस चंबल चैलेंजर्स। और पलनी ने पहला मुकाबला वहां पर जीता था अगेंस्ट चंबल चैलेंजर्स। दूसरे मुकाबले में टाई खेला वहां पर जब आपको सर्वाइवल 2 के नजदीक था। बट नवीन, एक सबसे ज्यादा शॉकिंग अगर कहीं थी ना तो जरूर एक जीत उन्होंने प्राप्त की है। बट पलनी टस्कर्स ने सक्सेसफुल टैकल लीस्ट नंबर में किए हैं। सिर्फ 101 सक्सेसफुल टैकल आपको नजर आते हैं। सक्सेस परसेंटेज जरूर ठीक है 36, बट सबसे कम सक्सेस टैकल करना, इससे पता चलता है कि उनके टैकल 16 सा उतना मजबूती के साथ अभी तक नहीं उभरे हैं। Yeah, they had that problem on that left corner, isn't it? Unless and until Tamil Arasan came in, they had that problem. And even on that right corner, Purushothaman Palanivel is good. But for the Chambal Challengers, the problem again today is how much can you rely on Sanskar Mishra? If you are relying too heavily on him, Sanskar Mishra, of course, he is into the top 3 Raiders list of the Yuva Kabaddi series here in the summer edition. But how much can you rely on him? How much of load will you ask Sanskar Mishra to take on? Because 15 raid points every match? No, that is not right. You know, you need to have Uday coming in. Yesterday we saw Uday. He also raided correctly, but not up to that mark. Because even yesterday, you had to have Durgesh Kumar come in. Even with that dislocated shoulder, he had to come in, he had to raid. And you spoke about the unsuccessful tackles of the Palani Tuskers. Yeah, the only problem is that where the corners were having an issue. If they can probably set that out against Sanskar Mishra, it will be really nice. Of course, Purushothaman Palanivel and Tamil Arasan once again will be tested today. And don't forget, the cover combination also will have to come good. Now, that is what they will be looking at. Harshit, also a few points on the Chambal Challengers defense. I really want Kapil Gurjar to go out there and take up a leader's responsibility in the defense. Yesterday, it was a little bit of an issue for him. He just understood that, he made an error while he was going out there to handshake everybody. But then, the boat had passed the sea. So I'm watching Kapil Gurjar to be that leader, that big brother who can control the defense well. जी हाँ, बहुत जरूरी होगा कपिल गुर्जर के लिए अपनी टीम को लीड करें और एक्सपीरियंस कैंडिडेट वहां पर अच्छा प्रदर्शन करें। बट संस्कार मिश्रा की आपने बात की पिछले कई मैचों से, जब से दुर्गेश ने ये बहुत अच्छा करें। आइए उनके पैकेज की तरफ चलते। लंबे होने के साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ पता है नवीन, और उसी का प्रॉपर फायदा उठा रहा है खिलाड़ी। I will really see Tamil Arasan today utilizing few other techniques, because you cannot stop Sanskar Mishra with only ankle holds. You cannot stop him only with all your dashes from the covers. You need to have something else. You need to have combination tackles. He is very similar to Gagan Gowda, but I'll tell you what, Sanskar Mishra has better escape routes compared to Gagan. So he knows how to escape. He's got the turn, he's got the jump. He's also, making sure that he's running away towards the right corner for the running hand touches. So he's got everything in his armory. So the Palani Tuskers, who are again comparatively a little weaker on the successful tackle rate, they'll have to understand how can they keep Sanskar Mishra quiet. या बहुत जरूरी होगा संस्कार मिश्रा को आज रोके रखना। पर चंबल चैलेंजर्स नवीन, जो में थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स नजर आए थे, उससे एक बात पता जरूर चलती कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेड्स उन्होंने लगाई है 281, क्योंकि 2 बड़े रेडर्स संस्कार मिश्रा और दुर्गेश वहां पर मौजूद हैं। और सक्सेसफुल टैकल्स भी 151, जो कम नहीं होते हैं नवीन, वो अपने आप में एक अच्छा दर्जा है। तो नीलगिरी नाइट्स के बाद अगर इन स्टैट्स को देखते हुए कोई सबसे ज्यादा बैलेंस साइड लगती है तो वो चंबल चैलेंजर्स है। पर क्या आज वो बैलेंस प्रदर्शन दर्शा पाएगी, ये देखना बेहद जरूरी होगा। बट हम सभी ने ऑन द मैच सभी खिलाड़ियों ने बैलेंस करके एक प्लेज ली है और सत्य निष्ठा के साथ इस कबड्डी खेल को बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही साफ और बहुत ही सुथरा बनाने की हमने कसम खाई है। आइए वो प्लेज वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद पलक झपकाते ही शुरू करेंगे आज के दिन का पहला मुकाबला। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport.
So match number 78 Palani Tuskers versus Chambal Challengers, जहां अभी हमने बात की थी कि Palani Tuskers किस प्रकार से टैकल्स में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आई है और क्या Chambal Challengers कल थोड़ा सा अपने आप से हारी थी, क्या आज वो अपने आप में एक बड़ी जीत प्राप्त कर पाएगी अगेंस्ट Palani Tuskers, क्या बूस्टर में पहली जीत आ रही है Palani Tuskers के लिए या फिर Chambal Challengers और कराएगी इस टीम को इंतजार, आइए जानेंगे और समय है दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का। So here's the time to invite both the teams on the mat. Let's invite first the team who needed the momentum to gain the first win in the booster round. Can they boost up and conquer their opponent? Let's invite Palani Tuskers. With the highest number of success rates and a decent number of success tackle, the most balanced side is coming to put a challenge. Let's invite Chambal Challengers. Thank you so much, Harshit. As Chambal Challengers will be looking to get 3 combination, will be once again taking field as Jayasurya Nagarajan finds his way there. That's a good inclusion. Yesterday he did not play. Tamil Arasan and Purushottam and Palani Vel will be in both the corners, and then of course the raiding unit will be making sure that Ajay Muthaiya will be there in the nutrition lines along with coach Ilavarasan. Harshit, good evening, welcome. जी थैंक यू सो मच नवीन। और आइए बात करते हैं यहाँ पर शुरुआती साथ की। सबसे पहले पलनी टस्कर्स के पश्चात किस प्रकार से आज चंबल चैलेंजर्स यहाँ पर एक अपना अच्छा क्रम करते हुए नजर आएगी। संस्कार मिश्रा यहाँ पर आपको एज ए टॉप रीडर नजर आने वाले अपनी टीम के लिए। एम गोपी होंगे, निकेत गायनंदे वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं लगातार। वंश, एक नया नाम यहाँ पर आपको नजर आने वाला है वंश का। क्या वंश अपनी टीम के लिए वो काम कर पाएंगे और अपनी टीम की जीत की वंश को क्या आगे बढ़ा पाएंगे, देखना होगा। उदय कुमार पारते, धीरे धीरे जो इनका सूर्य उदय है ना, जो इनके टैलेंट का सूर्य वो धीरे धीरे उदय हो रहा है और हम यही चाहेंगे इस समर एडिशन में खिलाड़ी लगातार उदय करता हुआ नजर आए। दुर्गेश साहू, रेहान शेख, इन दोनों की कॉर्नर्स की जोड़ी यहाँ पर आपको नजर आने वाली है आज फाइनली। थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे समक्ष जुड़ने के लिए। आप सभी का फैन कोड पर जावेद खान, अभिराम, अक्षय, दुर्गेश कुमार सब्स्टिट्यूट्स में हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है नवीन, इसका मतलब है कि दुर्गेश आ सकते हैं। अजय मारवी एक और अच्छे रेडर हैं जिनकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आएंगे। पर एक बैलेंस साइड की हम बात करते हैं, दोनों ही टीमें आज एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा नवीन। I will only want that Durgesh is not needed, because I don't want the best raider to go out there and make another problem on his shoulders. But look at this, both the brothers, Durgesh Kumar and Sanskar Naveen Mishra, right there at second and third place. Yesterday he just came in for one raid, Durgesh Kumar, and he just finds himself there. But Gagan Glorious Goda, yeah, there is a bit of a problem for him. Can he be the first? Yes, he can be the first raider to reach 150, but can he be that sole-handed raider where he can make the Humpy Heroes win today? But that we'll figure out later. But 2 proper raiders from Chambal Challengers will be against the Palani Tuskers' defense. But speaking about top 3 defenders, still no covers. जी हाँ, और कल तो राजेंद्र भाकर ने 6 पॉइंट प्राप्त किए, तीसरे के तीसरे पायदान पर रहेंगे। 16 मुकाबलों में 42 टैकल पॉइंट्स। अंकित जाट ने अपने 50 अंक पूरे कर लिए। लोकेश गुस्ले को कल एक भी अंक नहीं मिला, उसके बावजूद कोई भी उथल पुथल यहाँ पर रही नहीं है। टॉप 3 डिफेंडर्स की लिस्ट में तीनों अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए हमने वो प्री शो में देखा नहीं कितने ह्यूज नंबर से आज पेरियर पैक्टर्स और अरावली एरोज के लिए टैकल्स में। पर जब सिक्का उछला था, मुकेश कन्नन आज एज अ कोच वहां पर एज अ कैप्टन वहां पर तैयार थे। टॉस जरूर वहां पर संस्कार मिश्रा के पक्ष में गया और चंबल चैलेंजर्स ने टॉस जीता है, कोर्ट को चूज किया है। यहां पलनी टस्कर्स की तरफ से पहली रेड होगी नवीन। Very nice that the beginning once again will be happening, but I am wondering why Ram Kumar has been rested.
But nice to see Jayasuriya Nagarajan back in the fold. Yesterday he was being rested for a little bit of a break. And then today he's back there. The first raider from Palani Tuskers to get on to the 100 raid points. 83.73 the raid strike rate. But very good opportunity for Stuart Singh to be the lieutenant, the second raider for Jayasuriya Nagarajan and support him nicely. But this lad, Harshit, he's promised us that he will take the responsibility from his brother's shoulders. And he's done it. जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से उन्होंने मीठी वाणी में कहा भी था ना कि मेरे बड़े भैया हैं दुर्गेश, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और बिल्कुल वही सीख उन्होंने दिखलाई है। 118 रेड पॉइंट्स। और नवीन, इनका जो ग्राफ है ना, वो पहले बिल्कुल फ्लैट लाइन थी, उसके बाद अचानक से बुर्ज खलीफा जैसा टावर नजर आया है। लगातार कई मुकाबलों में इनके लिए सुपर 10s आए हैं। पर पलनी टस्कर्स के लिए पिछले 2-3 मुकाबले जो है थोड़े से बुलाने लायक रहे। 3 टाई 2 हार, 16 मुकाबले 11 जीत, 68.75 अभी भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। Yeah, as Palani lost 2 games back-to-back. Is it because of the absence of Sanjeevi and Jayasuriya? Right. Aryan Shetty. I think that is how the pronunciation is. Thank you so much, Aryan, for that wonderful question. It is actually 50% right, whatever you have tried and said here. Because Sanjeevi, yeah, you cannot replace him. And yeah, Jayasuriya Nagarajan was just rested yesterday and he is back today. But Sanjeevi is such a big force. And for a few matches, you know, the Palani Tuskers have not made us realize Sanjeevi is absent, as is with the Chambal Challengers. Because you don't realize that Durgesh Kumar is absent. Because the team is doing well. And after Durgesh's injury, can Sanskar lead the Chambal Challengers as a captain and main raider? Anuj Deshpande, 98. Yeah, that's the official name. Right, Anuj, we have seen what Durgesh can do. Because, you know, his injury might not be expected by the team's thinking outlet and everybody. It was a sudden injury of the dislocation. But yes, Sanskar Mishra, wonderful work. He's become, as I said, as a good brother. He's taking the mantle across and he's done a fabulous job. But we will speak more about these 2 questions as the match gets underway. And we will go into the countdown and get this match started and see if Palani can win their first match in the booster round. जी नवीन, तो हमें कुछ अच्छी प्रश्न यहाँ पर नजर आए थे और इन प्रश्नों के साथ हम एक बार फिर से आप सभी हमारे दर्शकों का फैन कोड पर स्वागत करते हैं। एस मुकेश कन्नन यहाँ पर शुरुआत करेंगे। चंबल चैलेंजर्स ने टॉस जीता था। नवीन, सबसे पहले मैं थोड़े शुरुआती 7 पर देखूं तो कल पल्ली टस्कर्स ने थोड़ा सा एक रेडर कम खिलाया था और आज वहां पर फिर से हमें वो देखने को नजर आ रहा है। स्टुअर्ट सिंह है और एज ए मुकेश कन्नन को वहां पर एज ए रेडर आज शायद ज्यादा खिला रहे हैं। पर रामकुमार का बाहर होना नवीन मेरे लिए थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। Yeah, correct. See, yesterday also there were 3 raiders. There's not a problem there because Jayasuriya Nagarajan took a break and instead of Jayasuriya, Ramkumar played. So there were 3 raiders and Mukesh stood there in that left corner or left cover because Tamilarasan was out of form. And it's nice to see Uday Kumar Parthe starting the raid. And see, this is Sanskar Mishra. This is his thinking abilities as a leader. Because your first raid always is not a pressurous raid. See, as a captain, if you're sending in Uday, that gives him so much confidence. You know, first raid, yes, I am starting the proceedings is 1. And point number 2, he's under no pressure in the first raid, right? Now Stuart Singh comes in on the right cover. See, that is why, you know, it's very important. As Gopi Mailipalli escapes from that right cover on that Stuart's running hand touch. As Ilavarasan will also be thinking on the nice line. So that question of, you know, can Sanskar, Abhishek asked us that question. So can Sanskar lead it? Yes, he's been a good leader and Vidala Viswanathan has got the hand touch. We saw the captaincy material from Sanskar. He sent in Uday and in the second raid, he's got a point. राइट कवर पर एक अच्छा टच किया और एक अच्छा शिकार बनाया। शायद अनुज देशपांडे का वो प्रश्न था और आर्यन शेट्टी, दोनों नाम नवीन सुने से नजर आते हैं मुझे। Absolutely, he asked for the Palani Tuskers question, but Jayasuriya Nagarajan in the do or die raid. Yesterday, he got a break day. He got an off. Has he recharged his batteries? Kicks on Gopi Mailipalli, gets him. And Gopi, yeah, he's got the problem there in the cover position. Palani Tuskers does not go back in time.
8 out. जी नवीन, बहुत ही अच्छा और रिचार्ज कर कर आए हैं अपनी बैटरी को। जिस प्रकार से हम जो हमारे स्कूटर्स होते हैं ना, उन्हें रिचार्ज अब करते हैं तो एक ही सेल्फ में वो स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक ही किक लगाई, पर वो इफेक्टिव किक लगाई और एक शानदार कार्य करते हुए एक पॉइंट लाते हुए अपनी टीम के लिए डू और डाई रेड में। Wow, lovely on the vehicles. I'll tell about that. Vansh Mudaliar. Yesterday we had a doubt whether he's from one of the Tamil Nadu districts or whether from somewhere. I spoke to him this morning. I was there in the jogging track. I was running all my jogging abilities and to just get into the folds. Once I met him in the morning, he says my mom is a Telugu speaking person and my dad was from Kanpur and Nagpur, around there. Correction, Nagpur, not Kanpur, correction, Nagpur. Okay, Bonus and he point. plays from Vidarbha Tuskers. as Stuart Singh gets the bonus. Wow. So Vansh Mudaliar is actually playing for Vidarbha in Maharashtra. His dad is from Nagpur. Mom is, of course, a Telugu person. So I asked him, because he's got confusions. Oh, there's no confusion here for Sanskar Mishra. The Raiders left save, cover 2 and the left points. corner. Chambal Challengers. The defense was Number completely 233 disturbed. out. Ajay Mutaya, Tamil Arasan has to go back. जैन दोनों को यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा। देखिए शार्प टर्न वहां पर लिया, तुरंत हल्का सा पॉज लेते वहां पर टर्न किया, चेक किया उन्होंने अपने डिफेंडर्स को। तमिल अरसन का भी साथ आना चाहता था अजय मुथैया के साथ, बट दोनों को टच करके चंबल चैलेंजर्स के लिए 3 अंक निर्धारित कर चुके अभी तक संस्कार मिश्रा नवीन। In that right in position. I was speaking to Vansh, I said in the morning. So Vansh has a little bit of a doubt whether it's Tamil or Telugu because he's not able to differentiate. Running and touch. I think he's got a raider from that left in Raiders position. save, Jayasuriya. 1 point. Very Only good. Tuskers. You couldn't Number have the 17 cover out. to come in. I think Uday is not happy. Yeah, he's asking the covers why you guys did not come in. Yeah, because it was Gopi Mailipalli. He did not have that confidence to go in. But yeah, speaking about Vansh Mudaliar, I started to speak to him in Tamil, thinking he's a Tamilian because Mudaliar is a very, very Tamilian name. I said, why? No, I don't know Telugu. I'm speaking in Tamil. He says, I don't know Telugu. But here, Sanskar Mishra knows how to get escaped from the Raiders dash. save, 1 Virdale point. is having a Chambal problem. Challengers. Number 1 out. परफेक्ट यूज ऑफ लॉबी, राइट रेडर टर्निंग राइट, जो हम अक्सर गगन गौड़ा की सेम यही बात करते हैं। सेम वही टैकल आया, राइट कवर से जरूर उतना बेहतर कॉम्बिनेशन में नहीं था, बट संस्कार मिश्रा ने कहीं ना कहीं दिखाया कि गगन की परेशानियां कहां पर है, जिसके बारे में हमने लगातार पहले हाफ में और वहां पर प्री शो में बात की थी, कल के पोस्ट शो में बात की थी। तो गगन भी अगर ये मुकाबला कहीं ना कहीं देख रहे होंगे तो वो स्वयं समझेंगे। बट स्टुअर्ट सिंह ने यहाँ पर राइट कवर पर शिकार बनाया है। एम गोपी बहुत कम यहाँ पर मना करते हैं जब उन पर टच होता है। यहाँ लीजिए पहले लेफ्ट कॉर्नर से, उसके बाद राइट कवर से अटैक। Raiders save. Raider 2 points. save, 2 Only Tuskers. points. Right. This 8 is and 7 interesting. out. Number 8 and 7. And that left corner went in for the ankle hold. 8 and 7. Stuart Singh first was claiming against Gopi Mailipalli. Oh, that was very late. That was very, very late. And Stuart had all the time in the world. He was so close to the midline. They should not have attacked him. Rehan, come on. Right. You should not have gone in. I think Rehan Sheikh went for it because Gopi Mailipalli came in. That is why he was actually sucked into that attack, or else he could have gone back. Tamil Arasan will not attack Sanskar Mishra. He knows that the bonus point, is an evident Chambal one. Challengers. Gets it. Yeah, just going back to Vansh Mudaliar, interesting story. So he said, I don't know Telugu. I said, no, I'm talking Tamil. So I asked him, listen, today, after the match or after your practice, go back, talk to mom, ask mom whether she is a Telugu person or a Tamilian. ओके, And he's not yet come back to me with the answer. I think he was busy practicing. And Mukesh Kannan is busy getting the Raiders point save, against 1 point. Durgesh Sahu Only on that right Tuskers. corner. Just क्या number दुर्गेश 4 out. साहू, प्रदीप जी कह रहे हैं काहू को यहाँ पर आप टैकल करने गए थे। लीजिए यहाँ देखिए थोड़ा सा दूर निकल गए थे ऑलरेडी, और ये बोला जाता है थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की भाषा में अगर हम बात करें कि काहू करने गए थे भाई तुम, तो वहीं दुर्गेश साहू को प्रदीप यादव साहब ने यही कहा होगा। Nice, very nice on the wordplay. I thought it was a little bit of Rajasthani on that, isn't it? Kahu? No? नहीं, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, ये रायपुर की अगर मैं बात करूं, मैं एक क्रिकेट टूर्नामेंट वहां कर रहा था, बट यहाँ संस्कार मिश्रा की बात करें तो इनकी भी वो जो टोन है ना नवीन, बड़ी प्यारी टोन, मीठी टोन जिसे आप कहते हैं ना। हमने जब इनके साथ इंटरव्यू किया था, इन्होंने वापस आकर हमसे पूछा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। Yeah, he asked us that. But yeah, Stuart Singh has started off well. He's taken the opportunity with both hands. Ilavarasan has trusted Stuart Singh. Even yesterday and today tries the kick. No, there is no defender
Go out there, go for it. But Durgesh says, I am Raider around out. because 1 point. Sanskar Mishra is Chambal around. Challengers. This is so much Jersey number Durgesh's 9 out. tackle, isn't it? From that Yeah. right in. Wow. वाओ नवीन, जस्ट ऐसा लग रहा है कि संस्कार मिश्रा ने दुर्गेश कुमार को पी लिया है, घूट कर पी लिया है। बिल्कुल देखिए, जो कार्य दुर्गेश करते हैं ना, वो सारे काम कर रहे हैं। टच पॉइंट ला रहे हैं, मल्टीपल रेट पॉइंट्स ला रहे हैं, बोनस ला रहे हैं, और अब तो टैकल्स भी कर रहे हैं। इनकी पोजीशन से एक अच्छा सरप्राइज टैकल था। तारीफ करनी पड़ेगी संस्कार मिश्रा, मैच्योर्ड गायब नजर आ रहे हैं, और कितनी अच्छी अभी अपनी मैच्योरिटी, अपनी फॉर्म को लेकर जा सकते हैं। ये उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। बट उदय इस बार कोशिश करते हुए लेफ्ट कवर पर अटैक करने की। Oh yeah, Purushottam Palani. Hang on, guys. Vidudalai, yeah, does not come in for the dash. Let's go back to that tackle once again from Sanskar. We will see why the tackle was so interesting as Mukesh Kandan comes in. If that does not happen, look at this. No left corner, no right corner. Both were raiders. One Smudaliar and Uday. Look at that, what he did. Wonderful work. That is why we appreciate him. Mukesh Kandan has gone in, has a running hand touch. This time, when a defender is there, they've got a point. अनिकेत अपने आप को पीछे नहीं कर पाया, और अनिकेत Palani Tuskers. अपने आप को पीछे करने में Number वहां पर 3 उतने out. माहिर है भी नहीं। जब वो अटैक करने जाते हैं, जब जरूर अच्छे डिफेंडर के तौर पर नजर आते हैं। इस बार देखिए, अच्छा टच और स्लाइड जो पॉज था ना, उस पॉज के बाद उन्होंने रश किया लेफ्ट कॉर्नर पर, और एक अच्छे हैंड टच वहां पर प्राप्त किया। अब टू और डायरेक्ट है, अब कहीं ना कहीं परेशानी होगी यहाँ पर। बट पल्ली टस्कर्स के पास अच्छा मौका है, पर टर्निंग द पेजेस अराउंड, राइट कवर मुकेश कन्नन, और साथ ही साथ ज्यादा विद्युत 2 थलई। points. Oh Chambal my Challengers. God. Jersey number Is that a 111 left out. hand thumb finger which has been a problem now for Sanskar Mishra? Ilavarasan is not happy with the defense, but Sanskar Mishra there. And I am still not understanding why Right. the covers are not in the chain. Oh, thankfully there is no dislocation. Thankfully it's just a scrub on the skin for Sanskar Mishra. Ankle hold attempted by Durgesh Sahu. Once again, Jayasuriya Nagarajan wants the bonus also along with that. He escapes Bonus the ankle plus 1 hold. point. Palani Tuskers. Yeah, wonderful work. Number 4 out. No bonus. जो यहाँ बोनस जरूर, ओ क्या पहले वहां पर जैसे आ रहा था पैर, वहां पर एंकल होल्ड के लिए चले गए दुर्गेश साहू। पर नवीन, बिल्कुल आपने एक बात शायद कल कही थी कि दुर्गेश साहू इंजरी के बाद वो वाले दुर्गेश हमें नजर नहीं आए हैं, जो बीच में उन्हें हेड पर शायद इंजरी आई थी। उसके पश्चात से उनके वो जो ग्रिप्स हैं एंकल होल्ड वाली, वैसी नजर नहीं आई है। पर संस्कार मिश्रा की जंप्स और पहले से कई गुना बेहतर हुई है। फिर से राइट कॉर्नर अटैक करने गया, एक अच्छी जंप आई, एक और खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक से आया, तमिल अरसन, जो कि वेस्ट होल्ड करके डैश करने गए थे, और थोड़ा लेट था। How much of escape routes that is planned in his mind? Watch that. First the jump, then he's towards the lobby, then he turns around his body, and Tamilarasan had no clue. See, that is what we also spoke in the pre-show, isn't it? As he's got many escape routes there. We can see him on the top of the screen. He's not getting involved in the tackles because he's got a bit of a cut on the thumb where he was trying to escape the previous Bonus pointers. point. Palani As Tuskers. once again, Jayasuriya gets the bonus. So yeah, that's very good. So he's raiding continuously now because he knows Palani Tuskers is just 4 on the mat. So he does not want to give that momentum going. Does not have to keep on raiding. Left Raider corner out. was being 1 filled point. up with Ajay Palani Muthaiya. Tuskers. Strong double ankle holds. जी अच्छी डाइविंग, बहुत अच्छी डाइव आई इस बार अजय मुथैया की तरफ से। चाहते थे संस्कार थोड़ा सा अंदर जाएंगे, और नवीन मुझे लग रहा था कि उदय या फिर वंश को करा देनी चाहिए थी रेड। ऑलरेडी आप थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड से स्ट्रगल कर रहे हैं, और 4 के हाउस में आप मेन रेडर हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो रिवाइवल इनका भी इशू रहता है, पर अभी सही समय पर कोच ने टाइम आउट मांगा है। All right. Ilavarasan says, don't stop getting the raid points. Just go out there and keep on getting the raid points. Offense in irtadinga, that's what he said. So he wants the Raiders to keep on getting points, as the center referee is also a Kannadiga. He speaks the local language here. As Stuart Singh once again comes across. And now, no Sanskar Mishra. Can Palani Tuskers look at this as a small window? Gopi Mailipalli should avoid such Header errors. safe. 1 point. Once again Palani from that Tuskers. right cover. Jersey number 8 out. I feel for this player, Arshit, because I asked him in Telugu. He's a Telugu-speaking guy. I asked him, Gopi, are you a raider or a defender? Touch your heart and tell me. First he said all-rounder. Don't tell me that. First thing I said, please don't tell me that. I want the numbers to prove that you're the all-rounder, or at least the skills. But then I asked him, really who you are? He said, I'm a raider. I want to raid. I like to raid more. I am a raider. And he's been forced to stand there in the covers.
And that's why he's making such errors, and that's why the opposition gets him all along. And Ajay Muthaiya, being a defender really from 1 point. inside, Chambal makes that error. That's Jersey revived number Sanskar 2. back. चाहिए बड़ी गलती हुई अजय मुथैया से। अब इससे पहले हमने उनकी तारीफ की थी एज लेफ्ट कॉर्नर, उन्होंने डाइव लगाई थी संस्कार मिश्रा पे, पर बॉक लाइन के इतने आगे से और उधर तुरंत वहां पर चले गए थे, कोई सपोर्ट का वहां पर एंगल बना नहीं। पर स्टुअर्ट सिंह और चंबल चैलेंजर्स के भी सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट आया है नवीन, वो संस्कार मिश्रा ने प्राप्त किया था। तो पल्ली टस्कर्स की सोच अच्छी है कि अटैक करेंगे, बट हमने कहा, रेहान ने सुना और बोला कि लीजिए टैकल पॉइंट आ जाएगा आपके लिए। Strong single thigh hold. I think Stuart Singh was looking at the covers. Look at his eyes. Ah, there. He was looking at the covers and wanted to go for the kick. Yeah, he knows it. He knows the mistake. 1 minute second of a pause by a raider on the footwork. And Rehan says, that's enough for me. Now, Sanskar Mishra is back with a little bit of a treatment onto his left thumb. Just watch out for those thumbs and fingers, Sanskar. Need to be out there in the absence of Durgesh. But what Palani also has done very nicely is, Harshit, of course they have been unable to stop Sanskar Mishra, but the Raiders, yes, they have got points on multiple times. As you said, the defense is not working out for the Chambal Challengers, and that is what Ilavarasan also said. Don't stop the raiding. Don't stop getting points. That's all he wanted. And we spoke in the pre-show, isn't it? It's going to be Tamil Arasan versus Sanskar Mishra. And until now, Sanskar Mishra has done well. Jayasuriya steals another bonus. जी हाँ, एक और बोनस यहाँ पर जयसूर्य नागराजन की तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छा बोनस। और नवीन, ये कॉन्टेस्ट जो है ना, मुझे लगता है 1-on-1 कहीं ना यही देखना बहुत जरूरी होगा, क्या चंबल चैलेंजर्स का फायदा उठा पाएगा, और संस्कार जब बाहर जाएंगे चंबल चैलेंजर्स पैनिक कर सकते हैं। Yeah, definitely. That's what it takes us back to that question, isn't it? You know, where we were being asked, in the absence of Sanjeevi, can the Palani Tuskers go ahead and do well? Yeah, that is the challenge. Sanjeevi cannot be replaced, agreed, but Jayasuriya Nagarajan is trying to live up to the expectations. Now in a do-or-die raid, Sanskar Mishra, he's lived up to the expectations of the absence of Durgesh Kumar. Under 4, and Purushottam Palani, of course, on that right corner will be Vidal Vishwanathan. Surprise tackle comes in from the right end position. That is a wonderful way. Mask Mukesh Kannan. Beautiful. It was surprise and Sanskar didn't know about it. जी हाँ नवीन, और जैसा ही आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हल्का सा पॉज अगर आप लेते हैं और उसके बाद एक्सीलेट करने जाते हैं, उनकी निगाहें दूसरी तरफ थी। बहुत अच्छी तरह से मुकेश कन्नन आए और जंप के साथ साथ खुद भी खड़े हुए मुकेश कन्नन। इससे पता लगता है कि वो जंप को धीरे धीरे नलिफाई करने का प्रयास है मुकेश कन्नन की तरफ से। उन्होंने बैंड होकर दोनों थाइस पर गए थे, पर धीरे धीरे खड़े होते चले गए। और अब संस्कार बाहर है, जयसूर्य नागराजन के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चंबल चैलेंजर्स से थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। पर पलनी टस्कर्स संस्कार को बोनस अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोनस के लिए वहां पर कहीं नहीं है। एक अच्छी किक, वंश इनके खिलाड़ी क्यों उसके लिए चले गए थे, और जयसूर्य नागराजन ने उसका पूरा इस्तेमाल किया, फायदा उठाया। No coordination in the defense at all. When a raider is running towards the left corner, as an in defender, Uday, what were you trying to do? He was just trying to shake hands with Jayasuriya, is it? No, he does not like to shake hands. He says, take my leg. Right. He kicks you off. And see, when Sanskar is not there, Uday should have been there, probably there, just could not control from, going back from that position. Oh, unbelievable. That coordination error shouldn't have happening there. Vansh Mudaliar, I think that was from that right-in position, did not go back in time. They will allow the bonus because they don't want Sanskar to come back. No, he's not got the bonus. He's shocked. जी उन्होंने बोनस अलाउ किया था, बट बोनस लेना भी एक कला है, और उदय वहां पर नहीं ले पाए। राइट कॉर्नर पुरुषोत्तमन, लेफ्ट कॉर्नर वहां पर तमिल रसन नजर आ रहे हैं। मुकेश कन्नन यहां पर आपको नजर आते हुए दिखाई देंगे, अच्छा कार्य अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। क्या ज्यादा अंदर जाएंगे इस बार दुर्गेश साहू की तरफ? सिर्फ 2 टैकल पॉइंट मिले हैं शुरुआती क्षणों में चंबल चैलेंजर्स को। 15-12 का स्कोर है। मुकेश कन्नन थोड़ा सा फुटवर्क दिखाते हुए वापस आएंगे। बोनस का फिर से मौका होगा उदय के पास, बट बोनस के साथ साथ टच पॉइंट लाना होगा अगर संस्कार को रिवाइवल कराएंगे। First of all, I want him to go out there and try out the bonus point, especially against, Jayasuriya Nagarajan. Jayasuriya is a raider, and see, look at that. Purushottam Palani is having an angle for the back hold. He's not going it down. He's not going low for the ankle holds. It was a very good opportunity, Uday. Come on, think on those terms. Oh, Tamil Arasan goes for a pursuit because he knows that the next raid, it's going to be a Dora raid for Chambal Challengers. Tamil Arasan stand there, waste the time. Yeah, very good thinking. Don't come back until the 15 seconds are over. Let's come back in the 29th second. A good pursuit. He's thinking nicely. And now a do-or-die raid is inflicted.
Oh! He's been thrown into the grinder. Gopi. या एम गोपी अब देखते हैं इन्हें पसंद रेड लगाना जरूर, बट ऐसी सिचुएशन में जरूर ज्यादा पसंद नहीं होगा क्योंकि पहली रेड है इनकी और इस मुकाबले की पहली रेड 2 और चाय रेड में सिर्फ अभी तक फुटवर्क दर्शाया है, बट ऐसे बॉकलाइन पे फुटवर्क दर्शाने से कुछ नहीं होगा। या तो आप एम मुझे अथैया पर अटैक करेंगे, बट एम गोपी ने इस बार तमिल अरसन के कमजोर ब्लॉक को नलीफाई करते हुए निकले मिड लाइन के बाहर। I'll tell you what, he did not even cross the balk line properly. To make the raid legal, he was just playing outside the balk line. He did not come in and change over to that balk line point. And then Tamil Arasan should have actually understood that one. It gave away an easy point on that occasion. And now, I think that 1 point has created a bonus opportunity here for Jayasurya Nagarajan. But don't worry, Sanskar Mishra is back. He's ready for the ankle hold. Watch out, Jayasurya. And no, he's anti-crossed. He's anti-crossed there, Aniket. Oh, that is such a good dash. But then his legs, his left leg could not be in the field of play. Oh. हाँ जी, ये जयसूर्य नागराजन की यहाँ पर ताकत थी। पहले देखते हैं कितना निर्णय जाएगा। रेडर जरूर सेफ है, ये तय है। Safe, 2 points. Palani Tuskers. Number I think 3 Chambal and should 4 challenge out. this. Sanskar will go for the review. If he's very confident, he will go for the review. Yeah, Pradeep says, yes, go for the review. Because there was an anti-cross from Aniket. That's what it looked like. It was being given as 2 points. Jayasurya and Amar Verma, everybody comes along. Now watch this. That's 2 points. That's it. Simple. So when that happens, it's just 1 point, and the 2-point verdict might have to be revised or rechanged. That they've given the verdict, they let them allow the review to happen, because the on-field referees have given a decision. Now don't go back and change it. No, don't do this. Number 3 out. Stop doing this. Just try and give the team the review, because they wanted the review. Give them the review. Number 3 out. This is what has to be avoided a little. Right. See, Yuva Kabaddi series is a platform where it is, I say that's a very easy anti-cross. It's a platform for everybody, Ashwin. Players, referees, coaches, everybody are learning. I think this is the first time on screen. The center referee was there. Oh, has he gone in? I think he has. The ankle hold was kicked and the covers, he went under the covers. I think he's already got a super raid in this raid. वाओ, जस्ट अमेजिंग। तमिल अरसन का एंकल होल्ड आया था, लग रहा था कि राइट कवर से सही सपोर्ट आएगा, पर सांप के तौर पर वो बिल से ऐसा निकले कि मिड लाइन को क्रॉस करके अजय मुतैया वहां पर नाखुश हैं। बट नाखुश किस पर हैं, थोड़ा स्वयं पर भी होइएगा, क्योंकि अच्छा मौका था। कम से कम 4 पॉइंट यहां से नजर आ रहे हैं और शायद दिए गए हैं। Jayasurya says only 3. Oh my God, 5 defenders are standing out there. Let's listen to it. TV umpire, Palani Tusker challenge is only 4 points. Our decision, 5 points. Please review. My God, the decision came in as a 5-pointer raid. That's happening for the first time in the summer edition. I think there is a bonus, definite bonus. Ajay Muthaiya goes for the ankle hold. He slips out. Yeah, that's a bonus for sure. Don't bother. Yeah, that's 1. Okay, that's point number 1. Ajay Muthaiya goes for the ankle hold after the bonus attempt. So, okay, Ajay Muthaiya is 1 defender. And the problem of not having a chain, that's the biggest problem. Vidya Viswanathan comes in, does not have a dash. 1-2 with Mukesh Kannan, and then Purushothaman Palanivel. Now, before Purushothaman, I think that's what it is. That's what it is. But nevertheless, it is a 4-pointer raid. Bonus plus 3. I think, Ajay Muthaiya and Mukesh Kannan, Vidya Viswanathan, and Purushothaman Palanivel. So it's a 5-pointer raid. Without 5 defenders going out, bonus plus 4. What a turnaround from Sanskar Mishra. I think this is just my books. It depends on the decision of course, Rambir Singh. Let us see what he says. We are just speculating this one. जी यहाँ पर क्या बुलडोज किया यहाँ पर संस्कार मिश्रा ने। अजय मुथैया की तरफ से फिर से एक और बार एंकल होल्ड आया था और जिस प्रकार से मछली जो है गोताखोर जिस प्रकार से है वहां पर समुद्र में डुबकियां खाता है उसी प्रकार से तेजी के साथ संस्कार मिश्रा गए मिड लाइन की तरफ रश किया, क्रॉस किया। जरूर 5 डिफेंडर शायद बाहर नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम अवेल जैसा हमें देखने को आया है अभी तक उन्होंने बाद में टच किया, बड़ी 5-पॉइंटर रेड नजर आई है रिप्ले से। जरूर रामबीर साहब थोड़ा सा समय लेंगे, कूल माइंड के साथ थोड़ा सा निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। बट संस्कार मिश्रा, इसलिए हम इस खिलाड़ी को इतने स्प्लेंडेड खिलाड़ियों के तौर पर देख रहे हैं। मजा आ गया सच में। Review successful. Review successful. Bonus plus 4. Challenger. Yeah, Number 2, 1, wonderful. It's a 5-pointer raid nevertheless.
And it's Ajay Muthaya, Vidala Viswanathan, Mukesh Kannan and Purushothaman Palanivel. That is what the lineup is. Not a good one. Really, this is a big blunder from Substitution. Purushothaman. He Chambal should not have Challangers. gone in for the ankle hold. And when he went in for the ankle hold, the support did not come in the 44 chain. out. So, 2 errors against Sanskar Mishra. That itself is more than enough for him to wipe out the entire defense. Stuart Singh does not touch in. So that is nice. And for the first time, Chambal Challengers are in the lead in this match. And it's all courtesy their captain, who's been a superstar in those raiding departments. And now Jayasurya, he's attempted the bonus. Let him once again go for it. Yeah, I think they've given away the bonus point. He needs touch point. Will he take the risk? And they need a defender, by the way. Just stop Sanskar Mishra. He will run in quickly. Bonus point. Yeah, Palani bonus is Tuskers. given. Come on, go for the substitute. They're not going in. Let's watch that once again. That's bonus. 1 Ajay. 2, of course. Oh, he's got a hand touch. No substitute. 1 point. What is Chambal Ilavarasan Challengers. thinking? Jersey Come number on. 9 out. You had got Ayanathan Ranganathan on the bench, Ilavarasan. जो दोनों रेडर्स यहाँ पर स्टुअर्ट सिंह और जयसूर्य नागराजन दोनों वहां पर आपको रेडर्स नजर आ रहे थे और बड़ी आसान से यहाँ पर टच किया। जयसूर्य नागराजन वैसे भी अटैक करने नहीं जाते क्योंकि वो चाहते थे कि अंतिम रेड वो डाले, एटलीस्ट एक बोनस वहां पर कमाए। तो ये जरूर यहाँ पर एलेवर्सन साहब की तरफ से मिस्टेक हुई है। बट यहाँ देखिए नवीन चंबल चैलेंजर्स ने मिस्टेक नहीं की है। जावेद खान को ऐसा एक्स्ट्रा डिफेंडर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके बुलाया गया है। रेहान शेख कहाँ खड़े हैं? राइट कॉर्नर पर ध्यान दीजिएगा। दुर्गेश साहू कोई चेन में नहीं है, डाइव के लिए तैयार है। क्या जावेद की तरफ अटैक कर सकते हैं? क्या रेहान की तरफ जाएंगे या फिर अनिकेत को टच करेंगे? I will tell you what, it's a trap. It's actually a trap that they are leaving out the bonus so much. And good touch, Jayasurya turned around, does not go into the trap. Oh, I was liking the running hand touch from the right side. 1 plus 2, 3 You know, when points. the Chambal bonus was Challengers. open, you All saw out, Aniket Palani Ganade in that left cover playing such a high line defense. All in. That was actually a trap. When Jayasurya goes for the bonus, Aniket will come in. But then he turned it. This kick was nice. This kick was very nice. But then he After changed his 10 the mind court. to go and say hi to Javed on the frontal block. All out inflicted by Chambal Challengers. Yeah, very tough contest this. The first half completely belonged to the Palani Tuskers, but especially after that 5-pointer raid, at least when it was 1 minute 20 seconds on the clock of the first half, it has completely gone towards the Chambal Challengers. Yeah, as expected, both the sides, the defense is actually struggling. That all-out point has actually given Chambal Challengers the lead for 4 points. Let's put a short break and come back soon to see the next 20 minutes of this match. Welcome back, and this is the highest way of how that question needs to be answered once again. We had that question before the match began. We were asked that can Sanskar Mishra do it in the absence of Durgesh Kumar, and he can make sure the Chambal Challengers reach the summit round? Yes. This is the answer, and that is why, Harshit, it is so nice to have those questions coming in the start of the match, where we can get along the answers along with what is happening in the match. Yeah, it is good for the Palani Tuskers for most half, but this raid where he just scrubbed his right thumb a bit, but after that 5-pointer raid, that is where Sanskar Mishra showed what he can really bring to the table. Yeah, the defense of the Chambal Challengers and the Palani Tuskers have struggled both sides. Sanskar was tackled out on a couple of occasions, but this was a big error. You should have let Gopi Mailipalli go out there in the do-or-die raid at this rate. 5-pointer raid, bonus +4. And after that, Palani Tuskers were inflicted by the all-out by Chambal Challengers. So, I think who was asked the question, they've got the answer about Sanskar Mishra.
जी हाँ, संस्कार मिश्रा ने तो बिल्कुल उत्तर दिया है और कहते हैं ना कि छाती ठोक कर उत्तर दिया है। जो उनका परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया है। बट ये एम गोपी के लिए अच्छा रहने वाला है। टॉस जीता था वहां पर चंबल चैलेंजर्स ने, इसलिए दूसरी हाफ की पहली रेड वो लगा रहे हैं और एम गोपी वहां पर आए हैं। अच्छा कार्य यहाँ पर कि एम गोपी को डू और डाई रेड ने कहीं ना कहीं विश्वास जीता होगा चंबल चैलेंजर्स के कोच का, कप्तान का। यहाँ एम्प्टी रेड के साथ जरूर वापस जाएंगे। बट वो जो अंत में आते आते पहले हाफ में पलनी टस्कर्स को ऑल आउट दिया चंबल चैलेंजर्स ने, क्या जो मोल लीड है यानी कि बहुत ही छोटी लीड है, उससे क्या एक बड़ी लीड यानी कि माउंटेन लीड बना पाएंगे, देखना होगा। बट जयसूर्या नागराजन को अच्छा करना पड़ेगा। क्या बोनस प्लस टच पॉइंट्स के लिए लगातार जा सकते हैं? दुर्गेश साहू की तरफ बोनस के लिए जाएंगे, ये तय है। बट एक एक्स्ट्रा डिफेंडर जावेद खान को उतारा है। मुझे लगता है नवीन एक कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रेटेजी है। और किसकी जगह उतारा? मुझे लगता है वंश की जगह है। इस बार दुर्गेश साहू का अटैक आया, मुझे लगता है एम गोपी भी बाहर गए, 1 ईच पॉइंट मिलने वाला है। Yeah, that is what it looked like. Durgesh Sahu says no. He's not agreeing to it, but Jayasuriya Nagarajan has been tackled out. After the all-in, the first raid of the second half has begun in a very nice fashion. Aniket, he's bleeding on the nose. Right, left cover comes in with the dash, along with Gopi Mailapalli. Right, I think it is Gopi. Has gone out. Right, along with Jayasuriya Nagarajan, but why was Aniket going out? Right, a little bit of an issue there because the right defender needs to go out. See, if Aniket goes out, we'll have to see when Uday comes back. I think he'll have to just attempt a bonus and come back. There's a big gap between the right in and the right cover. Yeah, does not utilize the gap. Comes back. Gopi standing there. Gopi standing there. I saw Gopi bounce off the lobby and go outside. See, it's so important to send the right defender. Because when Aniket would have been there, it would have been nice. What was Rehan Sheikh trying to do? He was trying to go for the toe touch, Rehan, on the radar. ऐसे पलट गए थे जैसे कि वो सेम टैकल करने जा रहे थे जिस प्रकार से उन्होंने पहले सिंगल था होल्ड किया था। बट यहाँ देखिएगा, ओ जाना चाह रहे थे उतनी समय पर स्टुअर्ट ने अपने वो पॉज नहीं लिया। क्यों? पिछली बार वो टैकल सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि वो मिनी सेकंड का पॉज था और इस बार कोई पॉज वहां पर नहीं था। बट संस्कार मिश्रा नवीन 23 पॉइंट्स में से 15 अंक ऑलरेडी वहां पर प्राप्त कर चुके हैं। टोटल पॉइंट्स वहां पर 13 उन्होंने टच पॉइंट लिए हैं और बोनस अंक 2 लिए हैं। तो क्या शानदार सुपर चैन और कुछ अंक है और मुझे लगता है कि कम से कम 2 अंक है। अगर कहीं और खिलाड़ी का टच था तो एक और सुपर रेड है। It was a do or die raid and they have given away 3 more points to Sanskar Mishra. What is happening, Palani Tuskers? It was a do or die raid. Let him take the bonus and go back. Why are you feeding him with such a nice fest of raid points? Look at that. No, bonus was not right. Bonus attempt was not there. He was just faking the bonus. He was just provoking Tamil Arasan. That's it. And then all those cover defenders also need to go out. And Ayanathan Ranganathan was being substituted in. Right corner comes in. Stuart Singh is turning around as a nice savior. Gets another point. Much, much important as they keep on chipping away with single points at least. जीआई का चक्रम वहां पर दुर्गेश साहू बॉक लाइन के बहुत आगे से दोनों थाइस पर गए थे, पर जैसे ही जो टर्न था वहां पर तुरंत वहां पर मिड लाइन की तरफ निकले और एक अच्छा पॉइंट स्टुअर्ट को मिलता हुआ। और नवीन कवर्स की भी गलती है ना कि अगर आप संस्कार मिश्रा जैसे टॉल रेडर्स की डायरेक्शन को नहीं बदलेंगे ना तो वो आसानी के साथ मिड लाइन की तरफ रश कर जाएंगे। लोअर बॉडी पर अटैक करने गए थे कवर्स भी तमिल अरसन के साथ, तो आसानी के साथ अपर बॉडी के साथ उन्होंने फ्लो को बनाया नवीन। Yeah, we'll see that again because I'm sure Sanskar will be just going in for an empty raid. Can we go back to that raid of Sanskar Mishra where he got those 3 pointers, the 3 points that he just got on a super raid? See what happened there when the ankle hold was attempted. Tamil Arasan was standing way behind. That was mistake number 1. Mistake number 2, once again, no chain tackle. When you don't have a chain, that's been a problem. But look at this. Aniket and Gopi in a chain tackle, they come. And even then, Jayasuriya jumps over Aniket. Even though there was a chain, the dash was not powerful. But that is a good strategy to go. But Jayasuriya jumps over them. पावरफुल, ये जयसूर्या नागराजन की ताकत थी वहां पर। जिस तरह से दोनों जो डिफेंडर से ज्यादा बड़े कद के नहीं थे और इसलिए डैश आया, बट जयसूर्या नागराजन ने उन दोनों को वहां नीचे करते हुए बहुत ही अच्छा हैंड जो है मिड लाइन के बाहर करा। टीवी अंपायर, पल्ली टस्कर चैलेंज इज 3 पॉइंट, अवर डिसीजन 2 पॉइंट, प्लीज रिव्यू। Why do they have to get this review? It was very dicey on that occasion by Jayasuriya. He wants a bonus, is it? No. He wants a 3rd point on the kick. It was very far.
It's very, very far. Rehan Sheikh is not even closer. But here, did Javed have his hand? Oh, right. Looks like not conclusive. Not conclusive. But here, behind, Rehan Sheikh also, did he also come in? Right, so Javed Khan and Rehan Sheikh, both of them from the corners, actually have escaped that one. That's what it looks like. And Durgesh Sahu not on the mat. Rehan Sheikh has gone in from the left to the right corner. And why is Aniket Gainande standing there? Javed came in. Right, interesting. जी हाँ, रेहान शेख इन कंटेंशन है। पहले वो किक तो नहीं थी और क्या उसके बाद जयसूर्य नागराजन को बाद में एंकल्स को पकड़ खींचने के प्रयास में रेहान शेख वहां पर टच में थे। पर देखते हैं कि यहाँ पर रामवीर साहब का निर्णय भी आना शेष रहा है। पलनी टस्कर्स का दूसरा रिव्यू लिया गया है इस मुकाबले में। पहला रिव्यू उनके पक्ष में गया था और बता दें हमारे सभी साथियों को कि एक ही रिव्यू पर टीम यहाँ पर अलाउ है, पर मुकाबले में एक सक्सेसफुल रिव्यू, अनसक्सेसफुल रिव्यू आप ले सकते हैं। Not necessary, isn't it? When you're trailing down and when you have Sanskar Mishra chipping away with multiple raid points in every raid that he comes along. Review unsuccessful. Unsuccessful as expected. Only 2 points. Palani Where Tuskers, did they even over, no more review. feel that there was a third point? Because let's see that replay once again. Rehan Sheikh, no kick on him. That's clear. Aniket Gainande and Gopi, yes, very clear. And Javed also retracts back in time. He comes back in time. Good thinking abilities from both the corners. जी हाँ, जैसे ही जावेद ने देखा कि जयसूर्य नागराजन वहां पर तेजी के साथ जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पीछे की तरफ किया। अब 3 पॉइंट की लीड बची है चंबल चैलेंजर्स के पास। अगर पलनी टस्कर्स का डिफेंस संस्कार के विरुद्ध गलतियां ना करें तो जरूर ये लीड बड़ी जल्दी कम कर सकता है पलनी टस्कर्स। पर संस्कार मिश्रा सिर्फ अभी तक वही सोच उनकी रही है कि लेफ्ट कॉर्नर तमिल अरसन को इस बार अपने हॉर्सेस को थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा, अपने क्रम को थोड़ा कर पचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ने ज्यादा ओवर ट्राई नहीं किया है। आउट ऑफ द बॉक्स तो ज्यादा नहीं करने गए हैं कि कवर पर ज्यादा अटैक करने गए हो, शुरुआत वैसी की थी। पर उसके बाद उन्हें पता है कि अगर उन्हें आसानी से पॉइंट मिल रहे हैं तो कुछ ओवर ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैश टुवर्ड्स सिंह कुछ ओवर ट्रैक करेंगे, जाके हाउस में करना पड़ेगा अगर पॉइंट लाना है, बट एमटीडी भी जा सकते हैं नवीन। Harshit, you know what? Hang on. The only difference now is Sanskar Mishra. That's a nice anti-block. Stuart Singh utilizes the lobby and goes across against Rehan Sheikh's nice block attempt. Anti-block was good. Harshit, 26 points of Chambal Challengers. 19 have come from Sanskar Mishra. 18 raid points and 1 tackle point. So when that is happening, where have the Palani Tuskers left their strategy book? Where is that strategy brain? Don't tell me it's back at the hotel. Come on, Uday. In a two-order raid has got a running hand touch on Tamil Arasan. Oh, he's having a very, very bad time the last 2 days. It's a very good running hand touch. Yeah, he's been good. The support Uday, but this is just a second touch point. Second raid point even. That's all. So understand, when Sanskar Mishra comes in, this is the Aage ka rasta for Palani Tuskers is what I'm trying to say, because they're trailing back. The only point is, leave Sanskar Mishra alone. Don't try and attack him. When you're giving away 18 points, that shows what you have done. And, you know, Nagarajan's Super 10 with 11 points has got no issue at all, no impact at all. Stuart Singh has got 6 tackle points, no impact at all. Because the defense has once again struggled big time. Only 2 tackle points, that is the Aage ka rasta I'm talking about for the Palani Tuskers. First half 2 tackle points, second half no tackle points at all. Okay, let him take the bonus, go back. That's it, it's okay. It's fine, just leave him alone. क्योंकि आपकी रीडर्स अच्छा कर रहे हैं और चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस वहां पर वो गलतियां कर रहा है, तो उसी एरर्स को अपने पक्ष में ले जाने की आवश्यकता है। अच्छा बोनस का वहां पर ट्राई किया गया था, रनिंग बोनस था कहीं न कहीं। यहाँ बाल बाल बचे, बहुत अच्छा बैलेंस किया। यहाँ अपने आप को ऐसा लगा वो सर्कस की एक रस्सी होती है ना जिस पर चलना पड़ता है, बिल्कुल बाल बाल महीन महीन से वहां पर निकल कर गए थे। क्या बोनस का रिव्यू जो है निर्णय थोड़ा सा बदलेगा? जी नहीं, बोनस वहां पर दिया गया है और 4 पॉइंट लीड चंबल चैलेंजर्स के पास रहेगी। बट बहुत अच्छा पॉइंट था नवीन आपका। ओ क्या जी नहीं, डबल एंट्री मुझे लगा कि कहीं कोई राइट साइड से तो नहीं चले गए। पर 4 का हाउस नवीन, जयसूर्य नागराजन का सुपर 10। जो आपने बात कही, अगर संस्कार को पॉइंट न दे तो चंबल चैलेंजर्स वहां पर गलतियां दोहरा सकता है अपनी। The only point is, as Ilavarasan told in the previous time out, Raiders should not stop. That is all it is. Jayasuriya Nagarajan tries to attack Sanskar. He can go for it because Javed was very far. The idea was right, but the execution was not 100%. Now, watch Ajay Mutaya on that left corner.
and I did not even expect or even dream about it, where Tamil Arasan could have been in a problem for 2 consecutive days. Because after getting 3 Best Raiders award as a defender, you need to continuously keep performing. That's what, Arshit, I always keep saying, isn't it? What makes the difference between a good player and a better player is consistency. If you perform 1 or 2 matches, you're a good player. You're a better player when you keep on performing, like Stuart saying, in a do-or-die raid now. जी आप टू डायरेक्ट है अभी तक स्टुअर्ट ने अच्छे शार्प टर्न्स वहां पर दिखलाए हैं आज राम कुमार की जगह उन्हें खेलने का मौका मिला है 7 रेड पॉइंट्स प्राप्त किए हैं जयसूर्य नागराजन का बहुत अच्छा वहां पर साथ दिया है पर दोनों ही टीमों की डिफेंस से बहुत सारी चूक हुई है इस बार इनकी पोजीशन से संस्कार मिश्रा सेकंड टैकल इन्होंने इस मुकाबले में प्राप्त किया और दोनों बार स्टुअर्ट सिंह को शिकार बनाया किक करने गए थे और सही समय पर वहां पर डाइव आई ऑन द वेरी राइट लेग ऑफ स्टुअर्ट अंडरस्टूड दैट ही इज बेंडिंग डाउन व्हेन जयसूर्य नागराजन केम इन ही वाज स्टैंडिंग. So that means Sanskar is not going for the tackle. Very simple. When he's bending down and ready for it, and in a do-or-die raid, you should have just gauged it right. That is a problem there, Stuart Singh. Again, yeah, experience. You should watch out for it because he's already gone in with that surprise ankle hold, Sanskar Mishra. So, and when he was on the bending position, there was another tackle coming. So you as a raider, yeah, as a do-or-die raid, that will be running behind your mind. And that clock ticking over of 30 seconds, that's behind your mind. But that's the beauty of the game, isn't it? Multiple facets, you need to think about multiple aspects. They're influence. डू और डायरेक्ट में संस्कार मिश्रा जा रहे हैं मुझे लगता है उदय को भेज देना चाहिए और शायद प्रदीप यादव साहब ने क्या यही कहा है बट कौन जा रहे हैं वहां पर रेड के लिए उदय देखिए इसलिए कहते हैं कि गुरु का जो ज्ञान होता है ना उसे एग्जीक्यूट करना मैट पर बहुत जरूरी है उदय आप जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक आज उदय की भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है डू और डायरेक्ट में नवीन नंबर 2 आउट Ajay Muthaiya, if it's not for Tamil Arasan, it is Ajay Muthaiya who is making the errors. He's standing out there in the left corner. What was necessary? What was necessary to start your vehicle and suddenly stop it at the midway? in 3 out. That'll only pull you back down to the earth, and there is a substitution, much needed substitution. I'll tell you what, for whatever Pradeep Yadav did, if I was a referee, I would have given him a green card because he can't do that. In a do-or-die raid, you cannot have a say as a referee. That's what it is always said as. Coaching during the raid. As Jayasuriya once again gets a bonus point. Goes back. Now can Sanskar Mishra stand there and conserve energies? I think he's going to be the first raider to get a double Super 10 in a match. He just needs one. He's already got 21 points overall. That means 2 tackle points and 19 raid points. And he is very close to becoming the first raider to get a double Super 10 in the summer edition of the 2023. And intelligently running the clock down completely. तो ये जो कह रहे थे ना बड़े भैया हैं मेरे दुर्गेश कुमार मुझे लगता है अभी तक शायद उन्होंने क्या क्रॉस कर दिया हो कितने पॉइंट थे नवीन उनके शायद 118 के आसपास से 18 प्राप्त कर से 136 137 पॉइंट हो चुके हैं दुर्गेश कुमार के 130 थे तो बड़ा शानदार वहां पर क्रम खेला है पर दुर्गेश कुमार देखिए मिस्टेक्स डिफेंस में दोनों ही टीमों से वहां पर हुई है पर फर्क सिर्फ इतना रहा है कि यहाँ पर लगातार पलनी टस्कर्स ने मल्टीपल पॉइंट्स दिए हैं दुर्गेश ने यहाँ पर 16 पॉइंट दिया सिर्फ किया था दुर्गेश को नवीन. That's all. He just provoked him. I saw that graphics where it actually suggested us how many bonus points was taken. That was wonderful. Very good innovation again from Yuva Kabaddi series. Ashwin and Mohit and team, everybody. Wonderful work, guys. So that shows Jayasuriya has been intelligent today. He's not been just bullying around in his raid points. He's not just been gone out there blindly wanting for the touch points. He's thought it out very nicely. So out of his 13 points now, 6 have been bonus points. That's very, very good. And Mukesh Kannan is very rarely coming for the raid because he wants to contribute in the defense. Because the Palani Tuskers are actually struggling on the defensive lines. So Gopi Mailipalli is weak in confidence, Mukesh. Try and go for him. Javed Khan will not come to you. Yeah, tries the sweeping to attach. No, he can even go deeper. Have the back kick. That could have been an opportunity. You need to know your attack materials. I don't understand why this has happened. जी हाँ इस बार 2 और डायरेक्ट है और पलनी टस्कर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा वापसी का दरवाजा कहीं ना कहीं खुल सकता है संस्कार मिश्रा को यहाँ पर पकड़िए संस्कार मिश्रा की उतनी अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं रहती अमूमन 2 और डायरेक्ट में किक लगाने का प्रयास था डिफेंस गलती ना करे पेशेंस रखना पड़ेगा ये अभी तक अच्छा रहा है पुरुषोत्तम यहाँ लेफ्ट कॉर्नर सोलो टैकल के लिए गई चीज हम गलती की बात कर रहे थे क्या फिर से तमिल अरसन ने लेफ्ट फ्लैंक से आया अच्छा टर्न संस्कार का और सीधा मिड लाइन से पार
He did not even turn. He was just looking at the other defender. Watch that. Tamil Arasan, see, he was watching the other defenders thinking that there was an escape route and he just falls over from the midline. Tamil Arasan, come on. 2 times in a do-or-die raid. You've just given away points. And if this is the case, 7.5 minutes left. Oh, that was a nice Let us anti save 2 block. points. He Palani Tuskers. put Number Gopi 8 and Mailipalli 55. outside the lobby. That was a difficult escape, by the way. Watch out for your legs, Jay Surya. जी हाँ, ये पसंद करते हैं। हमने पहले भी शायद एक हम्पी हीरोज के विरुद्ध डिफेंस में देखा था और अनिकेत और एम गोपी को थोड़ा समझना पड़ेगा जी। वहां पर ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है कभी कभार लेग, बट ये समझना पड़ेगा ना। हमने पलनी की डिफेंस की बात की, बट चंबल चैलेंजर्स भी लगातार वही गलतियां दोहरा रहा है। अभी एलिवरसन साहब से सुनते हैं। ரெடி ஆயிட்டானுங்க அப்ப முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் ஆடு வரானுங்க அவனுங்க அதை தான் பண்றேன்னு தெரிஞ்சு அடிக்க வரானுங்க சரியா 3 பாயிண்ட் தான் 7 நிமிஷம் இருக்குது ஃப்ரீ ஆடுங்க சூர்யா அவன்கிட்ட போய் காலை கொடுக்காம தேர்ட் மந்த் அஜய் முத்தையா, பசுபதி நீங்க உங்க வேலையை அருமையா செஞ்சா ரேடர் அவங்க வேலையை அவங்க செய்வாங்க. That's what I want to tell to Ajay Muthaiya. Of course, Ilavaran has said to Jay Surya that go out there, they will come to attack you, you will get raid points. But Ajay Muthaiya again wants to have a discussion. But the problem is in the defense, Arshid. The raiding is okay for the Palani Tuskers. They have been okay as there's a substitution that's happening. You can download our official Yuva Kabaddi series app on Google Play and of course Apple Store and win exciting prizes. But the problem there is where the defense is not thinking out nicely. That is a very, very problematic area for the Palani Tuskers. Of course, there's a substitution that's happened. और समीर शहाब का भी इशारा यह है कि टाइम आउट अब समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा बदलाव नवीन और बहुत बड़ा बदलाव। चलिए, राम कुमार को अंदर बुलाया गया है। ये फिर भी ठीक है, राम कुमार वाज लेफ्ट कॉर्नर है। जय सूर्य नागराजन लेफ्ट इन पर हैं। पहले वो कॉर्नर खेल रहे थे। उदय, मुझे लगता है पक्का वहां पर वो राम कुमार पर अटैक करने जा सकते हैं। उन्हें पसंद है लेफ्ट फ्लैंक पर टच करना। हमने अभी तक तमिल अरसन को उन्हें टच करते हुए देखा है। पुरुषोत्तम की क्या ड्राइव आ सकती है, क्या अटैक कर सकते हैं। नवीन दूसरे हाफ में एक भी टैकल पॉइंट पलनी टस्कर्स के लिए वहां पर नहीं आया है। सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स पूरे मुकाबले में रहे। पर ये अच्छा चेंज था कि राम कुमार को एज अ रेडर अंदर बुलाया गया है जयसूर्य नागराजन का साथ और देने के लिए। That is a good thing. Oh, Ram Kumar has stepped into the lobby. Ram Kumar has stepped into the lobby without a touch. Come on. The manager is not happy. Oh my God. Let's watch that once again. There was a whistle that came in from the line umpire. Has he? Oh, he was pressing on the lobby there, but did he cross it? Javed Khan appealed immediately and there was a quick whistle that came in. Jay Kumar will explain this out. And you know what? They will give it out probably because this will be counted as a raid. They can't go back on this. The decision has not yet come. I'll tell you that. The decision has not yet come. But if they say raider is safe, I'll tell you what. Who is? Ah, they are asking him to re-raid. Oh, that's good. That's very good because this raid won't be counted. That was a slight bit of a whistle error. Kick and a strong double ankle hold there. Ram Kumar is trying to kick Rehan Sheikh away, but no, it was very, very strong. The raid was being re-raided. And that also did not help Ram Kumar. चारी रेड यहाँ पर दी गई थी। संस्कार पर अच्छी किक लगाई थी यहाँ पर तुरंत किक लगाने के पश्चात रेहान शेख अक्सर हमने अमूमन वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर देखते हैं, बट ऐसे राइट कॉर्नर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कार्य करते हुए। और चंबल चैलेंजर्स ने लगातार 4 पॉइंट लीड बरकरार रखी। और नवीन, जिसकी आपने बात की थी कि पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने डबल वहां पर सुपर 10 बनाया है। 20 रेड पॉइंट, 3 बोनस अंक, 17 टच के अंक। That is a problem. That 17 touch, what you said, 70 touches. That is the problem there for the Palani Tuskers. I love this graphics, seriously, because it is the first time that we are watching it on the Yuva Kabaddi series. This panels out here. Only 3 bonus points. That means what? The defense has gone in and given away points to Sanskar Mishra. That very clearly tells us the story. Now, Ilavaran, what is he got to say? அவசரப்படாதீங்க. லாங் கொடு அஜய். இவன் உளுந்துப்பான். லெஃப்ட் ரைட் தான் வர போறான். நீ உழுவு. அதுவரை நீ அவசரமே படாத. ரைட் ரைட் வந்தா நீ செய். நீ யாரோ அவன் ஸ்கோர் ஆகுதுல. ஒன் சைடே ஏறிதோட அவனா அடிச்சு நிறுத்த மாட்டானுங்க. நீ ஆடு. கால்ல முடிச்சு. Okay. ट्राई करना है इतना ही पुणे में और Yeah, so सिंगल पॉइंट there जाना was a little bit चाहिए of a audio glitch for Pradeep Yadav. But what Ilavaran said was, he's asked Ajay Muthaiya to wait.
He says knee vilgada, that's all. If the left raider comes in, go against Ayanathan Ranganathan. That's what it is. He's asked Ayanathan to go for the attack if there is a left raider, as Uday has come in for a do-or-die raid. He's asked Ajay Muthaiya to hold on. Can he listen to Ilavarasan? Ajay Muthaiya, the entire match, the defense has been very, very vulnerable. And in a do-or-die raid, 7 seconds, 5 seconds, Ajay Muthaiya has not attacked. Touch point! And that's a multiple point raid again. Oh my God. That was a touch on Ayanathan Ranganathan on the right 3 corner. points. Chambal Challengers. And this is a Number super 55, raid in a do-or-die 2 raid. And 3 out. I think the match has now slipped away. जी हाँ, अब ये मुकाबला लगभग समाप्ति की घोषणा की तरफ जा रहा है। यहाँ देखिए टच हुआ, उसके पश्चात पुरुषोत्तमन का क्या अटैक था यहाँ पर, ये बिल्कुल हाफ हार्टेड वहां पर गए थे। एक और खिलाड़ी वहां से इनकी पोजीशन से आए और आज ये पूरी तरह से जैसे ये खिलाड़ी स्लिप हुए हैं वैसे ही स्लिपरी यहाँ पर आज ये मुकाबला रहा है। बट यहाँ स्लिप नहीं करेंगे बेबी गर्ल अपने हाथ से बिस्कुट, क्योंकि उन्हें कबड्डी के बारे में ज्यादा पता नहीं, वो जो लाइट को बहुत ही अम्यूजमेंट की तरह देख रही है। बट नवीन एक भी टैकल अंक नहीं दूसरी हाफ में, और अब तो जो लीड है वो 7 अंकों की हो गई है और उदय की लगातार चौथी सक्सेसफुल डू और डाई रेड नवीन। Yeah, in none of the do-or-die raids, the Raiders have been tackled Bonus out by point, Palani Tuskers. Palani Tuskers. He's got the bonus point. Only 2 Raiders now. That's another opportunity here for Sanskar Mishra because Jet Pasupati and Jay Surya. 2 Raiders, no substitutions because everybody are out there on the bench. Either they have been tackled out, not revived. So no opportunity of even a substitute to come in. Manikandan Subramani could have come in, but in a super tackle, can they inflict this? Jayasuri Nagarajan, come on, hold him out. And Sanskar Mishra will be turned on the directions. Jayasuri Nagarajan is going out there. And he has said, I have tackled you. Guys, what are you discussing? Wait, hang on. Why are they discussing between themselves? Let the referees do their work. क्या निर्णय वहां पर हुआ था? जेट पशुपति कह रहे थे पहले मैंने वहां पर गया था, क्या वो शायद कह रहे थे कि पहले मैंने हैंड टच कर दिया था उसके बाद में बाहर गया था, क्योंकि वो इन्वॉल्व इन स्ट्रगल हो गए थे। अगर पहले बाहर चले गए तो यहाँ पर संस्कार मिश्रा सेव होंगे। No, Akshay Desai should probably go back and discuss this. We'll go with the replay. That's fine. This struggle is okay, but we will see if the hand touch was being first inflicted. Let's ask Ram to just stop this. Yeah, very nice. They will go for the discussion. But yes, if there was the hand touch first from Sanskar Mishra on Jet Pasupati, he's got the opportunity for a super tackle. But if there was no hand touch and he is just, running around on that end line, then it would be Raider safe. Raider That was the out. decision. Super tackle. 2 points. Lovely. Super Palani tackle. Tuskers. That They is have what reviews. the Palani Tuskers wanted. चंबल चैलेंजर्स का रिव्यू कर सकता है अगर वो चाहे, उनके पास रिव्यू है। बट यहाँ देखते क्या पहले टच हुआ, बिल्कुल वही मानना अक्षय देसाई साहब का भी, और पशुपति भी शायद यही कह रहे थे। बट नवीन सबसे अच्छी बात मुझे स्ट्रगल में ही लगी कि जयसूर्य नागराजन ने जो डायरेक्शन को बदला था वहां पर, शायद रिव्यू के लिए जा रहा है चंबल चैलेंजर्स, और जाना भी चाहिए क्योंकि मैच डिसाइसिव पॉइंट्स है। Our decision, Raider out. Please review. जी आप देखते हैं वहां पर रिव्यू की मांग की गई है। जेट पशुपति क्या पहले टच हुआ या फिर एंड लाइन के पहले बाहर गए? मैच डिसाइसिव नवीन। अगर संस्कार इस समय बाहर गए तो पलनी टस्कर्स के पास वापस आने का पूरा मौका बना रहेगा। बट उस रिप्ले की तरफ चलेंगे और रामबीर साहब उस रिप्ले को जरूर मल्टीपल एंगल्स के साथ अभी देख रहे होंगे। Yeah, interesting review. Now first, where's the hand touch? Definite hand touch. Yeah, definitely there is a hand touch. And Sanskar Mishra's hands are very long. Akshay Desai, first of all, watch if there was a hand touch. He immediately raised his hand, only watching the legs. Yeah, I know. That is not Akshay's mistake also because he is there only to watch the legs. He's there only to watch the end line. But there was a hand touch first. So that allows... Review, unsuccessful. Unsuccessful. Super Very tackle, good 2 decision points. from Rambir Palani Singh. Tusker. Yeah, right. I think Chambal today, Challenger, your review Akshay over Desai and no Sagar more did review. not go for the swim. नहीं गए थे आज। They were? Even then Akshay does this. और अक्षय देसाई जी का स्विमिंग करने के बाद सर भी काफी देर तक दुखा था। Oh, right. And that is why I think he did not see the hand touch. बट नवीन संस्कार का बाहर जाना, वहां पर एक शानदार सुपर टैकल करना। जय सूर्य नागराजन अब कहीं ना कहीं लॉबी में बाल बचे, अच्छा किया अपने आप को वहां पर रोक किया। एम गोपी अब शायद थोड़ा सा हाईलाइन नहीं खेल रहे हैं, अगर लेफ्ट कॉर्नर से अटैक करने जाएंगे तो मुश्किलात होगी। पर जय सूर्य नागराजन कह रहे हैं मैंने यहाँ पर टच किया है। एम गोपी मना कर रहे हैं, चंबल के पास भी रिव्यू नहीं है और न पलनी के पास है। And not given. And not given. Point is not given. Jai Surya Nagarajan can't believe this. Can we go back to that replay? Rehan Sheikh has come here only for killing the time. Can we quickly go back to that replay? We'll see there was a hand touch or no. Jai Surya was confident. This will be an empty raid, guys. It's a raider who's just come in to waste time as a defender, Rehan Sheikh.
What's this? Not conclusive. Substitution. Not Palani conclusive. Tuskers. Jayasuriya felt something. Gopi never swears 1 on the in, mat. He's 33 also out. a very truthful 5 in, lad. 6 Yes, out. Manigandan comes in place of Tamilarasan. Yeah, Tamilarasan needs some thinking. And Ilavarasan says, I need a timeout. Pasuputhi also taken off. Time out. Palani Tuskers. Let's listen to Ilavarasan now. செகண்ட் மேட்டை கட் பண்ண பிடிக்க ரெடியாக இருக்கிறவன் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து தண்ணி கொடுறோம் நீங்கள் ஒரு அடி அடிச்சாகணும் சரியா உழுவு டேய் இங்கே தொட்டா உளுந்துரு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆடு ஒரு போனஸ் வச்சுட்டு ஆடு Ilavarasan. ஒரு போனஸ் வச்சுட்டு கூட வந்துரு அடுத்த ரேட் அடிக்க சொல்லுங்க. That means ஒரு சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணுடா Ilavarasan is saying only fall. I'm saying no, don't ask them only to fall. Ask them to tackle. They've been falling today. They are listening to the coach. I can't even say they are not listening to the coach. They are listening to the coach, and he very clearly said the in defender 2 points. was Palani ready Tuskers. for you to Number attack 7 on the out, right in, 2 and out. that is what happened. That exactly is what happened. The right in and the right corner, both of them has to go back, and 2 defenders on the same side. नवीन चंबल चैलेंजर्स को अंत में मुकाबला जीतना नहीं आता है, ये उनके टाई बता रहे हैं। पिछला मैच में कपिल गुर्जर की वहां पर गलती थी, आज कपिल गुर्जर वहां पर जरूर नहीं है। बट एक बार फिर से देखिए रेहान शेख एटलीस्ट उन्हें 15 सेकंड तो लेने देते, वो उन्होंने जाते अटैक किया। और अब जो है ये सेकंड रेड है चंबल चैलेंजर्स की बात होगी, 2 और टाई रेड आएगी 33-25। तो एक बहुत ही बराबरी पर मुकाबला। और नवीन मुझे अभी भी लगता है कि पलनी टस्कर्स इस मुकाबले को जीत रही है, क्योंकि चंबल चैलेंजर्स का अंत में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। और अब संस्कार मिश्रा नहीं है, रेहान शेख नहीं है, और साथ ही साथ जावेद खान भी नहीं है, जो आज की टीम के उनके लिए टॉप परफॉर्मर रहे थे। तो उदय अगर कुछ एक्सीलेंस कर जाए तो बात अलग है, सिर्फ एक ही पॉइंट ज्यादा से ज्यादा देना है, बट उसके बावजूद ये डू और डायरेक्ट अगली चंबल चैलेंजर्स की आनी है। Time out. Chambal Challengers. Right, time out. Pradeep Yadav. What has he got to say? 18 points for Jayasuriya Nagarajan. आराम से पैर और बचा के Hello. उन्हें 10 செகண்ட் தான் ஓகேவா 10 செகண்ட் இந்த ரைட் எடுத்துக்க அடுத்து அவன் ஒரு ரைட் ஆடலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு சேஞ்ச் ரொம்ப நேரம் ஆடாத 10 செகண்ட் ஒரே ட்ரை பண்ணிட்டு எல்லாம் வந்துரு Okay. ஒன் சைடே எடுத்தோட ஒன்றும் அடிக்க மாட்டாங்க அங்கேயே இருக்கு Okay, he wants Jayasuriya Nagarajan only to take 10 seconds of the raid, try once and come back quickly. That's what he's told him, because there are less defenders. Yeah, it might be a good strategy. Try once and come back. But they need 3 more points. And the tackle has been inflicted. What is that? What is that? Hang on, hang on, Red hang out. on. 1 point. Chambal Challengers. Durgesh Kumar, no scissoring. By the way, he will get the green card. You can't use your leg to go out there and tackle it out like that. That was a very nice trap. और दुर्गेश नवीन मुझे लग रहा था उन्हें आज आना चाहिए था सिर्फ एक वहां पर प्रयास करके, क्योंकि 2 और डायरेक्ट आती और उसके बाद जब 3 खिलाड़ी होते ना तो परेशान होते वहां पर, तब वहां पर पैनिक कर सकता था। यहाँ जरूर दुर्गेश साहू का एक गलत प्रयास था, और उसके लिए क्या उन्हें ग्रीन कार्ड मिला या नहीं मिला वो बाद में पता चलेगा। बट 2 और डायरेक्ट में संस्कार मिश्रा गए और इन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि 30 सेकंड एटलीस्ट पूरे यूज करने हैं, ये वो जानते हैं। अब प्रयास करेंगे, शुरुआती 20 सेकंड ले चुके हैं, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक रेड और आ सकती है। बट चंबल चैलेंजर्स इस मैच को अंत में आते आते जीत रहा है। ये एक और बड़ी गलती पलनी टस्कर्स के डिफेंस और लेफ्ट फ्लैंक से। He once again stood out there for the entire time, and he says, everybody stand behind. That is a very, very good thinking, captain. As once again, Manigandan Subramani went in for the ankle hold. Ramkumar will only get 1 point. 1 point. They Palani have Tuskers. Jersey number 11 another out. raiding opportunity. They have another raiding opportunity. Chambal Challengers, yes, 1 point given away. That was good. But now, it is, I think, 34 on the Palani Tuskers. Yeah, that's it. I think this is a 3-point victory. Palani Tuskers will only get 1 point out of this match. And still, Palani does not know how to win in the booster round. This is their another loss, the 3rd loss for them. And Chambal Challengers have got, what? 3 out of 4 matches. Only 1 loss against the Humpy Heroes. That's it. But apart from that, Chambal Challengers have boosted themselves in the booster round. Once again, all credits to their captain and Durgesh's brother, close brother, Sanskar Mishra.
या बहुत बढ़िया। आज उस छोटे ब्रदर ने, कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या खेले हैं आज। जितनी तारीफ की जाए संस्कार मिश्रा, नॉट एज ओनली अ रेडर नवीन, बट एज अ कैप्टन, अ मैच्योर्ड गाय हमें नजर आए। बहुत ही अच्छा किया। हालांकि डिफेंस में भी चंबल चैलेंजर्स ने गलती कम नहीं की, बट पलनी टस्कर्स के लिए डिफेंस में नवीन मुझे लगता है सिर्फ 2 ही अंक मिले हैं, और वो पहले हाफ में मिले थे। दूसरे हाफ में एक भी टैकल पॉइंट नहीं प्राप्त करना, और संस्कार मिश्रा की ऐसी सुपर रेज, मल्टीपल टचेस पॉइंट, बहुत कुछ बयां कर दिया और इस मुकाबले को समाप्त कर दिया उन्होंने अपने पक्ष में। चंबल चैलेंजर्स 4 मुकाबलों में से 3 जीतकर अब टॉप 3 में जरूर अपनी जगह बना चुका होगा। Yeah, only that super tackle of Pasupati, and I mean, see, that's not a defender's point. That is not a defender's point. Yeah. That's okay. I mean, it was not even considered. That's okay, Arshit. We will not consider that as a tackle point. But the numbers, yeah, it will tell us. But it's a horrible, horrible day for the defenders of the Palani Tuskers. It was a very, very tough outing. And that is why, see, only 2 bonus points. Yeah, only this super tackle. That's it. This was the only tackle point in the second half. That is all that happened. And if you minus out, 34 minus 18. That is what the Palani Tuskers have gone. 16 points. That's all. 16 points in the second half, and everything has come via the raiding department. And if you really go out there and say, because 37 minus 22, that's what happens. 22 was, Chambal Challengers score, 15 points. Even though that raiding machine was brilliant. Look at that. Nothing to choose between the raiders. What is the difference is that super raids. Look at this. 3 super raids. 2 from Sanskar Mishra, 1 from Uday on a do-or-die raid. And 2 all-outs. That's it. That is the big, big difference. So, the defense of Palani Tuskers have gone out there and given points in heaps. And Sagar Mishra becomes the first raider of the summer edition to reach a double super 10. जी हाँ, सिर्फ वही मुकाबले को पूरी तरह से तय किया ने था। बहुत ही कड़क मुकाबला था। 7 टैकल पॉइंट्स वहां पर चंबल चैलेंजर्स को मिले, एक सुपर टैकल को मिलाकर 4 टैकल पॉइंट्स पलनी टस्कर्स को मिले। बट संस्कार मिश्रा, क्या बात है, 22 रेड में से 21 रेड पॉइंट, 2 सुपर रेड और 1 रेड में 5 अंक वहां पर आए थे। तो 5 पॉइंटर रेड भी वहां पर मौजूद थी। स्ट्राइक रेट भी आज बड़ी अच्छी रही है, 95 वहां पर स्ट्राइक रेट उनकी रही। संस्कार मिश्रा आज बहुत अच्छा खेले हैं, और आज मुझे लगता है नवीन, इनमें अब वो कैलिबर नजर आ चुका है कि हम इन्हें अब वो नाम दे देना चाहिए बस। कोई ना कोई, because he needs that bit of support. That the best defender has got only highest of 2 points, but tackle success rate also is not very good. But I'll tell you what, the Chambal Challengers have got around 7 tackle points. So that is good. Where only 2 tackle points on the opposition and 7 tackle points is a very, very good option. As Chambal Challengers have gone up there on the points table. Only 1 loss. And Nilgiri Knights, yes, they will have another match to come back and reclaim that top slot very, very soon. Joda Veerans, 3 out of 3. Yeah, very nice start for the Chambal Challengers, but where are the Palani Tuskers? Come on. Can you even imagine for a team that was unbeaten in the survival round, not able to win even a single match yet? And as I always say, they have themselves to blame. Yeah, today, again, the defense not working. Tamil Arasan has been a big, big problem there for the Ilavarasan and Thinking crew. Let's see what's going to happen in the next match. 5:30. Again, Nilgiri Knights will have a big chance to go out there and reclaim the top slot against the Aravali Arrows. That's coming up after the post-match presentation that's going to happen with Harshit. I'm Navin Chaudhary signing off. See you soon at 5:30.
Chambal Challengers and Sanskar Mishra just amaze us with your excellent performance. Welcome to the post-match presentation of match number 78 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners first. Our broadcast partner, Fan Code Fantasy partner, Dream 11. Our physio partner, Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy. Hospitality partner, Ginger Hotel. Our healthcare partner, Ramakrishna Specialty Hospital. In the presentation today, we have Mr. Ravi V, sir, technical official. A huge welcome in the post-match presentation, sir. ये मुकाबला खेला गया पलनी टस्कर्स बनाम चंबल चैलेंजर्स। क्या शानदार मुकाबला था। जैसा कि हमने प्री शो में आप सभी के साथ बात की थी कि इस मैच में बहुत सारा मजा आने वाला है। क्या पलनी पहली जीत बूस्टर राउंड में प्राप्त करेगी, उसका उत्तर रहा है नहीं, और वो जवाब दिया है चंबल चैलेंजर्स ने। 37-34 से मुकाबले को नाम किया। सीधा चलते हैं अवार्ड्स की तरफ, शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ। तो चंबल चैलेंजर्स की टीम के और कौन हो सकता है वो खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी बनाने जिन्होंने समर एडिशन में प्राप्त किए 20 से ज्यादा रेड पॉइंट्स, और वो हैं और कोई नहीं, संस्कार मिश्रा। आइए दें इनकी लाजवाब रेड्स को। And now the time for the best defender of the match, और वो जाएगा चंबल चैलेंजर्स के ऐसे खिलाड़ी को जिनके खाते में 2 टैकल पॉइंट्स थे, पर वो 2 टैकल पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट थे इस मैच वो आप सभी समझते हैं। रेहान शेख जिन्होंने प्राप्त की शानदार टैकल्स, देखते हैं इनके भी टैकल्स को। और बात करें डिफेंडर्स में तो निश्चित तौर पर आज संस्कार मिश्रा ने वहां पर भी अच्छा किया था। उनके खाते में भी 2 टैकल पॉइंट्स है और अच्छी स्ट्राइक रेट उनकी भी वहां पर मौजूद थी। बट अभी समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की। तो चंबल चैलेंजर्स की वन मोर टाइम अ जायंट इन मेकिंग संस्कार मिश्रा, जिन्होंने लगाई थी एक शानदार 5 पॉइंटर सुपर रेड, और बड़ा अद्भुत ये मुकाबला समाप्त हुआ है। संस्कार मिश्रा के खाते में गया कबड्डी कमाल ऑफ द मैच। बट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
मैच नंबर 79 नीलगिरी नाइट्स वर्सेस अरावली एरोज। एक और बड़ा मुकाबला पिछले मैच में आपने देखा है किस प्रकार से उलटफेर रहा है। उस मैच में दोनों ही टीमें दमकर खेली है, डटकर खेली है, पर अंत में आते आते चंबल ने इस मुकाबले में जीत प्राप्त की थी। इस मैच में क्या नीलगिरी नाइट्स अपने फॉर्म को बरकरार रखेगा या फिर अरावली एरोज का खेमा जीत के लिए अपनी बेकरार प्रदर्शन को दिखलाएगा? आइए समय है दोनों ही टीमों को मैच पर बुलाने का। लेट्स इनवाइट फर्स्ट the very successful team and the most balanced side of this summer edition, the debutant Nilgiri Knights. With Pocket Dynamo and Prem Bhadu back in the squad, can Aravali Arrows make the team more consistent? Let's invite now the team of Arrows, Aravali Arrows! So match number 79 नीलगिरी नाइट्स वर्सेस अरावली एरोज। पलनी टस्कर्स अभी भी बूस्टर राउंड में पहली जीत प्राप्त नहीं हुई और नीलगिरी नाइट्स को पहली हार। क्या इसी तरह से चलेगा ये मुकाबला? आप सभी का करते हैं स्वागत फैन कोर पर एक्सक्लूसिव। मैं कमेंटेटिव बॉक्स में यहाँ पर जुड़ चुका और सुशर्मा मेरे साथ बड़ी जल्द जुड़ेंगी राधिका। बट आइए शुरुआती साथ की बात करते हैं नीलगिरी नाइट्स की। एस मरिमुथु सेल्वम वहां पर नजर आएंगे, मणिकंदन नेसा मनी होंगे, उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के ब्रदर, द पार्टनर इन क्राइम एस मणिकंदन सुदले मनी होंगे। सूर्य सेल्वम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये सूर्य, क्या आज पुनः उगेगा केसवन राजा। पिछले मैच ही अपनी टीम के लिए बेस्ट रेडर रहे थे, इनको आज शुरुआती साथ में मौका मिला है। राइट कॉर्नर पर है संतोष श्रीनिवासन, लेफ्ट कॉर्नर पर विलवन, पल्लवन, वेलू, कुछ भी कह लीजिए, अजय नंदा, बाला गणपति, एस अभी कुमार और एलू मलई मूर्ति वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट्स में नजर आएंगे। बट अभी आइए, टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन। मेरे साथ मौजूद है राधिका इन द कॉम बॉक्स। स्वागत है राधिका। ओके, अरावली एरोज की बात करते हैं। साहिल बगारा बहुत ही अच्छी रेड ये लगा रहे हैं। चेतन चौधरी होंगे, प्रेम भडू वहां पर होंगे। प्रेम भडू के इंक्लूजन और राजेंद्र बाकर के इंक्लूजन के बाद यहां पर जीत आई थी पिछले मैच में अरावली एरोज के लिए। ब्रजपाल सिंह गौड़, रोहित बेनीवाल, क्या रोहित बेनीवाल, साहिल बगारा और ब्रजपाल सिंह गौड़ रेडर्स का ये ट्रायो काम कर पाएगा? अंकित, राजेंद्र बाकर, रोहित पंचोली, हरिओम, प्रदीप, आफ्ताब, देव गुर्जर यहां पर आपको नजर आएंगे सब्स्टिट्यूट के खिलाड़ी के तौर पर। बट क्योंकि हम नीलगिरी नाइट्स के सक्सेस टैकल प्रतिशत को जानते हैं, बहुत ही अद्भुतता के साथ वो प्रदर्शन करते हैं। लीजिए, इस बार छोटे भाई ने बड़े भाई को यहां पर पछाड़ दिया है रेड पॉइंट्स के मामले में। टॉप 3 रेडर्स में दूसरे पायदान पर आ गए हैं संस्कार नवीन मिश्रा, 18 मुकाबले 139 रेड पॉइंट्स। गगन गौड़ा वहां पर आपको 15 में 147 के साथ टॉप पर रहेंगे। तीसरे पायदान पर वहां पर अच्छी तरह से दुर्गेश कुमार मौजूद थे। बचाइए टॉप द डिफेंडर्स, लोकेश, अंकित, राजेंद्र भाकर, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आज राजेंद्र भाकर को कम से कम 8-9 पॉइंट लेने पड़ेंगे अगर वो अंकित जॉर्ज की पोजीशन पर इस मैच के बाद जाना चाहते हैं। पर बहुत ही अच्छा मुकाबला है यहाँ पर और लगातार अच्छे मैचेस की शुरुआत हम अच्छे अंदाज में करते हैं। आइए टॉस की बात करेंगे। टॉस पे अगर हम बात करें तो टॉस पे मोहन गौड़ा साहब कर्नाटका के ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे। यहां पर जब सिक्का उछला किसके पक्ष में गिरा, नीलगिरी नाइट्स ने टॉस जीता। एस मरिमुथु सेल्वम ने कहा कि ठीक है, वो टॉस जीतकर वहां पर राइट हैंड साइड कोर्ट को चूज कर रहे हैं। पहली रेड अरावली एरोज की तरफ से लगेगी और अरावली एरोज से पहली रेड देखते हैं कौन लगाएगा। क्या ब्रजपाल सिंह गौड़ होंगे? बट ये तय है कि नीलगिरी नाइट से रेड कोई भी लगाए आज शंखनाद इस खिलाड़ी का हो सकता है। वो है एस मरिमुथु सेल्वम। 16 मुकाबले में 84 रेड पॉइंट्स, रेड स्ट्राइक रेट बेहतर है 50.29। एक बहुत ही अच्छा रेड स्ट्राइक रेट यहाँ पर देखते हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस टीम का यहाँ पर लगातार रहा है। और नीलगिरी नाइट्स के लिए देखिए, अगर आप सक्सेस रेट परसेंट की बात करते हैं तो ये भी 50% है।
बट इस खिलाड़ी को एस मरिमुत्तु सेल्वम को एक डिफेंडर से बचना पड़ेगा, वो होंगे अंकित जाट जो अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं टैकल पॉइंट्स में। राइट कॉर्नर खेलते हैं एस मरिमुत्तु सेल्वम, पसंद करते हैं राइट कॉर्नर पर हैंड टचेस करना। क्या आज अंकित जाट के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो बन पाएगा? बट आइए देखते हैं नीलगिरी नाइट्स का प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है। 2 मुकाबले महज आ रहे हैं, 2 मुकाबले टाई खेले हैं, विन प्रतिशत अब पलनी से भी बेहतर हो चुका है। 16 मुकाबले 12 जीत इनके खाते में गई है और बहुत अच्छे अंदाज में जीत आई है। और आइए आज के एक्सपर्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर हमें नजर आया उज्जवल सिंह की तरफ से, हाउ मेनी टाइम्स हैज विलेवन स्कोर पॉइंट्स इन द डू और डाई रेड्स। क्या बात है, तो एक तरीके से रैपिड फायर किया है और शायद 6 डू और डाई रेड्स उन्होंने लगाई और 6 की 6 डू और डाई रेड्स में उन्होंने अच्छा किया है। इसके बारे में हम थ्रू आउट द कॉम्बॉक्स, थ्रू आउट द मैच बहुत सारी बातें करेंगे। आज भी क्या 11 डू और डाई रेड्स लगाएंगे, बट आज से पहले शायद ये आंकड़ा 6 रेड्स उन्होंने डू और डाई लगाई है और लगभग शायद 5 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। बट अब अरावली एरोज की अगर हम बात करें तो इनकी टीम 11 हार वहां पर है और अगर ये 11 हार रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलात रहेगी इनके लिए। 7 जीत है, 1 टाई खेला है, विन प्रतिशत 36.84 है। और आइए एक्सपर्ट की बात करते हैं तो मेरे साथ राधिका कॉम्बॉक्स में। राधिका, आपके लिए एक स्पेशल प्रश्न के साथ स्वागत करेंगे। Yes, please, Harshit. Thank you so much. Are you able? चलिए अभी चलते हैं काउंटडाउन की तरफ। काउंटडाउन के साथ करेंगे मुकाबले की शुरुआत। सो मैच नंबर 79 युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन। यहाँ पर राज साहब जो कि हमारे YouTube हैं उन्होंने शुरुआत कर दी है इस मुकाबले की और पहली रेड यहाँ पर 10 नंबर जर्सी यानी कि क्या रोहित बेनीवाल आपको पहली रेड के लिए नजर आएंगे, एक अच्छे लेफ्ट रेडर हैं। और मैं बात कर रहा था राधिका आपसे कि नीलगिरी नाइट्स का जो टैकल प्रतिशत है वो बहुत ही अच्छे हैं। नीलगिरी नाइट्स ने 44% सक्सेसफुल टैकल प्राप्त किए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखते हैं और डिफेंस में जब ही टूटते हैं जब उनकी पूरी टीम एज अ कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। Exactly. Now the first raid, Marimuthu Selvam takes up our right raider, but then very cautious in his first raid itself. He's just struggling to cross the mid block line. यहाँ बॉक लाइन को पार करते हुए मरिमुत्तु सेल्वम इस बार एम्प्टी रेड के साथ शायद शुरू करेंगे। हाँ, और मैं चाहूंगा जल्दी से वो प्रश्न एक बार पुनः आ जाए। एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न था अरावली एरोज के लिए, ब्रजपाल सिंह गौड़ क्योंकि अभी रेड पर हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी हमें उस समय मिलेगा उस प्रश्न पर जाएं जो अरावली एरोज के लिए पूछा गया था और प्रेम भड्डू से रिलेटेड पूछा गया था। बट अब यहाँ पर ब्रजपाल सिंह गौड़ है। राधिका, अरावली एरोज पिछला मैच जीत कर आ रहा है और पलनी टस्कर्स अगर हम बात करें तो आज के दिन के पहले मैच में हार उन्हें मिली है। नीलगिरी को इसका फायदा हुआ है, उनकी विन प्रतिशत बढ़ गई है। Absolutely, it's always a one win against the stronger team will definitely move you ahead. So that is what we'll see. Nobody is permanent on the first spot now, and the first tackle point from Aravali Arrows. Such a beautiful block, Harshit. वाओ, क्या वेस्ट होल्ड यहाँ पर किया था, क्या बैक होल्ड यहाँ पर किया था। प्रेम भड्डू के बारे में प्रश्न था और प्रेम भड्डू ने जैसे ही थोड़ा सा बैक को देखा सूर्य सेल्वम और मुझे लगा थोड़ा जल्दी सरेंडर कर गए सूर्य सेल्वम। वहां पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल में जाने की कोशिश ही नहीं की या फिर वो प्रेम भड्डू के ब्लॉक ही इतना शानदार था कि वहां पर गए नहीं। बट यहाँ साहिल बगारा डू और डायरेक्ट पर है। रोहित बेनीवाल लेफ्ट रेडर है, वेल्लोवन ने बैक होल्ड का जवाब बैक होल्ड के साथ दिया है। पहले कवर से भी अटैक आया, तुरंत वेल्लोवन आया और एक शानदार वेस्ट होल्ड। Absolutely, and this is a perfect combination tackle. One breaks the momentum and the other one from the left corner, Velavan, definitely goes with a dash there. जी हाँ, उसके बाद अच्छा साथ इनकी खिलाड़ी से आया था। और राधिका, आपसे एक जो आज के एक्सपर्ट में जो हमारे पास प्रश्न आया था वो मैं एज अ टॉक आपसे यहाँ बात करना चाहूंगा और आपसे ओपिनियन वहां पर प्राप्त करना चाहूंगा। और ये प्रश्न ये था कि प्रेम भड्डू वाज इन द टॉप 3 डिफेंडर्स एट द एंड ऑफ द सर्वाइवल राउंड 2। Absolutely. उसके बाद क्यों लगातार वो बेंच पर बैठे 2 मुकाबलों के लिए?
because if you're not having the right timing in defense, if the timing isn't right, then you have to rest and give air for the fresh air. That's what you need to be consistent throughout. एब्सोल्युटली करेक्ट राधिका, उनकी टाइमिंग वैसा काम नहीं कर रही थी जैसी टाइमिंग यहाँ पर काम की है एस संतोष और विल11 की परफेक्ट राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर कॉम्बिनेशन राधिका, और वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लगातार। प्रेम बड़ू बहुत सारे एरर्स वहाँ पर कर रहे थे, और कभी कभी अच्छा होता है ना कि आप लगातार गलतियां करने से अच्छा है कि एक दो बार अगर आप फ्रेश यानी कि बेंच पर बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, इवन सब्स्टिट्यूट में भी नहीं थे वो, तो उन्हें आराम दिया गया और आने के बाद देखिए प्रेम बड़ू अच्छा कर रहे हैं, बट एस मरिमुथु सेल्वम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये तय है। Red Asaf, 1 point, Nilgiri right. Just number 2 out. Absolutely. Look at that turn and attack. Right. Oh, how different was that for a skill in a defense of 5 Harshad? और राधिका एक और चीज मैंने यहाँ पर देखी है कि प्रेम बड़ू आज लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, राजेंद्र वाकर आज कवल खेल रहे हैं। कल राजेंद्र वाकर को 6 टैकल पॉइंट्स मिले एज ए लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर। जरूर ब्रजपाल सिंह गौड़ थोड़ा सा स्किट करते हुए क्या कुछ लगा है उनके जूते पे, जिसके चलते थोड़ा सा साफ किया, एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे। बट अब कौन रेड पर आया है? राधिका आवर फेवरेट विल11। Welvin. Absolutely, Welvin is one tall raider and he's very quick on his feet as well. But then this time around, they don't need to take a chance in the defense of 4. If you're smart enough, just finish your time and go back. But then backtracking skill spot Red on. Asaf, 1 point. Nilgiri वाओ, right. टर्न Just number टम्बल 77. एंटी ब्लॉक। राजेश गुज्जर साहब के चेहरे पर ये जो वहां पर थे ना एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल बराबर थे। प्रेम बड़ू को इतना एडवांस टैकल के लिए नहीं जाना चाहिए था, वहां पर कोई एंगल दिया नहीं था। विल11 ने उन्हें कोई एंगल नहीं दिया कि पूरी तरह से उनके एंगल को कट आउट कर पाए, और अच्छा एंटी ब्लॉक किया, टर्न किया, और जैसा आप कहते हैं राधिका की एक लेफ्ट रेडर को अगर वो लेफ्ट टर्न करते हैं तो लॉबी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। And Harshit, you're talking about the defenders changing their positions. I would say it's definitely not wise because there is something called neuromuscular coordination in the defenders. If you're set to one position, that's where your neuromuscular coordination happens. If you're given a good different position all of a sudden, you tend to do errors. और वही हुआ है, वही हुआ क्योंकि प्रेम बड़ू एक कवर डिफेंडर है, बिल्कुल कवर डिफेंडर जैसा वो ब्लॉक वहां पर आया था। कॉर्नर्स अमूमन जाने जाते हैं वहां पर एंकल होल्ड्स के लिए, टाइप्स के लिए। अब 2 कॉर्नर डिफेंडर जरूर है, चेतन चौधरी भी जो कि अभी कवर खेल रहे हैं, बट है वो कवर कॉर्नर डिफेंडर, ज्यादा समय ले लिया है। अंकित चाट ने ये सोलो टैकल किया, सोलो डैश किया, बट एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए थे और अंकित चाट भी बाहर जाएंगे। 2 ईच पॉइंट क्या मिलेंगे राधिका यहाँ? Absolutely. For the defense, I think they'll get 1 point because the raider is out for, it's a super tackle. So Aravali Arrows will get 2 defensive points. But then 1 point will be awarded for Aravali Arrows as well because number 3 defender, when he dashed him, along with the raider, he stepped out completely. और साथ ही साथ एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए थे, तो 2 ईच मिल सकते हैं। क्या ऐसे पॉइंट्स में वहां पर रिवाइवल मिलता है राधिका? रावली को क्या रिवाइवल मिलेगा? Absolutely. Oh yeah, Aravali Arrows will get 1 revival because the defender was out, the raider was out anyways. या क्योंकि सुपर टैकल वहां पर था तो रिवाइवल अरावली को मिलेगा, बट ऑल आउट के बहुत करीब आ जाएगी। अंकित जाट ने बहुत अच्छा सोलो टैकल किया, और रुकिए मरिमुथु सेल्वम, निर्णय पूरी तरह से आने दीजिए, आप बाहर जाएंगे, पर 2 ईच पॉइंट है। अंकित जाट क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि एक खिलाड़ी तो उनके वहां पर वैसे ही सेल्फ आउट हो गए थे, और अंकित जाट जो कि पूरी तरह बाहर चले गए। अंकित जाट कह रहे हैं कि सिर्फ 1 पॉइंट होना चाहिए, बट कौन बाहर जाएगा? दोनों बाहर गए हैं और 2 पॉइंट बिल्कुल वहां पर मिलेंगे। 1-1. Yeah, but then why did they give 2 points? Right. Yeah, end line is being crossed, after which there was a tackle. So both the defenders out. So it's 2 points each what they have given. यार राधिका, क्योंकि अंकित जाट मांग कर रहे थे कि शायद चेतन ने जब तक अपने आप को बैलेंस करके रखा था, जब तक अंकित उनके ऊपर अटैक न कर जाए। क्या रिव्यू ले सकता था रावली वहां पर राधिका? No, exactly, because that was very tricky. The way we felt, the end line has been crossed first, then the tackle attempt. Raider out. 1+2 3 points. यहाँ पर रावली एरोज ऑल आउट हो जाएगा। साहिल बगारा ने कोशिश जरूर की, बस वो कोशिश उतनी नहीं थी यहाँ पर कामयाब कि आप रावली एरोज को और रिवाइवल वहां पर दिला पाए। अच्छा अटैक आया राइट कॉर्नर से भी, और लेफ्ट कॉर्नर पर तो विल11 आज इन फॉर्म नजर आ रहे हैं, रेड हॉट फॉर्म वो खिलाड़ी है। देखिए राइट कवर से गए, और सबसे अच्छी बात नीलगिरी नाइट्स की डिफेंस की होती है कि अमूमन एक साथ जाते हैं। दोनों मणिकंदन गए, विल11 का वहां पर साथ आया।
Absolutely, and look at the score difference. What damage that Nilagiri Raiders and defense have done. This is Kesavan Raja for us in a right raider, and they have broke the momentum of the defense as well of Aravali Arrows, especially the right cover. Look at the way he's standing. चेतन चौधरी तो राधिका कभी कभी बहुत ज्यादा कॉर्नर खिलाड़ी जब हो जाते हैं ना आपके पास तो दिक्कतें हो जाती है और चेतन चौधरी और राजेंद्र भाकर भी जो है ना वो कॉर्नर डिफेंडर्स हैं। अब हो सकता है कि आप उन्हें टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए कवर पर लगा सकते हैं। प्रेम बड़ू एक परमानेंट कवर डिफेंडर है जो अभी कॉर्नर खेल रहे हैं। प्रेम बड़ू को सक्सेस उनकी कवर खेलने पर मिली है। यहाँ अच्छा टर्न है, यहाँ अच्छा टर्न है। क्या थोड़ा समय अतिरिक्त लगाया रेडर ने या फिर मिड लाइन को अच्छा क्रॉस किया, ये रेफरी नहीं देंगे। Now let's see. Right. I think 1 point has been awarded for Aravali Arrows. That's एक पॉइंट अवार्ड दिया गया है और अच्छा टर्न था वहां पर, अच्छा स्विफ्ट टर्न वहां पर किया। यहाँ बोनस का प्रयास है। सूर्य केसवन राजा यहाँ पर रेड पर हैं। पिछले मैच में अपनी टीम के लिए 6-7 अंक उन्होंने प्राप्त किए थे और प्रेम बड़ू राजेंद्र भाकर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ बोनस अंक क्या नीलगिरी नाइट्स को मिला है, केसवन राजा को मिला है। राधिका राजेंद्र भाकर की हम बात करें तो बहुत ही अद्भुत खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में 6 टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए और इनकी कहानी भी है ना जो बड़ी डिसेंट रही है। ओ इस बार रोहित बेनीवाल जी राधिका यहाँ पर पॉइंट की मांग कर रहे हैं रोहित बेनीवाल। exactly. You know, did he cross the lobbies before the touch or what was the question? Let's see. यहाँ देखना होगा कि क्या अपने खुद को उन्होंने जियोपार्डाइज किया यानी खतरे में डाला है या फिर वहां पर पॉइंट मिले हैं। मोहन गौड़ा राज साहब वहां पर बात करें। देखिए ये क्लोज एंगल है, क्या हल्का सा हाथ में टच था बट गैप वैसे बहुत बाहर था। नवी राधिका Exactly. I think the raider was self out because without the touch he stepped into the lobby, but they are reviewing it. Raider safe. Okay, please go back. राधिका हमने पिछले TV मैच में Aravali Arrows challenge is Raider safe 1 point. Our decision no point. Please review. हमने पिछले मैच में राधिका रिव्यू की महत्वता को एक बार पुनः समझा। जहां पलनी चंबल ने अंतिम मिनटों में दोनों ने रिव्यू गवा रखा था, उनके पास कोई मौका नहीं था। क्या हल्का सा हाथ पे टच कहीं हुआ है? क्या हल्का सा जब उनके आर्म से वहां पर टच है? क्योंकि रोहित बेनीवाल को रिव्यू लेना बहुत अच्छी स्ट्राइक थी वैसे राधिका। ये अपने दोनों पैरों के बीच में बहुत अच्छा गैप बनाया था, अच्छा हैंड को स्ट्रेच किया था। बट आपकी एक्सपर्ट की निगाहें क्या कहती है राधिका इस पे? I mean, the view what we get is very blur, Harshit. So it would be very tricky for us to, you know, come to a conclusion here, rather than, you know, having a concrete evidence. You know, he had enough time. He was very confident that he went into the lobby. हाँ वो बड़े कॉन्फिडेंट थे यहाँ पर और क्या उनका कॉन्फिडेंस वहाँ पर काम आ पाएगा? अक्सर रावरी एलोज वहाँ पर बड़ी जल्दी रिव्यू की मांग करती है, इस बार फिर से किया है। पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस वहाँ पर टीवी रेफरी को चाहिए होता है रामवीर साहब को और वो मल्टीपल एंगल्स के साथ देखेंगे। ईवीएस ऑपरेटर हमारे राम रिप्ले मैन वहाँ पर उन्हें मल्टीपल एंगल्स दिखाएंगे। Review unsuccessful. Raider out. 1 point. Nilgiri Knights. Aravali Arrows. Reviews over. No more. You know, as Naveen always says, when you have the referees having a brainstorm before a decision, do not go for the review. So again, once again, it's been proved right. या बिल्कुल सही राधिका और हमने करीबन बहुत बार देखा है और 100% यहाँ पर रिजल्ट होता है। क्योंकि देखिए हमने वहाँ पर 4 लोगों को देखा, 4 मल्टीपल एंगल्स को उन्होंने देखा होगा, तभी वहाँ पर बात की थी। बट अंकित जाट रावली एरोज शुरुआत से पिछड़ रही है। राघव और उनके कोच के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन बिल्कुल जायज हैं। Absolutely, you know, he's not running corner to corner. He's just breaking in between, creating that gap. So brilliant anticipation by the Raiders. बट राधिका देखिए नीलगिरी नाइट्स इनके अगर हम बात करें तो जो डाटा आज हमने प्री शो में वहां पर चलाया था उसके बारे में और अगर थोड़ी सी आपसे बात करूं तो बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन नीलगिरी नाइट्स का रहा है और सबसे बैलेंस साइड ये टीम रही है। क्यों? क्योंकि हमने इनकी अगर हम सक्सेसफुल रेट्स की बात करें तो 209 सक्सेसफुल रेट पॉइंट्स इन्होंने इससे पहले प्राप्त किए और सक्सेस रेट लगभग 50% है।
और सक्सेस टैकल भी जो परसेंटेज है वो 44 और हाईएस्ट सक्सेस टैकल परसेंटेज है। बट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टैकल्स किसने किए वो अरावली एरोज ने किए, 165 टैकल पॉइंट्स उनके पास हैं। That means, you know, they are not doing many errors in defense. So that should be the strength of the team. You know, not giving away the points that, you know, anyways lets the opponent team weaken. या और अभी तो देखिए एस मरिमुथु सेल्वम हो, सूर्या सेल्वम हो, दोनों वहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक खिलाड़ी को जरूर ये मिस कर रहे हैं, वो सुंदर विश्वकन्नन है। उनके बारे में बताऊं, राधिका तो एक आर्मी प्लेयर है और वो आपके आंध्रा से वहाँ बिलोंग करते हैं, तेलंगाना क्षमा कीजिएगा, यहाँ से बिलोंग करते हैं। हैदराबाद में आर्मी वहाँ पर खिलाड़ी हैं, आर्मी में भी खेलते हैं। तमिलनाडु मदुरई से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कैसे कबड्डी खेलनी शुरू की थी, बड़ी अद्भुत उनकी स्टोरी रही है। उनकी स्टोरी पे हम लगातार बात करेंगे। बट अभी एस मरिमुथु सेल्वम, राधिका। Absolutely, a very calculated game. And about you know, Nilgiri Knights Raiders, they've been rotating their raiders. You know, none of them is pressurized or its team is not over dependent on any single raider. You know, it would be difficult for Aravali Arrows to sketch on each and every raider. या आज रेडर्स पूरी तरह से यहाँ पर देखिए परेशानी का सबब रहे हैं अरावली एरोज के लिए। सिर्फ 4 अंक मिलना और वो भी 2 टैकल पॉइंट्स के अंकित जाट को सुपर टैकल के मिले थे। उसके अलावा प्रेम बड़ू के पास है, यहाँ देखते हैं कि क्या फिर से साहिल बगारा से वो गलती हुई है। फिर से एक और बार पुनः वो गलती करते हुए नजर आए हैं और वो गलती एक बार फिर से उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Yeah, a bonus point is awarded, and after which, yeah, that was the bonus. And then, where was the tackle? उन्होंने वैसे ही अपना लेफ्ट हैंड लॉबी में रख दिया जैसे कि उन पे अटैक करने आ रहा हो। शायद उन्हें लगा होगा कि कोई ना कोई कवर डिफेंडर मुझे डैश करने आएगा, मैं लॉबी का इस्तेमाल करके जाऊंगा। बट अब प्रेम बड़ू के पास मौका है कि अटैक करें, क्या पावर काम आ सकती है। क्या बिल्कुल दी स्ट्रेंथ इन द थाइज, यहां पर प्रेम बड़ू की इस बार काम आती हुई। Absolutely, and you know that is a very risky tackle, Harshit. Look at that way the tackle happened. You know, the stance in which he stood. You know, the center of gravity is the key here, and the support defender who completely took off the you know, weight of the defense. या अच्छा शार्प टर्न वहां पर लिया था, पर वो शार्प टर्न उसके बाद बुलडोज करने का प्रयास किया। एक और अच्छा टैकल, मणिकंदन नीलगिरी नाइट्स परफॉर्मेंस एट इट्स बेस्ट। दोनों थाइज पर गए। रोहित बेनीवाल थोड़ा सा ब्लाइंडली वहां पर भागते हुए जा रहे थे लेफ्ट फ्लैंक की तरफ। मणिकंदन का शानदार डबल थाई होल्ड। Almost kind of a solo tackle. You know, when you have things happening in tandem, in combination, it gives more confidence to the defender to initiate the tackle. You know, he would be reassured that, you know, there would be somebody else to support the tackle. या सूर्या सेल्वम इस बार हैं, राइट रेडर हैं। लॉबी में क्या चले गए थे राधिका? He stepped into the lobby. He stepped into the lobby. बिल्कुल एक बार पैर जब फिसला तो पूरी तरह से वहां पर लॉबी में चला गया था। उनका ऑरेंज बूट वो हमें साफ नजर आया। और राधिका शायद ये चौथा 5वां एक्स्ट्रा पॉइंट है दोनों टीम को अगर हम मिला के बात करें। 4-5 खिलाड़ी लॉबी में जा चुके हैं। Exactly. I mean, he was just looking for that quick turn. In that turn, he just slipped a little bit. टाइम आउट। राजेश गुजर साहब सुनते हैं। तुम जोश है तुम्हारे अंदर कुछ खेलने का, क्या बात है? ब्रिजपाल करना है, देना उसको ना, इतना एडवांस खेलने लग रहा है यार, भर के मार दे उसके। आराम से खेलो लेकिन थोड़ा ढंग से खेलो यार। ओके, तो अरावली एरोज जिन्हें आप 165 टैकल पॉइंट्स के साथ देखते हैं, जो आप सबसे सर्वश्रेष्ठ देखते हैं, वो टैकल पॉइंट्स में आज थोड़ा सा अभी तक लैक वहां पर करते हुए नजर आए हैं। जरूर 4 टैकल पॉइंट्स मिले, एक अंकित जाट को सुपर टैकल मिला था। बट रेड राधिका फिर से वही इशू है। ब्रजपाल सिंह गौड़ को कोच ने कहा है कि जाइए कॉर्नर पर अटैक कीजिए, बहुत हाई लाइन है। Absolutely, the Raiders are unable to break the defense of a Nilgiri Knights. You know, if you are playing near the box line, where do you get the points from? Wherein, you know, we know Nilgiri Knights, they are not tend to do those hasty challenges and mistakes in defense. या और इसीलिए हम नीलगिरी नाइट्स के डिफेंस को सबसे सब्सटेंशियल और साथ ही साथ सबसे कॉम्पिटेंट डिफेंस कहते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ वो जाते हैं और अपना अच्छा कार्य करते हैं, कभी भी टूट कर नहीं पड़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली मैच में देखा कि कई बार पलनी टस्कर्स के डिफेंडर्स जो है संस्कार मिश्रा के ऊपर टूट कर पड़े,
वो कार्य नीलगिरी नाइट्स अमूमन बचती है और इसीलिए ये टीम अभी पॉइंट्स टेबल पर अगर ये मुकाबला जीतेगी टॉप ऑफ द टेबल वापस पहुंचेगी। Absolutely. Any team winning this one, they will again take back the first spot on the points table. So it's again, a close-knit contest between the top three teams, Harshit. What an opportunity they grabbed it here. 1 point, Nilgiri Knights. मुझे लग रहा था कि राधिका लेट तो गए थे, ब्रजपाल पर उठना भूल गए थे। यहाँ पर सरप्राइज करने की कोशिश की जो रोहित यादव करते हैं। यहाँ देखिए ऐसा लग रहा था जैसे कि स्विमिंग पूल में वहां पर तैर रहे हो, आराम से फ्लोट कर रहे हो, और वो फ्लोट इस बार डिफेंडर्स ने उनके ऊपर किया। Absolutely, he was just looking forward, and there are players behind you as well. You should have a peripheral view when you go for a raid. और राधिका फ्लोट स्विमिंग इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि आज जब हम सब ऑफिशियल्स और मैं भी वहाँ पर स्विमिंग करने गया था, तो आज मेरे जो गुरु थे ना, वो कहीं ना कहीं सागर पंचाल जो कि एक रेफरी हैं वो थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे फ्लोट करते हैं। राधिका, आप जानती हैं राधिका स्विमिंग? I do. वाह राधिका, और हमारी जो एसआई टीम है उनकी भी मैं तारीफ करूंगा। रोहन वहाँ पर थे, साहिल वहाँ पर थे, जिन्होंने सिखाया कि कैसे जंप लगाई जा सकती है। बट यहाँ ब्रजपाल को भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे जंप लगकर आप वापस आ सकते हैं। बट अब डू और डाई रेड है राधिका। सूर्या सेल्वम इस डू और डाई रेड में है। सूर्या सेल्वम का फॉर्म अभी तक उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। क्या इस बार इस 4 के हाउस में ज्यादा अंदर जा पाएंगे? I think, when his form is not good, that's the reason they have sent him in a defense of 4, in a do or die. But then this defense is so depleted that, they could not cash the situation at all. Question number 3 and 77. पिछली बार आपने कहा था कि प्रेम बड़ू रिस्की टैकल कर रहे हैं, इस बार बहुत ज्यादा रिस्की टैकल किया। देखिए कहां से कहां डाइव लगाई, पॉक लाइन के आसपास है, अंकित जांग का साथ आया। हम कॉर्नर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बट ये प्रेम बड़ू की बहुत बड़ी गलती थी। और राधिका, हम शुरू से कह रहे हैं व्हाई नॉट राजेंद्र वाकर जो डाइव में इतने एक्सपर्ट हैं, क्यों वो लेफ्ट कॉर्नर नहीं खेल रहे हैं, क्यों लेफ्ट पिन पर अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं? राधिका, ये तो वही बात हुई ना कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैंने सिर्फ वहां पर बैग भर कर रखा है कई सालों से। Absolutely, when you know that somebody is error prone, you should have a quick change when you have a better defender on the other side. And again, a super tackle opportunity for Aravali Arrows here. But then look at the way the Raider pushes both the defenders to one side of the mat, so that gives him ample space to escape. बट एस पर मुतु सेल्वा भी ज्यादा अंदर नहीं गए, टच करने का डेयरिंग उन्होंने नहीं दिखलाया। और दोनों डिफेंडर्स का एक तरफ चले जाना राधिका, अरावली एरोज कितना डाउन इन कॉन्फिडेंस है डिफेंस में, ये दिखला रहा है। Absolutely, that also exposes the weakness of Aravali Arrows defense today. That they are not playing in a combination there. यहाँ पर कोई भी कमी वहां पर होगी नहीं कॉम्बिनेशन में। एस संतोष की वहां पर एक शानदार डाइव आई, और जो सबसे हैंडसम हंक है अपनी टीम में वो वहां पर मौजूद है। बट अभी हमने हैंडसम हंक की बात की और एक और हैंडसम हंक हमें नजर आया ऑन द स्क्रीन राधिका। Absolutely, Naveen, sorry there, and it's a double ankle hold, Naveen. When you initiate a double ankle hold, it completely breaks the momentum of the Raider. And it's a second all out for Nilgiri Knights here. क्या राजेंद्र बाकर पहले लॉबी में चले गए थे, शायद चाह रहे थे कि रेडर को पॉइंट न मिले, बट केशवन वहां पर ऑल आउट के पॉइंट जरूर ले जाएंगे अपनी टीम के लिए। तो पहला हाफ राधिका अरावली एरोज अभी तक डबल डिजिट्स में भी नहीं पहुंच पाई है, और नीलगिरी नाइट्स लगभग 24 अंकों पे या 23 अंकों पर पहुंच जाएगी। Nilgiri Knights. Absolutely, 22 points is what Nilgiri Knights will march forward. And that completely break the momentum of the team, Harshit. It will be very tough for Aravali Arrows to recover from here. तो राधिका, आपके मुताबिक अरावली एरोज का जो विन प्रतिशत भी बहुत कम है, उनके टैकल्स बहुत ज्यादा हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पर कहां उनसे इतनी चूक हो रही है राधिका? देखिए एक मैच अगर वो जीतते भी हैं तो अगले 3-4 मुकाबले वो हारती हैं। रोहित बेनीवाल फिर से क्लेम कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार उन्होंने क्लेम किया है, और विल्लवन नीलगिरी नाइट्स के कोई खिलाड़ी ने मना किया है। रोहित बेनीवाल बिना टच के फिर से लॉबी में चले गए, फिर से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखलाया। यहाँ फिर से राधिका मुझे लगा कि वही रिप्ले चला दिया, सेम वही हाथ पर विल्लवन। Exactly. When you're not, if you're confident also, why do you need to deliberately jump into the lobby?
when you do not have a review left, you can't risk in such situations. Still हमारा प्रश्न यही है कि why Prem Badu is on the left corner? Why not the Rajendra Bakar? Exactly. Also, putting both the defenders in one chain, that would not definitely add advantage to the team, Harshad. Exactly, राधिका। और राजेंद्र बाकर तो देखिए ना, राइट रेडर्स के विरुद्ध लेफ्ट कवर खेलते हैं, यानी कि उनका कोई मतलब है ही नहीं। तो आप एक डिफेंडर को वहां पर वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपको वेस्ट ही करना है तो एक रेडर को अंदर बुला लीजिए जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एटलीस्ट आप डिफेंस एक अच्छी फाइट देने की कोशिश कीजिए कि आपके रेडर्स को वो कॉन्फिडेंस मिले। साहिल बगारा ने अभी तक डिफेंस के विरुद्ध, बाकी टीम के डिफेंस के विरुद्ध अच्छा किया एज अ रेडर, बट यहाँ वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार रेडर्स अरावली एरोज की राधिका स्ट्रगल कर रही है, और कितने पॉइंट्स रेड में मिले हैं अरावली एरोज को पहले हाफ में? सिर्फ 2, जिसमें एक शायद बोनस है। Absolutely, that is the whole difference. And also look at the tackles as well. I think number of mistakes that done by Aravali Arrows is much more here, and the Raiders need to step up. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 5 अतिरिक्त पॉइंट नीलगिरी पक्ष में हैं। हम भी बड़ी ही जल्दी आप सभी के साथ वापस जुड़ेंगे फैन कोर्ट पर। स्टिक विद अस। ओके, तो आइए आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं इस मैच नंबर 79 में। पहले हाफ की जो कहानी रही है ना, वो पूरी नीलगिरी नाइट्स के इर्द गिर्द घूमी है। शुरुआत सूर्य सेल्वम के विरुद्ध प्रेम बडू ने एज अ डिफेंडर ऐसी की थी कि लग रहा था कि क्या आज नया रिवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, क्या पोजीशन में जो बदलाव है वो सही कार कर सकता है। उसके बाद प्रेम बडू ने बहुत सारे रिस्की टैकल्स इनिशिएट किए हैं, और हिस्ट्री टैकल्स के साथ सूर्य सेल्वम और नीलगिरी नाइट्स को बहुत सारे अंक दिए। विल11 टका तक को यहाँ पर बहुत सारे अंक एक रेड में गए थे, एक रेड पॉइंट उन्होंने प्राप्त किया, बट एज अ डिफेंडर आज पुनः वहां पर बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए विल11। बट राधिका अरावली एरोज के प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही हैं। सिर्फ 2 रेड पॉइंट और 5 अतिरिक्त पॉइंट उन्होंने नीलगिरी नाइट्स को दिए हैं, जो उनके टैकल से भी ज्यादा हैं और उनके रेड से भी ज्यादा हैं। Absolutely, that's where it is. When you look at Nilgiri Knights, they just had one failed tackle in the entire first half, Harshit. So that means that they're not going in for those advanced tackles, only if they're sure they're working in combination. Yeah. और इसीलिए नीलगिरी नाइट्स के लिए ना हर मैच में एक नया सितारा उभरता है। वहां पर सिर्फ एक के साथ वहां पर लगातार नहीं चलती, यानी कि एक ही कंधे पे रख के वहां पर लगातार कोई प्रदर्शन नहीं रहता है टीम का। हर खिलाड़ी वहां पर परफॉर्म करता है और बहुत अच्छा खेलता है। देखिए केसवन राजा ने 3 अंक लिए हैं, सूर्य सेल्वम ने 3 अंक। ज्यादा रेड एस मणिमुथु सेल्वम ने लगाई नहीं है, यहाँ पर रेड लगाने आए हैं। सिर्फ 1 रेड पॉइंट उनके खाते में है। और डिफेंस की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट एस संतोष श्रीनिवासन को ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो एस मणिकंदन सुब्रमणी को मिले हैं। एस मणिमुथु सेल्वम जानते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने पहले हाफ में इतनी लीड बना ली है कि दूसरे हाफ में उन्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Absolutely. Now, if Aravali Arrows Raiders do not step up, Harshit, it would be very late for them to pick up on the match, because Nilgiri Knights defense is not doing any mistakes. Unless your Raiders go and challenge that defense, you won't be able to get those points. जी राधिका, बिल्कुल कुछ अगर हार्श लाइनों में कहा जाए तो अब अरावली एरोज का डिफेंस उन्हें इस मुकाबले में जीत नहीं दिला सकता, एटलीस्ट पास भी नहीं पहुंचा सकता है। उनके रेडर्स को पॉइंट लाना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा कहीं 3 खिलाड़ी हो तो आपको 2 टैकल पॉइंट मिल सकते हैं, बट डिफेंस में सिर्फ आपको 1 पॉइंट मिलेगा। नेता रेडर्स वो हैं जो आपके साथ बोनस भी ला सकते हैं, टच पॉइंट भी ला सकते हैं। राधिका, क्या बोनस अरावली एरोज ने चुराया है और न चुराने की कोशिश की है ज्यादा? I think it's all about the strength of the Nilgiri Knights. They are not doing any advanced tackles, but that doesn't mean that they are just giving away the points to the opposite team. So they're just moving in synchrony. So look at the way the right cover scares the right raider.
That's where it doesn't allow the raider to go deep in for those bonus points as well. या और कुछ नया करना पड़ेगा ना, 2 टचेस का प्रयास कीजिए। एस मनी को देखिए Maybe बहुत अच्छी go जगह for खड़े होते हैं। flying hand touches. Go for flying hand touches on the right cover. When they're Yeah. showing up at such a close, chain, just go for those flying hand touches because they are anyway standing behind the box, close to the box line. एब्सोल्युटली राधिका, और फ्लाइंग टच कीजिए तो तुरंत उठिए भी वहां पर। ब्रजपाल सिंह गौड़ ने एक फ्लाइंग हैंड टच करने की कोशिश की थी, वो तुरंत वहां पर लेट गए थे। तो वैसे टचेस आपके लिए कारगर साबित नहीं हो पाएंगे। सूर्या सेल्वम, डिफेंस की हम बात करें तो उन्हें नहीं जिता सकते, यहाँ तो डिफेंस भी पॉइंट्स लीक कर रहा है। राइट इन पर सूर्या सेल्वम बहुत कम ने फेक अटेम्प्ट करते हुए देखा है। रेफरी ने उनकी बात को माना है और अरावली एरोज के पास कोई रिव्यू नहीं है। राधिका, Absolutely, they have lost in the first 5 minutes of the match here. Right. And yeah, I think that was on the shoe of the right corner defender. तो अंकित जाट, राजेंद्र भाकर, राधिका टॉप 7-8 डिफेंडर में आप देखते हैं तो करीबन 6-7 अरावली एरोज पेरियार पैंथर्स के नजर आते हैं। बट ये लीजिए यहाँ एक और बार अच्छा डैश राइट कवर से डू और डाई रेड थी। मुझे लगा ही नहीं कि इस बार रेडर चाहते थे कि मुझे पॉइंट मिले वहां पर। प्रदीप, हालांकि इस युवा खिलाड़ी की तो क्या ही बात करें, पहली रेड थी और इन्हें भी डू और डाई में भेजा गया। पुनस का प्रयास किया इतनी देर में, एक वहां पर रोबस्ट मजबूत अटैक राइट कवर से आ गया था। Right. Absolutely, it's all about understanding who is coming in for a raid and how confident is the raider. Just read the body language of the raider, then you'll have your tackle attempted. And again, a super tackle opportunity. They haven't used it to their benefit so far. Aravali arrows. या आप देखते हैं कि एस मरी मुत्तु सेल्वम है आज उन्होंने ज्यादा रेस नहीं लगाई है। राजेंद्र भाकर अब लेफ्ट कॉर्नर पर है। पहला हाफ पूरा शांत रहा है इस टीम का। अरावली एरोज अधिका मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है ये, समझ ही नहीं आता है। कभी हमें लगता है कि चलिए फॉर्म में आ रही है, कभी इनके रेडर्स भी अच्छा करते हैं, कभी डिफेंडर्स भी अच्छा करते हैं, जैसा कि पिछले मैच में नजर आया। बट तुरंत ये टीम इतना डाउन हो जाती है कि इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। That shows, they are coming unprepared for every match, Harshit. They need to, go back and check the opponent team's matches, at least couple of them from the last 2 matches what they have played. That's where you need to read each and every move of a raider and a defender and then come on to the match. एब्सोल्युटली राधिका, और पिछली रेड क्या थी? मैं चाहूंगा जैसे हमारे ऑपरेटर को वो मौका मिले तो प्लीज उससे रिप्ले को वापस दिखाइएगा, क्योंकि वहां पर साहिल वगैरह सिर्फ बैठ गए थे, उन्हें राइट टर्न लेना था। मैं चाहूंगा कि प्लीज हमारे जो प्रोड्यूसर मोहित हैं वो हमें एक बार पुनः वो जो पिछली वाली रेड थी जहां पर साहिल वगैरह पकड़े गए थे, अगर हम उस रेड को वापस देख सकते हैं। राधिका, तो जो हम टर्न्स की बात करते हैं उसे हम ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये जरूर एसमरी मुत्तु सेल्वम ने बड़ी आसानी के साथ एंटी ब्लॉक किया और आसानी के साथ वहां पॉइंट प्राप्त किया। चेतन बड़ी जल्दी चले गए थे, डिफेंडर हैं, डिफेंडर वाला काम कीजिए। बट अगर हम कैसे भी उस रेड की तरफ चल पाए जहां पर पकड़ा गया था साहिल बगारा को, तो वो राइट जो टर्न था ना राधिका, वो कहीं ना कहीं मिस था उस रेड में। Absolutely, and also he was looking for a dubki. You have to think on your toes on the escape route as well. Plan your raid in such a way, go for a counter action skill, and when the defense attacks you, you should plan your outward route as well. 2 in, 10 out. या इस बार जरूर यहाँ पर पॉइंट मिला है अरावली एरोज के रेडर को। राजेंद्र भाकर को सब्स्टिट्यूट करके एक खिलाड़ी को बुलाया गया था, पुनः राजेंद्र भाकर को अंदर बुलाया गया है। कौन अंदर आए हैं ये देखते हैं। हरिओम चौधरी अंदर आए हैं, ये भी एक डिफेंडर जरूर हैं, बट क्या राजेंद्र के साथ मिलके वहां पर डिफेंस में पॉइंट ला सकते हैं? रोहित बेनीवाल बाहर गए हैं, हरिओम चौधरी अभी तक पूरी तरह से अपने आप को जज्बेदार अंदाज में दूर रखा है। राजेंद्र भाकर एटलीस्ट अटैक करने चाहिए। वो बहुत पास आ गए थे, डाइव आ सकती थी वहां पर हरिओम से, बट वो दम नहीं दिख रहा ना, वो डेयरिंग, वो डैशिंग परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है अब। Substitution, Aravali Arrows. Now, when you change the defender's position very often, you'll only kill the confidence of that defender, Harshit. या रोहित बेनीवाल लेफ्ट रेडर समय लिया है, शुरुआती 5-7 सेकेंड उन्होंने यूं ही लगाए हैं कि चलिए सेटल डाउन होता हूं, पहले मैं बेंच पे जाने के पश्चात आ रहा हूं। मणिकंदन, देखिए राधिका, इन दोनों मणिकंदन की है ना एक और अच्छी बात ये भी कि अपने आप को बैक ट्रेल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा अपने आप को रिट्रीव बैक करते हैं। इस बार भी बहुत अच्छा रिट्रीव बैक किया, तुरंत एसमरी मुत्तु सेल्वम आए, राजेंद्र भाकर जल्दी आए थे उनके विरोधी, इसलिए सेटल ही नहीं हो पाए, और राजेंद्र भाकर ने उसके बाद प्यार से कह दिया कि ठीक है भाई एसमरी मुत्तु सेल्वम, 1 पॉइंट ले जाओ मेरे हाथ से। 1 point, Nilgiri Knights.
Jersey number 2 you know, out. standing in a super tackle situation, you being a prominent defender, you should be able to scare the raider. You're looking as if you're trying to escape from the raider. Red. या एटलीस्ट आप उन्हें डराएं। आप एज अ प्रोमिनेंट डिफेंडर, बिल्कुल आपने सही कहा राधिका कि आप वहां पर एक डिफेंडर हैं, एटलीस्ट वो रेडर को डर लगना चाहिए कि अरे मैं इसकी तरफ जा रहा हूं तो इसे डबल थाइज होल्ड आ सकता है या फिर कुछ आ सकता है। बट आज नीलगिरी नाइट्स मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैच प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पर। रावली एरोज का कोई कंपटीशन वहां पर नजर नहीं आया है और एक शानदार परफॉर्मेंस वहां पर फिर से रहा है। नीलगिरी नाइट्स ऑल आउट कर देगा रावली एरोज को एक बार वर्तबा पुनः। यहाँ कुछ फैंस तैयारियां कर रहे हैं आने वाले मैचेस की भी राधिका। I mean, brilliant thigh hold. Look at that. The weight of the raider is being taken by the defender. Let's come. रिप्ले में हमने देखा कि एक बहुत शानदार टैकल था वहां पर। Well out. अब नीलगिरी नाइट जानती है कि अब वो यहाँ से मुकाबला हारेगी नहीं, 71 तो जो बेंच स्ट्रेंथ है उसे ट्राई किया जाए। 17 out. तो राजाराम साहब जो कर्नल साहब के जाने के पश्चात जो कोच आए हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम को स्टडी कर रहे हैं और अपनी टीम के हर प्लेयर को मौका दे रहे हैं। खासकर केशवन राजा को बहुत मौका मिला है। अब अजय नंदा आएंगे, अजय आनंदा, उनके पास भी रेड में लगाने का मौका होगा। Absolutely. When you're leading with such a big score, and it's always wise to give enough time for the bench strength. You know, not just calling in 1-2 minutes, the match is left. You know, give them enough time so that they understand just not the skills but the strategies of the game too. या ब्रजपाल सिंह और बाहर बैठे हैं। अगर इंजरी थी तो आप शुरुआती साथ में क्या होना चाहिए था आपको। साहिल रोहित बेनीवाल कोशिश करेंगे। साहिल बगारा राधिका समझ नहीं आया। अच्छे रेडर हैं अमूमन। यहाँ रोहित बेनीवाल को पॉइंट की मांग कर रहे हैं। क्या तीसरी बार ऐसा हो सकता है? Raiders have 1 point. या इस बार रोहित बेनीवाल कह रहे हैं भाई इस बार तो मैंने पक्का टच किया है, क्योंकि इससे पहले टच के बाद वो लॉबी में भी गए थे 2 बार लगातार। Exactly. Right. Yeah, this was good. This was good. He did not go corner to corner attack. He just paused for a bit and then attacked. या पर रीच उतनी है नहीं और 32-10 22 पॉइंट की लीड केशवन राजा। चलिए कोई बात नहीं, रेड में अच्छा नहीं किया समझ आता है, बट डिफेंडर्स तो आज आपके ऐसे खेले हैं। साहिल वगैरह आप रेडर हैं, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड। यहाँ पर अगर आप बनने की कोशिश करते हैं तो आप जो आप अच्छा करते हैं उसमें भी बड़ा दूर हो जाते हैं। ये देखिए साहिल वगैरह को कहाँ आवश्यकता थी राधिका राइट इन की पोजीशन से ऐसा टैकल करने की। You know, when you went that close, at least, you know, hold on to the thighs of the raider. Just number 66 out. यहाँ फिर से 2 पॉइंट की मांग कर रहे हैं रोहित बेनीवाल। कह रहे हैं कि एक मणिकंदन मेरे पैरों पर गए थे, दूसरे को मैंने हैंड टच किया था। बट राधिका आपने भी वो कहानी सुनी होगी ना कि जब आप कई बार बहुत ज्यादा वहां पर झूठी बात करते हैं ना, तो कई बार जब आप सच होते हैं तब भी आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है लोगों को। I know. Lot of moral stories on that. Yeah. रोहित बेनीवाल फिर से गए, परसूट करने का प्रयास किया और आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि खुद का बिछाया हुआ जाल दूसरों के लिए कभी कभार आप स्वयं उसमें गिर जाते हैं। Now look at that. He wanted, intentions were good. You know, he wanted to go for a pursuit. But then look at how alert the confidence, the defense was there. अजय आनंदा, अंकित जाट, astonishing डिफेंडर हैं अंकित, बट या तो ये कभी बहुत अच्छा खेलते हैं या कभी ये बहुत डाउन खेलते हैं। ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रही है रावली एरोज में, इसी के चलते इतना नीचे ये टीम अपने आप को देख रही है। Exactly, you know, sometimes when you lose the confidence, Harshit, it would be too tough to get back. You know, unless, especially for the defense, because one error that will cause the team benefit. So that's where they do not want to risk. If they do not risk, they would not get even points. So it's very tricky to be in that position as well. For Raiders, you'll get multiple opportunities, but for the defense, it would cost the team. This is good. ये साहिल वगैरह आपके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, तो इस कैपेबिलिटीज को आपके कैलिबर में कैप्टिवेट कीजिए। इस बार एलुमलाई पर एक बहुत ही अच्छा टो टच किया, स्वीपिंग टो टच। जैसे देखा कि एलुमलाई का पैर थोड़ा सा आगे आ रहा है, अच्छा टो टच वहां पर किया। पर राधिका यहाँ रावली के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बट कल भारतीय टीम के लिए फुटबॉल में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं थी। क्या साफ चैंपियनशिप जीता है इंडियन फुटबॉल टीम ने, सच में कॉन्ग्रेचुलेट करने का मन हो रहा है हर किसी को यहाँ पर।
Absolutely, we have been seeing football team growing from where 140 ranking to nearly 100 ranking now. यार राजाराम साहब कुछ बात कर रहे हैं जरूर कि कैसे अटैक करना है। राजेश गुजर साहब क्या कह रहे हैं? क्या इधर घुस रहा है सीधा बोनस पे? हद हो गई है, तुम डिफेंस थोड़ा टाइट खेल लो यार। ओके, अमूमन राजेश गुजर साहब आते हैं, कुछ ना कुछ प्लान्स वहाँ पर बताते हैं, टेक्निकली प्लान्स वहाँ पर बताते हैं कि आपको ऐसे जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए, पर वापसी का रास्ता यहाँ से राधेगा हैशटैग आगे का रास्ता की हम बात करते हैं, बट अभी यहाँ से रावली एरोज के लिए वापसी का रास्ता दिख नहीं रहा है। प्रेम बड़ू को पूरा मैच दिया जा रहा है एज ए लेफ्ट कॉर्नर। That's what, too many changes and definitely not in the defense, Harshit. That will kill the this is one good one, but then Around 1 point. that's around a errors. new raider that he's been executed on. यार इस बार तो भाला गणपति खुद ही वहां पर रुके थे, देखिएगा यहाँ पूरी तरह से रुके थे, उसके बाद अपने आप को छुड़ाने की ज्यादा उन्होंने कोशिश ही नहीं की। प्रेम बड़ू ने तुरंत उनका पैर ऊपर कर दिया। बिल्कुल प्रेम, आपके खाते में अंक है, ऐसा खेलेंगे बिल्कुल आपकी तारीफें की जाएंगी। अर्ली सेलिब्रेशंस क्या पहले कर गए थे रोहित बेनीवाल, पहले वो क्लैप आ गई थी, हैंड टच, बट वो भूल गए थे कि राइट कवर से डैश कभी भी आ सकता है। रोहित बेनीवाल क्यों फिर आपने रिव्यू गवाया? Yeah, perfect dash on the waist of the raider. Did the defender also hopped a little bit? That looked like the defender hopped a bit in the lobby. ओके, तो वापस रेफरीज आ रहे हैं। प्रेम गौड़ा साहब वहां पर बात करेंगे राज साहब के साथ। तो मुझे लगा राधिका कहीं ना कहीं क्या ये डिफेंडर ने बिल्कुल अच्छा डैश किया, बिल्कुल मिडरिफ पर थे। The timing was good, the skill was good, the dash was good, but then I think one of the raiders also stepped out of the lobby, if that was it is. If the verdict doesn't go in favor, Nilgiri Knights might take a review. Now look at this, the timing was good, the position was good, but then look at that, he hopped a bit. और कोई भी पार्ट लॉबी के अंदर था नहीं जब उन्होंने मिड लाइन को क्रॉस किया। प्रेम बड़ू यहाँ पर कोशिश की अजय नंदा को थोड़ा सा परेशान किया जाए, बट परेशानी का सबब पूरा रावली एरोज के लिए रहा है, और अभी भी कोई बदलाव वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर है नहीं, इसलिए टाइम आउट का समय है। क्या स्ट्रेटेजीज बन रही हैं? पहले हम रावली एरोज के कोच को सुनना चाहेंगे, राजेश गुजर साहब, जो टीम पिछड़ रही है, क्या आप यहाँ से अच्छा कर पाएगी, एटलीस्ट एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को ला पाएंगे? மறுபடியும் ட்ரை பண்றேன், பார்த்துட்டு இங்க திரும்பி பாரு, பிளேயர்ஸ் திரும்பி பாரு, இல்ல இங்க பாரு. ஓகே, நல்லா பண்ணு, கான்ஃபிடன்ட், திரும்ப ட்ரை பண்ணாத, அப்படியே போயிட்டு இருப்பா, சரியா? அடிச்சு சிங்கிளா போய் அடிக்காத. பல கிடைச்சு இருந்தாலும் நமக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம், ஓகேவா? இல்லவா मैनेज பண்ணிக்கங்க. அப்படியே போட்டு நீ யாரும் चेंजेस இல்லை। भाई क्या करने लग रहे हो तुम सारे के सारे, क्या कर रहे हो? प्रेमा लेफ्ट के ये रेडर आ रहे हैं, इनको बोनस दे रहा, मारना डाई पीछे से, कॉर्नर खेल रहा तू, सपोर्ट मिलेगा तेरे को, मारना इनको क्यों छोड़ रहे हो यार? तुम बोनस दे रहे हो उसको, मूवमेंट करने नहीं आ रहे, उसको बोनस दे रहे हो, दे बढ़िया। साहिल पॉइंट लेके आ, खड़ा कर उसको, पॉइंट लेकर आ, मिलेगा तेरे को पॉइंट। पता नहीं क्या करने लग रहे हो यार। और राधिका, क्या यही अंतर होता है एक एक्सपीरियंस कोच में और एक यूथ कोच में? राधिका, No, normally what happens, if you have just completed playing as a player and now you just stepped in as a coach, you'll only think like a player. You mostly think like a player. When I started commentating also, Ayush, Harshit, it was such a tough task for me to, not think like a player. या बिल्कुल सही कहा राधिका, और यही फर्क है ना, क्योंकि राजेश गुजर साहब भी देखिए अभी करंट प्लेयर के तौर पर ही हैं मेनली, बहुत सारे फ्रेंचाइजी लीग भी हैं, खेलते हैं, और कई जगह हमने उन्हें देखा भी अच्छे स्तर पर कबड्डी खेलते हुए। और बिल्कुल सही कहा राधिका कि आप कैसे एज अ प्लेयर नहीं सोचना और एज अ कोच वहाँ पर करना, थोड़ा सा फर्क वहाँ पर आ जाता है, और इसलिए देखिए एक्सपीरियंस का बहुत वहाँ पर मैटर बात करते हैं। यहाँ पे 11 फिर से रेड पर आए आज, और पिछले कई दिनों में इन्होंने बहुत एंजॉय किया है एज अ रेडर लेफ्ट कवर। इस बार सिंगल टाइप पर गए, फिर से विल विन द मैन विद द गोल्डन लेग कहना पड़ेगा राधिका में इन्हें। Now look at this, thigh hold came right on time, but why Prem Badu going parallel to the raider? Why not to the opposite direction of the raider? Just one step was that close. एक्सपर्ट, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज के एक्सपर्ट में हमें बहुत सारे क्वेश्चन हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से डालिए, बट वाई राधिका टुडे राजेंद्र बाकर इतने अंडररेट किए जा रहे हैं एज अ कोच की तरफ से? ना उन्होंने राजेंद्र बाकर को टाइम आउट में भी उनसे कुछ कहा,
पिछले मैच में 6 टैकल पॉइंट्स, उससे पहले 2 मैच का रेस्ट। आज प्रेम बड़ू लेफ्ट कॉर्नर खेले, लेफ्ट कवर हमें वो नहीं नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो लेफ्ट कॉर्नर खड़े हैं। तो राधिका, इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा। I mean, it could be something personal also, Harshit. You know, that cannot be discussed over the over the air. You know, there might Let us not have be 1 a point, cordial Lily Red. atmosphere Jersey between the number coach 21 and the defender as well. Because when you have such a prominent defender who's been proved time and again, you can't just make him an handicapped and just play him there. टोटली राधिका, बहुत ज्यादा वहां पर यही नजर आया है। अंकित जाट आएंगे, डू और डाई रेड है। एक और आपने राइट कॉर्नर डिफेंडर को लगभग सेक्रीफाइस करने के लिए छोड़ दिया है कि चलिए अंकित जाट, हम आपका सेक्रीफाइस कर रहे हैं एज राइट कॉर्नर डिफेंडर। आपके पास 50 टैकल पॉइंट्स है, बट आप जाइए डू और डाई रेड में, थोड़ा सा फुटवर्क दिखलाइए, पर क्योंकि राइट कवर के खिलाड़ी आपको मौका देंगे ही नहीं। और ये अरावली एरोज के रीडर्स में बहुत हमें मिस करते हुए नजर आए कि वो थ्रू द चेन जाना चाहते हैं, वो टर्न्स उनमें नहीं है। और थ्रू द चेन जाना, या तो आप डुबकी लगाइए या आप जंप्स लगाइए, बट ऐसे आप नहीं जा पाएंगे। You know, the way the right cover goes in for that hop and a block in the front with those lovely stand doesn't even give any edge for the raider to escape. And this confidence, and this is what we say, when you have pushed both the defenders onto one side, you'll have enough gap for escape. Let us have 1 point, नीलगिरी नेट। जरूर जर्सी नंबर 81 आउट। थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना राजेंद्र बाकर की, वो डाउन है। क्योंकि मैंने जितनी बार भी राजेंद्र बाकर जैसे डिफेंडर को देखा है, वो हमेशा अटैक करने जाते हैं। वो डरने वाला इंसान है ही नहीं, वो कैरेक्टर है ही नहीं जो बड़े बड़े रेडर से डरे। हमने इन्हें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में देखा है, हमने इन्हें कई सारे कैंप्स में देखा है। ये ऐसे डिफेंडर है जो चाहे कितने भी लंबे चौड़े कद के रेडर हो, उनके विरुद्ध भी डाइव लगाते हैं, अटैक करते हैं। आज कहीं ना कहीं किसी मानसिक स्थिति से जरूर गुजर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी तबीयत खराब हो, ये भी हो सकता है राधिका। I think it's all in the head of, if he had to regain his position, he need to perform. You know, whatever happens behind the match, just leave it and give your best in these 40 minutes what you've given the opportunity. या जहां भी आप खेल रहे हैं, ट्राई कीजिए राधिका, बट एटलीस्ट एक सिंगल ट्राई नहीं नजर आया आज राजेंद्र बाकर से कि उन्होंने एंकल होल्ड का प्रयास किया हो। इतनी बार बाला गणपति आए हैं, केशवन राजा हैं, और प्रेम भड़ू तो प्रेम से जाकर जप्पी पाना चाहते थे। इस टैकल को क्या नाम दूं राधिका, आप दीजिए इस टैकल को कोई नाम। कौन सा टैकल था ये? I mean, absolutely, he's not going for a block as well. He's an anti-block. ये देखो रेसलिंग मूव नजर आ रहा था जहां पर आप अपनी बाहों में धकेलना चाहते थे। प्रेम बड़ू भी आज थोड़ा सा समझ से परे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा इनका सर्वाइवल 2 में परफॉर्मेंस था, जहां हमने बहुत इनकी तारीफ भी की। और आज जो प्रश्न था ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा था वहां पर। और यहाँ देखिए वो स्ट्रगल जारी है, और अब तो 2.5 मिनट कैसे कटे शायद ये अरावली एरोज सोच रहा है। Wait. एक और बार अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ राइट कॉर्नर से। पॉइंट्स की अगर आप बात करते हैं, अंकित तालिकाओं की बात करते हैं, तो पॉइंट्स में बहुत पिछड़ा है। और मणिकंदन निसामनी ने अपना हाई फाई पूरा कर लिया। 6 टैकल्स इनिशिएट किए, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है, हाई फाई है। और मणिकंदन दोनों की जो जोड़ी है ना, तो पार्टनर्स इन क्राइम बहुत अच्छे हैं। And overall, I think the team has done very, very minimal errors, Harshit. Just about 5 mistakes in defense, and that two of them have come from, the substitute player. अब वेलेवन वहां पर थे, वेलेवन को टीज करने का प्रयास था। या ये वो राजेंद्र बाकर हैं जिन्हें हम जानते हैं। आज वो राजेंद्र बाकर अभी तक हमें देखने को मिले। इस बार चलिए एटलीस्ट टीज ही करने गए वहां पर वेलेवन को, बट ये वो राजेंद्र बाकर है, इसलिए हम इन्हें पॉकेट डायनामो कहते हैं, इसलिए इन्हें वो नाम पसंद है। जब हमने कल इनके साथ इंटरव्यू में बात की, उन्होंने कहा कि जी हाँ, पॉकेट डायनामो मुझे नाम पसंद है। बट आज डायनामो वाला काम राइट कवर ने किया है। मणिकंदन एक और बार स्ट्रॉन्ग डैश, राधिका परफेक्ट। Absolutely, that is what is the confidence about. If you have done 10 things right, the 11th thing would anyways be right. That's what it happens in defense. Once something goes wrong, you tend to do more errors. You need to regroup within no time, otherwise it would be a total damage for you and for the team. और आज वही हुआ, इस समय पर काम नहीं कर पाई अरावली एरोज। तो अब तो सिर्फ 1 मिनट से कम का समय शेष था। कितने टैकल्स इनिशिएट किए गए हैं? प्रेम भड़ू के अलावा कितने डिफेंडर्स ने आज
मैं वो देखना चाहता हूँ राधिका की टैकल्स इनिशिएट किए रावली एरोज के लिए। जो रावली एरोज की ताकत है आज उनकी बड़ी कमजोरी रही है। रीडर्स उनके लिए हमेशा से कमजोरी था, ये तय है और हमें पता है। साहिल वगैरह आज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया, 48-14 का स्कोर है। बट कितने टैकल्स राधिका आज इनिशिएट किए, प्रेम बडू के अलावा बाकी डिफेंडर्स ने बहुत कम। It's all about 21 tackle attempts and just they had how many 4 tackle points. And yeah, Prem Badu just got 3 of them successful, but then his unsuccessful rate are 5 tackles. यार राधिका बिल्कुल आपने सही कहा। वेल 11 यहाँ पर है, पहला टैकल राजेंद्र वाकर अटेम्प्ट करने गए थे और शायद उनको थोड़ा सा चोट पाते हुए पाए गए। वेल 11 वन मोर टाइम, सेम जिन्होंने पहले किया था, एंटी ब्लॉक किया राजेंद्र को, कहा रुकिए रुकिए, चेतन ने कहा कि चलिए राजेंद्र को अकेले आप बाहर नहीं करेंगे, मैं भी बाहर जाऊंगा। वेस्ट होल्ड करने गए, हाथ उनकी स्लिप हुए और अंतिम रेड में वेल 11 ने जाके मुझे लगता है कितने 5-6 रेड पॉइंट्स आज उनके हो गए होंगे राधिका। Absolutely, and not leaving the chain right on time, that affected Rajendra Bakar defense there. He just went with one arm for the tackle. That does not help to support the raider. या और कल रावली एरोज पहली टीम बनी थी जिन्होंने 50 पॉइंट प्राप्त किए थे और आज वो दूसरी टीम नीलगिरी नाइट्स को उन्होंने बनवा दिया है। 50 पॉइंट्स वहां पर नीलगिरी नाइट्स को, बहुत बड़ी मार्जिनल विन है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन रावली एरोज के लिए और सभी के चेहरों पर एक वो बहुत बड़ी शिकंज रही है ना। ब्रजपाल सिंह गौड़ चले हैं, सब्स्टिट्यूट उन्हें किया गया था बड़ी जल्दी। राजेंद्र बाकर एक टैकल उन्होंने इनिशिएट किया राधिका, जहां पर मुझे क्लियर नजर आया, अन्यथा वो बिल्कुल मानसिक स्थिति, मुझे लग रहा था कि हम अर्थ पर बैठे हैं और उनकी मानसिक स्थिति मार्स पर हो, उतने यहाँ पर अब आउट ऑफ द माइंड वो नजर आए। Absolutely, they worked in combination today, and look at that. I don't like the body language of the defender when he tries to escape from the raider. You are in a position to defend the team. You can't be just scared. पर जहां तारीफ होनी है वहां बिल्कुल तारीफ की जाएगी। आज फिर से नीलगिरी नाइट्स का डिफेंस रोहित बेनीवाल इस बार परसों वहां पर करने गए थे, बट अपने आप को बैलेंस और नहीं कर पाए। साहिल ने अच्छा किया, बहुत अच्छी शुरुआत रही और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ शुरुआत हुई थी, जहां पर रोहित बेनीवाल 2 बार लगातार कहा उन्होंने कि मैंने टच किया, लॉबी में बिना टच के चले गए थे, जहां से वापस आने का सोचा ही नहीं। प्रेम बडू ने पहला जो वेस्ट होल्ड किया था ना सूर्या सेल्वम को, मुझे लगा था कि आज नीलगिरी नाइट्स का सूर्य अस्त कर सकता है रावली एरोज, बट उसके पश्चात नीलगिरी नाइट्स आर ऑन द फायर, ऑन द टॉपेस्ट नॉच उनका गेम नजर आया। Absolutely, they worked as a team, that's where it is, and also Raiders have been rotated very wisely. तो सिर्फ वहां पर 8 रेड पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट, 16 टैकल पॉइंट नीलगिरी नाइट्स के लिए, 21 वहां पर रेड पॉइंट, 4 बार ऑल आउट किया फिर रावली एरोज को और 5 अतिरिक्त पॉइंट नीलगिरी नाइट्स को मिले हैं। यहाँ पर एक मिला है रावली एरोज को, सुपर रेड कोई भी नजर नहीं आई, सुपर टैकल एक नजर आया अंकित जाट की तरफ से, बट ये थी इस मैच की कहानी। और विलन बेस्ट रेडर राधिका, क्या ये मैं सही देख पा रहा हूँ? 5 रेड पॉइंट के साथ पल्लवन वेलू वर्सेटाइल पाइवोटल रोल निभाने वाले वेल11 को मिले हैं 5 रेड पॉइंट और बने हैं वो बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर के अंक हालांकि उनसे ज्यादा हैं, वो 6 हैं राधिका। Absolutely, this is what the right cover defender was too good today, and but then this raider is an all-rounder today. Vellavan, 4 raid attempts and 5 raid points. And 125 is the raid strike rate. What a super way. क्रिकेट में पिंच हिटर जैसे कहा जाता है ना, अक्सर उनकी स्ट्राइक रेट इतनी होती है और ये कबड्डी में पिंच हिटर यहाँ पर बन रहे। 4 रेड में 5 रेड पॉइंट, रेड स्ट्राइक रेट 125 की रही है। आई एम लुकिंग फॉर नवीन इन द अरीना राधिका, क्या सीधा शायद विल11 के पास वो चले गए तुरंत इस समय? Very much possible, and the defender is definitely the right cover defender who has been phenomenal today. Manikandan Nesamani, 7 tackle attempts, 6 tackle points. Hats off to this guy. Very, very courageous in his defense. He is a so-called powerhouse. बिल्कुल पावर हाउस है ये डिफेंडर। और नीलगिरी नाइट्स चले चंबल चैलेंजर्स को थोड़ी देर के लिए खुश, पिछली थी 3 हार वहां पर है और पॉइंट्स देखिए -31 स्कोर डिफरेंस वहां पर है। पलनी टस्कर्स का भी जो पॉइंट्स है वो -14 है। राधिका हम्पी और सिंसोने का भी मुकाबला भी आना शेष बचा है। बहुत ही जोश जज्बा जुनून आज की इवनिंग में रहेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। पहले हम चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, उसके बाद आएगा मैच नंबर 80 हम्पी हीरोज वर्सेस सिंसोनिक राधिका। बहुत बड़ा मैच है, जल्दी से जाने से पहले पिक कर लीजिए कौन सी टीम जीतने वाली है। Very tough. Let's wait at the next time. चलिए मिलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः आप सभी का फैन कोड पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये पूरा मुकाबला रावली एरोस के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल चला है। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 79 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। इस मुकाबले में नीलगिरी नाइट्स ने अच्छा खेला और बड़े ही हाई परसेंटेज के साथ इस मुकाबले को जीता। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स, ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है द फिटेस्ट मिस्टर मोहन Kumar Anand sir, Physical Education Director, Mysore University, Technical Official, Yuva Kabaddi Series. Huge welcome sir, smiling as a face is with us. और ये मैच नीलगिरी नाइट्स 36 पॉइंट के मार्जिन से जीता है। आप सभी समझ सकते हैं कि कितना डोमिनेट किया है इस मैच में रावली एरोज को इस टीम ने। बट अभी आइए बात करते हैं फर्स्ट बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच की, वो रहेंगी नीलगिरी नाइट्स। Okay, let me check one more time. Let me blink my eyes. He is none other than Will for 5 great points in his kitty. Let's have a great round of applause and let's have a check on it. With his 8 points, a huge smile on his face. What a performance. But now the time for the best defender of the match. He is none other than from the team of Nilgiri Knights, Manikanda Nesamani, for his high percentage game and taking 6 tackle points. Now the time for the Kabaddi Kamal of the match, and from the team of Ravli Heroes, चलिए आज कुछ तो पॉजिटिव यहाँ पर Ravli Heroes की रहा है। वो एक सोलो टैकल था जो शुरुआत में आया था प्रेम भड्डू की तरफ से और उन्हें जाएगा इस शानदार सा अवार्ड। बट आई होप कि आने वाले मैचेस में प्रेम भड्डू, राजविंद्र बाकर और पूरी रावली एरोस एक बेहतर खेल की अपेक्षा रखते हैं। बट अभी प्रेजेंटेशन से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन।
am still not able to come out of the shock that happened to the Aravali Heroes in the previous match, and we have already stepped into match number 80, Hampi Heroes versus Sin Sonics. Yes, the Aravali Heroes lost. Yeah, that was a bigger shock, but the biggest shock, Velavan Muruganandan getting the Best Raider award. I mean, that is the first time that we are watching Velavan get the Best Raider award in the history of Yuva Kabaddi series, and me and James will definitely talk about it, Ryan. We will do that. As Harshit, can we have the Hampi Heroes and the Sin Sonics on the mat, please? Yes, it is the time for the match number 80th of this summer edition और इस booster round की प्लेस 7th and 8th टीम भिड़ेगी इस मुकाबले में। सिंध सॉनिक और हम्पी हीरोज दोनों ढूंढ रही है बेइंतहा अंदाज में जीत। किसके खाते में जाएगी ये वैल्यूएबल जीत, आइए इस मुकाबले में जानेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। बट अभी बुलाने जा रहे हैं with all your applause the home team from Karnataka, the defending champions Hampi Heroes. Now the Yellow Brigade shines like the color yellow, brighten up and shining up. Here we are inviting Sin Sonics. Sin Sonics need their first victory in the booster round, and the Hampi Heroes are coming in with a bit of a bad form and no raiders to support them. That has been their issue because from the time Shashank has gone in, there's too much of pressure on Gagan Glorious Gowda as Sagar Panchal and the rest of the referee crew walks in. Yeah, let's go in with the playing 7 of the Hampi Heroes. Sukesh Kulal and Narsimha Murthy. That's a strong corner combination. Madhu Kavirappa, Sudarshan, and of course, the point is, I'm just watching Gagan Gowda. Sudarshan plays like a raider. That's good. And I have actually had some discussions with Narsimha before the match. Let's see if that is what it is. As Suhas Nagaraj and Shiva Kumar, the trusted combination on the covers, will be back. Krishna Kumar, Ritik, Teja Nayak, Devanathan and Kiran VS will be the substitution lines along with Coach Narsimha. And along with me in the commentary box is Ryan. Hi Ryan. I called you James because you saw what was the effect Velavan had on me in the previous match. A defender getting the Best Raider award. As Ryan will join us very soon. Sin Sonics, yeah, they need to get that victory. Rohit Singh and Monu Kumar on the corners. Prince Kumar Roy, nice to see him in the raiding department. And Raju Singh along with Rahul Gope will be managing the raiding unit. And Binod Kumar and Ritesh Kumar are in the covers. And I'm not able to see Deepak Singh. That's big loss for the Sin Sonics. Harendra Kumar Paswan, Angad Thakur, Prem Mandal, Vikas Sharma and Anshu Singh will be in the substitution lines along with Coach Upendra Kumar. They desperately need to start on winning in the booster round because the head-to-head actually suggests that both the teams have got up against each other once. But in the summer edition here, that is that one victory where the Hampi Heroes have been successfully sitting out there, winning against the Sin Sonics in the survival round. But yeah, going out there in the Sin Sonics actually winning the survival round 28-27 against the Hampi Heroes in the survival round. But very good opportunity for Gagan Glorious Gowda to reach out to 150 and become that first raider to reach 150 raid points. He was the first raider to reach 100 points. First raider to become that 150 raid pointer can also be in his kitty. No cover defenders yet. Lokesh Gosalia, Ankit Chat, Rajendra Pakar, everybody are there as the corner defenders for the top 3 defenders' line. As Lokesh will be leading the pack with 52. And alongside with me will be Ryan. Hi Ryan, good evening.
Humpy Heroes, right. Madhuka Verappa, after a very, very long time, has won a toss. That's nice. Madhuka Verappa winning the toss and electing that he will stay on the court where he was standing prior to this. As Gagan Glorious got a 147 on the rate points. Yes, it's very good as of now. It's been that fairy tale that he's written for himself. But the only point is if he can actually bring in some variations in his raiding skills, especially in the escape routes. He needs a lot of variations that has to come in. That is much needed. And also for this lad, Raju Singh. Yeah, he's got variations, no problem. But he needs to get support with Rahul Singh along with Rahul Gope. Yeah, 63 rate points for him. Raju Singh and Rahul Gope will become a mainstay here for the raiding unit to go out there and get all the raid points possible for the Sin Sonics. Yeah, they will be happy that they have won against the Humpy Heroes first in the survival round. 7 losses for the Humpy Heroes in the summer edition, 2 ties. All the ties coming against the Palani Tuskers for the Humpy Heroes. But nice to see Suhas Nagraj is stretching out and warmed up completely. Trusted combination. What is the famous local dish in Mysuru? How does the team feel when the crowd supports? They are getting into Atharva. Wow. Nice question for me personally. Yeah, there are many dishes in the Mysuru zone. But Ragi Mudde Upsaru is the famous one. That is the local authentic Mysuru dish where a healthy proteinaceous ragi ball is being dipped into a nice cereals and pulses sambar, or the gravy that we call in English, which has been actually sprouted grains that has been used to make the upsaru. Very easy way of making ragi mudde and upsaru, and that is the secret behind a healthy body and a healthy mind. That is what it is, as local as that can get. Yeah, there are many foods as well, idli, vada, sambar, everything is there. But 11 losses for the Sin Sonics. That's not looking good. That's not looking healthy at all. But if you really talk about the local cuisine on the authentic way of Mysuru, that is what it is. Mudde Upsaru. Why is the team not performing well in the booster round? And when will we see Sagar Kumar back on the mat? Yeah, Dheeraj, lovely question. I just spoke to Sagar before the match. He says, I am 60% fit and I also feel really bad to not to be in the Sin Sonics lineup. The reason why they're not performing well is the Sin Sonics, Dheeraj, is because the Raiders need to hunt in pairs. And that pair has not been able to get a settled match. Because you had Raju Singh, you had Deepak Singh on one occasion. I have Ryan in the commentary box with me. I'll get him in soon. As, Deepak Singh was good. But then he's been taken off because of bad form. And then now Raju Singh needs to cope up with Rahul Gope. Yeah, there's been contest change there. And we will constantly keep speaking about that. Questions, 2 lovely questions, as we will get into the countdown to get this match underway. Humpy Heroes have won the toss and the first raid will happen from Sin Sonics. I have Ryan with me in the commentary box. Jay Kumar will be there in the center with that long handlebar moustache. Ryan, lovely that you have a wonderful podcast setup of your mic. You need to not pay your internet service provider for this month. You need to cut their subscription very soon, bro. Yeah, definitely will. But I would like to reiterate back to what we spoke on the previous time we were together. Every time this so-called special person messages me on WhatsApp in regards to the mic, this thing happens. Yes. Bonus point. Madhuka Verappa starts off with a bonus point. That's good. That'll do a world of good for him and the Humpy Heroes. Now see, Prince Kumar Roy comes in. And that question why the Sin Sonics are not able to perform, I very clearly want to take it out on the raiding unit. Suhas Nagraj first disagrees and then agrees 1 point. to Rahul Gope. Sin Sonic. Lovely running hand touch on the right cover. Narsimha, yeah, I was discussing with him in the lunch break. I asked him, can you field in Sudarshan?
and just ask him to be a defender in the in position. If that will be what your strategy can be, it will be good. We were just having that common discussion. Madhu Kavirappa, I think he has got a second point. Yeah, he was blinded for a while, but then he claims 2 points. Yes, Ritesh goes in for a late dash, and the Chamundi Vihar Indoor Stadium erupts with a little bit of a joy. Yep, this stadium loves to support this team. And take a look at that. Yep, as Naveen said, the dash was very late. And Madhu was clearly on his way. And the Humpy Heroes lead early on. Prince Kumar in for the Sinsonics. So where is Sudarshan? Sudarshan is standing in the covers. Ah, Sukesh Kulal! Stop this early problems. He's got that issue. The Mangaluru lad. And I know only little bit of Telugu, Sukesh. I can't tell you more about it. He went for the reverse ankle hold. Lovely kick from Prince Kumar Roy. Beautiful work. But yeah, speaking about Tulu, very close to Kannada. Most of the words that we use will be from Kannada as well. But it's got that little more accent to it. I think, Ryan, you also would have been exposed to a lot of Tulu as well as Sudarshan comes in today. Gets his touch point, running and touch on the right cover. Yes, a very good running and touch over there. And speaking as to how you said this, Naveen, yeah, I think that's a beauty of South India and actually, you know, our entire country in India. You know, you have so many languages that relate to each other. You know, there's Malayalam and Tamil, there's Kannada and Telugu, and there's Hindi and Marathi, Hindi with Punjabi. So that's such a beautiful aspect in India when we talk about how the regional aspect comes in. And all the states, you know, have some or the other way to relate with each other. And Raju Singh here is gone out of bounds. That's no relation to Kabaddi there, as it's a penalty point. What do you tell him? In which language? Come on, Raju Singh. There was a bonus attempt. It was a thin, tight rope that he was walking on. Couldn't walk onto it, slipped inside the mat. So that is what it is. The rule very clearly suggests if a raider does not have a touch on a defender, the lobbies won't be active. As simple as that. 30 seconds, you need to have the Kabaddi chant going. You need to keep chanting Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. That's the only game in the entire universe that a game's name has been taken while playing. And Madhu Kavirappa today has come out as a very, very strong captain with a plan. He's got points in all the raids that he's put in today. Yeah, I mean, that's a captain stepping up. That's what we're witnessing here. And as you said about Kabaddi being the most chanted word, I'm sure all of you would have checked out our Instagram page where there was a contest between 3 players. And it came down to, you know, saying Kabaddi for as long as you can. So all our viewers, you can go try that out and try stuff like this with caution because a dash has been executed and the raider did not exercise caution, which is why he's going back to the bench. Yeah. Caution with the minimalistic time of aggression. I think he took a lot of time instead of minimalistic. That was a problem from Prince Kumar Roy. Lovely dash there with a strong one. Shiv Kumar goes ahead. Periyar Panthers are ready in the background for their next match. They are slated to play the 8 p.m. game. Madhu Kavirappa tries his hand touch on that left corner. It's been a problematic start here for the Sinsonics, as it's much needed there. Binod Kumar, he is a defender on that left corner, and also Monu. 2 strong defenders. Madhu Kavirappa tries his best, gets his hand on Binod Kumar. Oh my God, that takes me back to that question once again. Why are the Sinsonics struggling? Yeah, because of this. No coordination in the defense, and the Raiders are not hunting in pairs. Ryan, I think it's so needed in especially a coordinated game like Kabaddi to have partnerships going nicely. Yes, very much. Partnership is a term that we often hear in the game of cricket, but how important is in Kabaddi? Take a look at that right there. The chain, Monu ran into the chain where there was 2 of them holding their hands, and that's a true example. And the Humpy Heroes getting the all out on the Sinsonics early on, and this is the right way for them to start this game here, Naveen. And I'll tell you what, that was just a surrender raid by Binod Kumar. Yeah, you can't expect much of him. He's a defender. You just can't expect that he can go out there and get a touch point. At least he should have tried for the bonus first. It's a simple basic knowledge of Kabaddi. But Madhu Kavirappa started well today. He started off with the bonus, and then he's gone in and sent Sudarshan. And what is Monu doing? Hang on that right corner. Good that he came back and did not enter the lobby. He's just watching the referee
on the corner of his eyes. He wanted to see if that, dreadful finger comes out. No, it does not. He stays on. But Ran, yeah, it's a nice path ahead now for the Humpy Heroes, because you know why? They have faced away all the stronger teams, comparatively stronger teams. Oh, has the hand crossed? They're stamping on the hand. And now he does. What was that? That was, I think, foolishness by the defense. Right. Instead of stamping on the hand, couldn't they have taken care of the dangling hand and moved it? What were they thinking, the Humpy Heroes? It was a very advanced tackle outside the back line. Ryan, I was very clearly watching somebody coming in and taking off the hand. Nobody did that. Yeah, I mean, we all thought that would eventually happen. Instead of seeing a palm come in, we saw a toe come in. And that kept all of us confused. And that's a super raid. Signaled 3 points and a big raid for the Supersonics here. Humongous raid, Prince Kumar Roy. See, this is the problem. Why do you have to stamp a hand of the raider? Come on, Humpy Heroes. I didn't expect this from you. Jersey number 7, green card, disturbing the game. Naveen, Absolutely. even there, and even there, like the moment he put his foot on his hand, he tried to use his hand and remove the hand, but he did not realize that it was his foot that was stopping the hand from being removed. So that is just not, there was no form of thinking done by the defender there. Madhu Kavirappa after getting that 1 point. green card. Humpy Heroes. Jersey number 3 Gets out. Vinod. But it's not right, isn't it? You know, just not taking care of the dangling hand. Right. Not taking care of that dangling hand was a fatal error. And 3 important points to Prince Kumar Roy. And now, see, the start has been nice for the window that has been opened up. And Raju Singh goes ahead and kicks 1 point. Suhas Nagraj Synsonic. Jersey on number that right 6 hit corner. out. Yeah, there they start losing some traction, isn't it? Every time at the Humpy Heroes. What a very nicely done kick there, and Suhas didn't seem quite settled there. He was going into a sitting position, and we have the last 12 minutes of the first half. Madhu Kavirappa has been able to get his race successfully all this while, but he will not get it this instance as the defense catches him and throws him out of the mat. Took it too lightly. He took it very, very lightly, Madhu Kavirappa on the turn. See, he did not expect the right cover to come in. Right. And that is underestimating your opponent. Ritesh Kumar, strong dash and pushes him off. You do not have to underestimate anybody on the Kabaddi mat. No! Shivakumar. Red shape. 1 point. This is why the Synsonic. Humpy Jersey Heroes number lose 27 their out. initial momentum. They started off very heroically, and look at this. This is a villainous effort from Shivakumar. Goes for the double ankle hold, does not get it. Lovely escape from Raju Singh on the tumble. Yeah, well, how can a team fluctuate so much? I'm sure that's the question that's going around all of our heads. But this man, Gagan Gowda, is one who fluctuates in terms of scoring points. Oh my goodness, the crowd roars as well. And that's a regular scene when Gagan Gowda is in the mat. And I think Red he shape. is 3 point. 3 points, so that is 150 for Gagan Glorious Gowda. He becomes the first raider of the Yuva Kabaddi series in summer edition to reach out to 150 raid points. Monu comes in with the chain. Chain gets broken, and even just for fall from the back line is enough for that pink arm to cross over from the midline. Of course, he crosses from his left hand, not the right hand. But he becomes the first raider to reach 150 rank. What a feat to achieve. He became the first raider to reach 100 raid points. Now he's the first raider to become that feet under his legs to get that 150. Yeah, it's great to have witnessed this, and I'm sure all the viewers on Fan Code got to witness that moment where Madhu Kavirappa did it in style, in the form of a super raid. I'm sure all of us will remember that he got to his 150 with the super raid, a very exciting one. And Sudarshan now comes in following a super raid, and he does not have to force himself to get points, and he will come back without touching anybody. Correct, and yeah, Gagan Glorious Gowda, you mean? Yeah, the first raider to get that 150. And we'll have to see that moment once again. Running hand touch from Raju Singh. If the defense can hold on to their rookie mistakes,
they can rock this game. That is what they'll have to do. Sukesh Gulal pulls himself back from that left corner. Good work. Raju is always there for the tumble and turn and wanted to escape. Again, Gagan comes in. The only point that he can be tackled out is with a chain tackle. Come on, Rahul. Rahul Gope as a raider was on that right corner. It was so easy. It's as if swallowing the ragi mudde. Right. Yeah, well, speaking of Ragi Mudde, Naveen, we now have a do-or-die raid. And after this, I will come back to my additions in regards to the favorite dish. I heard that question there. It got me hungry and got me thinking as well. But I'm thinking more about this do-or-die raid. As Raju Singh here, he has the bonus available. He will try that as that's the safest option. But he will try the touch point. I think he's gotten the bonus. Yes, he's gotten the bonus. Yeah, that's good from the defense of Hampi Heroes because they allowed him the bonus to go it off. That's good. That's very nice. And this is not a do-or-die raid. This is a super tackle situation. Madhu Kavirappa crosses the midline. Is it 1 or 2 is the question. Hampi Heroes. They've given away 2 points. And 44 out. Right, so Binod Kumar comes in just before Madhu crosses the midline. Yeah, watch this. The Sonics will be so... tie hold comes in as a block first. But the problem is he did not change the direction of the raider. Later, that came in where Madhu had already crossed the midline and he used the defender's position as a bounce back to go for it. Brian, I hope Raju Singh, if he can't revive anybody, there will be an all-out. Error again from Shiv Kumar from the left cover. He's got a bonus plus 1. Number 27 he does not want to see Narsimha's face. And yeah, even Ragi Mudde can't save him. He needs more energy than that. Yeah, speaking your number 12, favorite ones. 77 out. I think, Ryan, you also would have swallowed a lot of Ragi Muddes, if not. Ragi Mudde is one of it, but honestly, Mysore, you head to Mysore often. The special Mysore masala dosa that you get in several outlets. You know, there are places in Bangalore that sell Mysore masala, but it doesn't taste the same when you go to Mysore and have it. Because it's very different from a regular masala dosa, and this is very different from what's been happening because Madhu succeeded in most of his raids, and the Sin Sonics get a super tackle here, and this is big 2 points for them, back-to-back couple of points over 2 raids for the Sonics, Naveen. Absolutely. Angad Kumar Thakur had come in on the substitution lines. Lovely single ankle hold, and then look at what Rahul Gope does. Wonderful. Prince Kumar Roy, in fact, goes out there and pushes him off. Good super tackle. Yeah, speak about the Mysuru masala. It's that reddish masala that was that has to be inside at Mysuru masala, which has been spread across nicely on a very well roasted batter of dosa, and that was saved like that. And I hope she's eating something of it. And the mom was excited because Teja Nayak was almost going in there and to get a point. This is the second super tackle on a consecutive note. Sin Sonics are fighting back and they're fighting hard. They're fighting hard indeed. Take a look at this. 2 super tackles. That means they definitely have that intent. They have that willpower. They've got 6 points over the last 3. And right now, Raju Singh, can he change it all? It was this man who started that wave of points for the Sin Sonics in his raid when he was the last man standing. And he's claiming the point. Will he get it? Okay, Raju Singh. That's fine, that's fine. You come back. That's okay. Fine, I know you have saved your team from an all-out. Stop your over-aggression. There are referees to decide what the fate of this match is. If you're not liking it, go for the review. TV umpire, Hampi Road challenge, no touch point. Our decision, 1 touch point. Please review. Yeah, so see, the decision was given. And why was Raju Singh unhappy with something? Yeah, Devanathan, the substitute from the bench. He had just come in. Acrobatic escape. But is it good enough? Is the ring finger and middle finger of Raju Singh had a forearm contact with Hampi Heroes is Devanathan. I'll tell you something, Devanathan is one good defender that he always wants to perform. But when he gets a chance, suddenly he's been tackled out. He immediately claimed it was not there. And look at Raju Singh's reaction. Stop disrespecting the other players.
Only then Kabaddi will respect you, Raju. You're good. You've saved your team from an all-out, which is okay. And I don't see this from, I think that sort of a clan difference that comes in, or a regional Review difference that comes in. unsuccessful. Review 1 unsuccessful. point. Over. Syntonic. Done. Humpy Heroes lose their Humpy review. Heroes. And now Raju Singh, can he be happy, or can he take back all that he showed in front of the camera? All that bad aggression that he showed in front of the camera. Now, can he take it back? And I think that argument was also with the defender mainly. Both of them looking at each other and just not agreeing on one bit and going excess. However, that's done. And a 6-point difference, a 2-point difference will become a 3-point difference because Sudarshan successfully gets a point. Yeah, they are trying out Sudarshan as a raider because there is nobody, isn't it? Ritesh Kumar, you should understand that one. As a right cover defender standing in the right corner, he expected the chain to come with him. I wonder what happened. I think he was unhappy to go with the chain, the defender out there. But now Raju Singh against Shiv Kumar. He's got that cartwheeling escape, which is nice, and that will confuse the most of the raiders and most of the defenders going attacking against Raju Singh. Doesn't get anything, goes out. So yeah, Ryan, just going back to that authentic Mysuru local dish is mudde. What is your experience with that? When did you see or encounter it for the first time? Is that a better word, encounter? I mean, encountering was the first time as a kid in our school picnic. That was what was served for lunch, and that's when the first time I ate it. And I ate it when I was very hungry, so I did not savor it 100% because I was just hungry and I ate whatever was there. But yes, after which I've always, tried to find, a unique aspect in Ragi Mudde, and I've even tried a chocolate version of it. Don't judge me. God. But yes. Really? Where do you get a chocolate ragi mudde? Who's that scientist who's invented that one? So I don't know, was my seniors pulling a prank on me or not, but yeah, he apparently told me, apparently his mother was the one who prepares the certain type of ragi mudde, because he didn't eat normal ragi mudde, so she had to make a chocolate version of it in order to have him consume it. So he would bring that. Now I genuinely hope that it was actually ragi mudde and he was not pulling a prank on me, but he's a pure Kannadiga, so I don't think he's going to scam me on that. Right. Prince Kumar Roy should have come in, but no. Rahul Gope on a do-or-die raid. Can the Humpy Heroes understand that this is the pressure on the raider and not on him? Shiva Kumar! Either he is gone and given away points, or either he is not coming back in time. Another point taken very easily, running hand touch. And he does not go back in time. What was he trying to do? Oh, toe touch, running toe touch out there. Oh, you can't do much about that, isn't it, as a defender? Yep, you can't. Now a do-or-die raid. Sudarshan comes in. Humpy Heroes still hanging on to that lead because of their dominance early on, since Sonics have been the better team all throughout. But Sudarshan here is putting out a good performance in the form of raids, getting those important points for them. Marvelous. And this is what I like. When you don't have a place in the team, you've been left out because there was no defenders. And now, when Shashank is not around, Sudarshan has put up his hand and said, listen, coach, I will go for the raids. And this is what I exactly had the discussion with Narasimha on the lunch today. He was just discussing about how he can actually go out there and get a few raiding help. I said, if you can try out Sudarshan, and also first try him out as a defender out there and then try him out as a raider as well. So yeah, that has worked out. But I'll tell you something. When Gagan is on the bench, the revival does not come in time. That has been the issue. That has been the big hurdle there for the Humpy Heroes. That is why they lost their previous match as well. And even now, he's still on the bench. He's not been revived yet. But surprisingly, and for a pleasant surprise for the Humpy Heroes supporters, that Madhuka Veerappa has started well. By far a better performance by the captain, Harshit. Ryan. As Harshit is sitting next to me in the commentary box here in the arena. As Madhuka Veerappa, he's got 8 points.
Yeah, he was indeed the one who started off early on, getting so many points. And a dash here for the Humpy One Heroes. point, Finally, Humpy Heroes. a defensive point for the Humpy Heroes. Wonderful. This is what they wanted. Right. Raju Singh, who saved the Sinsonics from that all-out. And now the defense gets together and dashes him off. And I understand why Madhu is trying to do this. It's only the defense of 3, and Sinsonics have already got 2 successful super tackles. And he's got that one. Ninth grade point. Running and touch on the tumble. He's got that left corner away. Rohit today is looking a little weak. Right. Look at Upendra Kumar's face. And you've also played with a lot of coaches. What did the coach actually mean? Can you read his mind with his expressions? I mean, the player should be sad that halftime is coming soon. And Raiders safe will be signaled, and another point to the Sinsonics to finish this half, which means it will be a 4-point affair at halftime. Yeah, what just happened there? Halftime. So Change the close code. to inflicting a second all-out, and they did not do it. Once they gave it away to Raju Singh, now to Prince Kumar Roy. Right, nevertheless, after a very, very long time, I think after some 3 or 4 matches, Humpy Heroes are leading against their opponents for the first time in their second half. Can they keep up that lead, or can the nervousness set in, or can that foolishness of giving away a lot of points will set in against the Humpy Heroes? We'll find out as we slip into a short break and come back soon. Welcome back, everybody. As there's a substitution that's going on because there's a super tackle situation as Humpy Heroes have won the toss. So they will be raiding first in the second half as well. But yeah, Madhu Kaverappa today has been very good. You know what, Ryan? I was just jokingly speaking to the physio team when they were having the bandaging session going on for the players. I was just telling them where Madhu was sitting there and bandaging it out. I wanted to, actually go out there and tease Madhu. And also tell him that, listen, Caps, you have not been scoring great points. So I said to the physio, okay, bandage him off nicely. I think he's going to get a Super 10 today. I was very, very sarcastic about it. And Madhu was like, Anna, come on, why are you teasing me? I'll try and do my best, he said. And he's doing it. Gagan Gowda with that super raid, but Madhu Kaverappa, 9 raid points already. And this is after a very, very long time. We are watching Madhu in his original and true colors. But the defensive errors, that has also been unstoppable from the Humpy Heroes. Yes, Madhu was also being tackled out in a super tackle. Good that the Sinsonics have come back with 2 successful super tackles. And against Teja Nayak, not easy. He's a very strong lad, Teja. But then they have escaped the all-out from Raju Singh's brilliance. And now when he's not there on the mat, there is a bit of a light under the end of the tunnel for the Humpy Heroes to inflict the second all-out. I'm Navin Shori. Alongside with me is Ryan James. Ryan, because they won the toss. Humpy Heroes, please come. No, they just had a Stand substitution. in. Oh, look at that. Follow. Krishna Kumar BS comes in. He's not 100% fit, but he's just come on in. I think because they need raiders. And because Humpy Heroes won the toss, they have the first option to raid in a super tackle situation. Can he go towards Prince Kumar Roy? Because Angad is a very strong defender on that left corner. All right. Prince did not have to make a comeback. That's a super 10 for the captain of Humpy Heroes. And I think that has come as how rarely Ryan eats the Ragi Mudde. Ryan never eats Ragi Mudde. It's a very rare occasion. Madhu Kaverappa getting a super 10. It's like Ryan eating Ragi Mudde. Oh, come on. Yeah, well, Naveen, you said something, right? The ray of light that they can see in the tunnel. They had that light that they could see in the tunnel. The Sinsonics
But I would like to cite a very famous book by Mr. Ruskin Bond, which which is titled Tiger in the Tunnel, and the tiger in the tunnel is the man who just scored the Super 10, Naveen. Oh my God. Narasimha Shape, Murthy. bonus No. plus 1 point. Rahul Gope number one was now. under immense pressure. It was as if he was in the furnace of a coal. And Narasimha Murthy is just blown off some cool wind and air. Again, they are escaping the all-out for the second time. It's all down to Madhu Kaverappa. But Ryan, did you like the comparison? Madhu getting a Super 10 is as rare as 1 point. Ryan eating Ragi Mudde. Jersey Do you number agree with that? 66 out. It's a very rare occasion for you, isn't it? I mean, if I, it's a fair comparison, but if I agree to it, it would be entirely, you know, demeaning Mr. Madhu Kaverappa, and I don't want to do that. My God. See, I'll tell you what. Even though all the players are good-hearted, very friendly, nice, but all that is outside the mat. Again, they have given away the all-out. Now tell me, when they play like this, how can you have the soft corner on the words at least against them? Was it really needed? Shiva Kumar, what is wrong with him? From that left corner. No, that's Devanathan. Sorry, correction. Jersey Looked number like 40 Shiva in, Kumar. 11 He out. was giving away all the points, but again, Devanathan. Right. From that left corner. Madhu's got the and taste of the Naveen, blood. you said how the Humpy Heroes, early on when they had that lead, they were underestimating the opponent, and that's exactly what they've done across the previous two instances when they could have forced Sonics into the all-out. But this man here, Madhu Kaverappa, will continue to score points. The question is, can they finally get that all-out after this? Brilliant. 3 occasions he's made sure that the super tackle has been deflated just to one man standing. Last man standing. Again, Narasimha Murthy. Can they give it off? Right out. Yeah, finally something. Devanathan comes into the rescue of his corner defender, and they have inflicted the all-out. Finally. My God. They were escaping the all-out 4 times, Ryan, and even this could have been the 5th time. Narasimha goes for the double ankle holds, and Devanathan takes care of the dangling hand. Oh, that was so close. And even he. Please come. My God. The touch on the midline was first from the Raider and then 40 out. from the defender, but thankfully, both of them did not cross. Jersey number 11 in. If Devanathan would have crossed, it would have been easy 2 points. Finally, the second all-out is inflicted. Now, I understand why you said, if you agree to it, what happens? But I'll tell you something. As a player myself, as a sportsman, it's always nice to have a bit of a stick. Whether it's coming in from the commentary box or from the coach, it's nice to have a bit of a stick. Or else, this will keep continuing. 1 point. Strong ankle hold from Rohit Singh on the left corner. His first tackle point. Yeah, and you can look at a good angle where we could see the bench looking at that player getting back to join them on the bench, courtesy of that error done by the Raider. And now Raju Singh comes in. Raju has been instrumental in this game, especially getting those points quickly. And a pursuit here. Okay, the pursuit will be stopped. Right, Shape 1 point. Sonic. Yeah, see the problem of having an injured leg and going for the ankle hold. Kiran BS. He's got an injured knee. There's a little bit of a muscle shift that has happened, and he's just come into play with a kneecap on. Touch points 12. First point was a bonus point. That's it. And after that, 12 touch points in his 13 points today for the captain of Humpy Heroes. He started off with the bonus point. And yes, Ryan. Just go by. He's broken the chain. Have you seen this ever from Madhu Kaverappa? I have not. The girls also say even they have not. It's a super raid. Bonus +2. He broke the chain and just went through with the midline. Where was this Madhu Kaverappa before today? All it took was for Mr. Naveen Shawri to intimidate him before the match while he was getting banded. Hey, listen, I didn't intimidate him. I was very sarcastic. I was really sarcastic. I will go out there and accept this live on fan code. Because I want every team to perform, not just some period. I want the Sonics also to perform. Because when every team performs,
It increases the standards of your Kabaddi series. That's all we want. And look at Sudarshan. Look at Sudarshan. From that left in position. Yeah, he was not going back. And such a nice reach by Raju Singh for taking him off. See, when such things happen, what do I say? And you know what Sudarshan asked? When I was sarcastic to Madhu Kavirappa, just talking, he asked, Anna, you can tell me also something. I said, Sudarshan, what is the use? But he's made me also go wrong. Good work from Sudarshan because he's got 8 points. Wonderful. So, somewhere, that player aspect of, you know, just being a little on a jovially sarcastic is worked. Sudarshan has come out and got 3 red points. Wow, wonderful dash. I think our cameraman is hurt. Our cameraman is definitely hurt. If not the cameraman, it's the camera for sure. Can our jib angle show our cameraman? That'll be really good. It'll be nice to see what has happened to our camera feed out there. There, it shook up. 2 in, 10 it now. really shook that stance. And that's definitely an interesting moment of the day for us to see. Although we do hope the cameraman is fine. I'm sure he is. As Madhu Kavirappa steps in, he's raring to go. Can he get through? Can he put his arm across? No, he cannot. And finally, Madhu Kavirappa has been stopped in the second half. Naveen. Yeah, I think he was tiring off. He was going in for multiple raids. Right. And he was just tiring off. Lovely work from the left flank. Comes across and dashes off Madhu Kavirappa. Prince Kumar Roy. Now for the Aage ka rasta of the Sinsonics, I was just talking about, I want every team to do well. Wanted to go under the arms of Hrithik, but right cover just caught him. And he just went through with the lobby. Very good work from Hrithik. Now watch that. Right. He was overrunning the raider, but then he caught his waist. Just put him across. So yeah, Ryan, so speaking about every team performing, that is why we've had the questions also. As all the viewers watching live and exclusive on Fan Code can have the questions going in. Teja Nayak once again runs into the hands of Ritesh. 1 point, Sinsonic. Narasimha will not like it, the coach. Timeout, Ambiros. Yep. And I think Narasimha sir will get an opportunity to talk to his players, and I'm sure put in some good wisdom into them so that they can hold on to this lead and finish off with a victory here. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಪ್ಪ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕೋದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವಿಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಅವನೇ ರಿತಿಕ್ಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಫ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ I like what Narasimha said. I hope, Ryan, you understood it. Come on, go ahead and decode it. Come on. Why did I have a feeling you were going to do that? Yeah, well, what he concluded with is that we need to get a high score. We need to continue scoring, finish off with a high score. And prior to that, he was sarcastically asking, what kind of a Kabaddi player are you? Exactly. Go for that again. Forget the conclusion. What was the initial point of Narasimha? Go for it again, Ryan. Come on, my friend. He asked, what kind of a Kabaddi player are you? Exactly. See, that is why. Now, imagine if Narasimha is asking that sort of a thing. He's instigating the raiders to go out there and get points and the defenders to just tackle out. He also said, "Inna eshta avakasha anta appa kododu." That means how many more chances you are expecting out of me? Yeah. See, that is good. You know, where Sinsonics are struggling for their first victory, if you are giving away 3 super tackles towards them and not able to inflict the all-out on 3 occasions or 4 occasions, 5th time the all-out was inflicted. Imagine if it was someone else. Imagine if it was Nilgiri Knights. Imagine if it was Chambal Challengers. Of course, Chambal Challengers have lost against Ampi Heroes dramatically. But just imagine. And dash, is it been successful? Oh, Shiva Kumar gets the point. Rahul Gope wants to review it. Yeah, well, it was very close, and we can take a look at the replay and get clarity. Right. Rahul, did he get through? Yeah, I don't think so. I think his body was out. Oh, he did? He was outside the lobby.
Nevertheless, very good dash. Shiv Kumar gets his tackle point for the first time. Madhu Kaverappa has done well. First tackle point for Shiv Kumar. He was under that zone of making a lot of errors. See what happened when Narasimha, the coach, came out there and was little sarcastic. Madhu Kaverappa once again gets a multiple point in a raid. And Chamundi Vihar Indoor Stadium erupts. 7. No Gagan Gowda, he's been substituted out. Gagan Gowda has been asked to rest, and Madhu Kaverappa says, come on. Naveen has actually instigated me while I was there in the physio. Super raid again for the captain. Second super raid for him. Siran, small sarcasm, and that is working good. Oh yes, Naveen, definitely working good, working very good indeed. Because this could be that one match that gets Madhu Kaverappa to step up again and continue to show how good of a raider he is. And this is coming at a very important stage for them in this booster round today against the Sonics. Because from here on, it's going to be more difficult. They're in the 7th position. They want to climb up. They want to head into the next round strong. So this could be that match that ignites things for Madhu. Yeah, absolutely. And he should not expect me to always go out there and be sarcastic. I've done it once, I can't do it always. Teja Nayak, this is the 3rd time that he's getting tackled out in a super tackle. Come on, Teja. Oh, easy. Oh. He wants to go ahead and gets it. My God. I had given up on the commentary, but not Teja Nayak. All that number of hours he's put in the gym has actually worked out today. Strong chest, strong shoulders, and even by escaping that strong clutches of Raju Singh and also Angad Kumar Thakur. Oh, no way anybody else is escaping that one. You need to put out a number of hours in the gym, and Teja Nayak is a very good gym lover. That is why he was able to pull both the weights and go for it. Unbelievable this is. Ryan, I had given up in the commentary saying it's a super tackle. Yeah, indeed. I'm sure anybody watching here on fan code must have thought that's a super tackle, and the way he uses mid-body to propel himself through as the Sonics here get one more point, but they still trail by 15. That one all out. Do you think that sealed the game there, Naveen? Yeah, 3 all outs totally, isn't it, for the Sonics. Teja needs to settle down. He is a very good raider, and I like the way he is being disciplined with his body. Because if you're not disciplined, you cannot have that physique. Ankle hold, that's it. Right now, even with a very good physique, I tell you what, in Kabaddi you need skills. And I don't see any raider of Humpy Heroes utilizing the lobby. As a right raider, turn towards right. Forget the anti-block and anti-dashes that's coming in from the cover defenders. Use the lobby, turn around and escape. Let's listen to Narasimha. ಬೈತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅದು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನೋಡ ನೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಡ್ತೀಯ ठीक है ना लेफ्ट में ठीक है चलो All yours to decode what Narasimha said. Come on, Ryan. You've been a Bengaluru. I can decode what? No. You don't have to decode anything what Upendra Kumar said. He ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೈತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು 3 ಅದೊಂದು 6 8 9 ಮ್ಯಾಚ್ 9 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ರಿ. Yeah, he said there's 9 more games, chill and play. Correct. Okay, but before that. Come on, Ryan. Before that, they were all having fun. Hey, no, dude. I heard the players laughing, drinking water. Correct. But for what? Come on. Oh, man. well. Yeah, Raju Singh stepping no, into the next Raju Singh, raid come right on. now. Raju Singh, I know he's got 8 raid points. If any... okay, listen. In the commentary, if anybody is telling the score lines, that means they don't have anything else to talk. I don't believe that. We have so much to talk here. Come on. People can see the score live and exclusive on fan code. They know it. Yeah, Madhu Kaverappa rating 98. Everything is okay. Yep. You tell me what did he say? Yes, man, so we have Naveen here putting me in the spot as Madhu Kavera comes in. He's put all the defenders on a spot. That's what he's done throughout this game. 19 raid points. I mean, I'm sure we'll get to watch him. Score is 20th. Yeah, he does. Double super 10. My God.
Just a small sarcasm from me before he got in. Narasimha Murthy, come on. 1 point. Unbelievable. Sonic. Jersey number 1 out. Did not expect Time that. out, Sonic. Sinsonics, okay. Let's listen to Upendra Kumar. And Ryan wants to only decode what Upendra Kumar says. अरे नहीं को टाइम आउट डिफेंस जो है ना उन पकड़ो उन लोग को रुको टाइम आउट लेके रोक रहा ಇಲ್ಲ ಡೌ ಮಾಡು ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಡ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Right, he only wants Madhu Kavirappa to go on, keep raiding. A double super 10. Am I so influential in life? I never knew that. I only said to the physio that put on some extra tape on Madhu Kavirappa, he's going to get a super 10. And that's it. That ignited Madhu Kavirappa to go out there and get a double super 10. And Sudarshan also. He also asked me, Anna, tell me something. I said, that's what I asked him. Everybody laughed. And then look at Sudarshan. He's helping Madhu Kavirappa. And I can't go out there and be sarcastic every time with Ampi Heroes. If they want to perform well, they'll have to perform well on their own. But Ryan, let me take you off the spot. Now I can. Let me take you off the spot. I know you're also like my elder brother. I will not put you on the spot. Huh? Huh? Fine. Ankle hold from Hrithik. Raju Singh is tiring. Suhas Nagaraj knows it. He taps her back and sends him off. So what Narasimha actually said was, listen, everybody are getting tackled, and even that super tackle was just given to you because you were struggling and you were closer to the midline, or else Adunu tackle. That's what he said. That also was a tackle according to me. The referees were good enough to give you 2 points. That was he was telling the Raiders. No, jokes apart. You actually need to have that aggression, small aggression within you, not against any opponent. The aggression should be within you. And the best example for me is the man himself, Virat Kohli. He's got aggression. It's positive aggression. It's within him. Prince Kumar Roy gets a running hand touch on the right corner. Wheels himself out. Ryan, how much do you agree with that? It's not. See, the aggression should not be against the opposition. That's okay. But if your fire is inside you burning and Teja Nayak does not go back in time on the right hand position. So I'm only saying have that aggression within you. See, today, because Madhu Kavirappa had that aggression, he gets a 22nd rate point today. Ambiros, jersey number 18 and 15 out. My goodness, the Madhu Kavirappa factor. Honestly, I'm not going to say Madhu Kavirappa factor. It's the Naveen factor, as we have a timeout being called and we can listen to the coaches once again. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಡು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಕಣ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಸಿ ಅವ್ನ ಕೆಲ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ घूमना था तुमको बैग मिलता नहीं Ambiros goes to time out over. Upendra Kumar is not happy with the defense. He's just saying you need to turn, you need to change the direction of the Raiders. You guys are not doing it when you go for the dash. That's what he meant. But then Narasimha, he said to Narasimha Murthy on that right corner, Mel hodkodbeda. That is what he said. That means don't go attack outside the balk line. Jersey number 27 Very out. simple. Gagan Gowda sits on the bench and enjoys this match. He's been substituted out. Shivakumar today, I don't know what's gone wrong with him. From that left cover. And you know what? I've always seen Shivakumar go back to the hotel room, see the entire match with high volume on my commentary. And then I don't speak to him. Oh, they just kicked right on the shoulder of the right corner. Ready shape, 1 point. Ambiros, jersey number 12 out. Yep, Teja Nayak, the substitute, coming in and getting his third point here in form of a beautiful kick. As we take a look at that, wow! I'm sure a player with his height, propelling his leg all the way up, must need a lot of agility for that. And Hampi Heroes looking close to that 50th point, and they're doing what their coach said, that they have to score a lot of points, but they're leaking a lot of points here because bonus +1 is given to Rahul of the Sinsonics. I'll tell you, I'll ask you something. Has Shivakumar forgotten that he's wearing blue jersey? Is he wearing yellow jersey or what? Hey, someone needs to tell him that hello, brother, listen, you're wearing a blue jersey around.
every tackle today has just been unsuccessful for him apart from one. Teja Nayak once again gets a toe touch on Rohit Singh on that left corner. Jersey number 44 out. Shiv Kumar is a very good defender. Let me go back and reinstate this. He's a very good defender when he comes into the attack with Suhas Nagraj. As a combination, they are unbreakable. They're very, very good. And every time Shiv Kumar has given away points, he's gone in and taken single points. If he can, as they fix the bonus line tape, if he can go back to some of the raid points of Sinsonics on the replay. Of course, Ram, our EVS operator, I have not taken his name today. So he will definitely be in a resting position. He's still in a resting position. Right, as the game resumes. So yeah, I mean, the reason why I was talking about, Ritik, wonderful! This is what I was telling you. Combination tackle. Ritik goes for the thighs and Narsimha Murthy comes in front of him for the block, even though it was outside the block line. Because of the combination, they got it so right. Watch that. This has not happened with Shiv Kumar today. He's gone in for all solo dashes and tackles attempted. And that is why he's failing every time. Yep, and looking for his Super 10 there, but he was denied by the Humpy Heroes. And Teja Nayak here is done well coming off the bench. And I don't think Madhu will be coming in for any more raids. And Madhu has scored the most number of raid points by a raider in a single match, which is 22. As Teja gets one more point. And the previous record was held by Sanskar Mishra, 21. So it's good to see a record being broken yet here again, Naveen. You know what? It was not even 1 hour that Sanskar Mishra had the record. It was just happened in the previous match. That's all. Sanskar Mishra, just within 1.5 hours, Madhu Kaverappa has broken it. My God, and imagine if Madhu goes back and listens to the match with our commentary. Because of my sarcasm, what has gone to Madhu Kaverappa? But yeah, see, going back to whatever the discussion was in terms of tackling from Shiv Kumar, it was very good as combinations. But the combination, when that does not work, it'll just be very, very weak. Right, Humpy Heroes become the third team in the Yuva Kabaddi series of the summer edition to score 50 points overall. And this is happening for the first time. And Ritik goes for the raid for the first time. And I think the thread that he wears around his neck has been torn off. That's just Jersey number 8. a lovely dupki, I should say, from Ritik. Green card. Yeah, jersey pulling, green card. The match has ended. Now what's that? Oh, that I think that chain and the locket is just been pulled off, Ryan. What a match. What a match indeed. Take a look at this Humpy Heroes finishing strong. Their coach in the timeout told that they need to score more points. They need to win by a big margin, and they have done that, winning by 18 points against a team like the Sinsonics. This game was promised a lot of thriller because both the teams were placed on the bottom side, placed 7th and 8th. So both the teams fighting for victory, but it was the Humpy Heroes that fought harder today, Naveen. Yeah, Ryan, and also, you know what? The Humpy Heroes have scored 30 points in the second half. They were 22 only when the first half finished, and now they are 52. That means 30 points. And Sinsonics have scored only 16 points in the second half. They were 18 to finish the first half, and that shows what Madhu Kaverappa has done today. He's gone ahead and demolished the Sinsonics' defense. And that would have done a world of good for the captain. And of course, his father will be really, really happy, Mr. Kaverappa, because he is very concerned of his son's performance and he wants his sons to do well. And of course, he'll be a happy father today, Ryan. Yeah, definitely. You know, that name shining strong as the highlights we get to see of the second half. A lot of positives for both the teams, but it was more in favor of the Humpy Heroes. We saw a few super raids also coming in. This was one of them. Obviously, it was Madhu Kaverappa, the super. And this raid was one beautiful raid. Just when we all thought it was a super tackle, he propelled, he never gave up. And take a look at this, ladies and gentlemen. This is why you should never give up in life. In any given moment, and you can see he was tired after that struggle, but he enjoyed that moment. A tackle point there for the Sinsonics. And not to forget this positive raid when Prince came in and got the point alongside Raju, who was getting points, but he couldn't do it
in this instant. Very good. And also, you know what, sarcastically, I think, Ryan, you've put out a point to me. I gave up on that super tackle. Can I take that, Ryan? Yeah, Is it no sarcasm? worries. Huh? No? I Come said on, no Ryan, worries. stop being politically I right. said no worries. No worries, okay. No worries. Right, I'm sure you're talking less to Harshit Sharma. And you've been very, very non-political in your words, which I like. Lovely. As always, Ryan, wonderful to be with you in the commentary box. 22 rate points. Can you believe that? Madhu Kaverappa. And after a very, very long time, he's got his double super 10. 36 rate points, out of which 22 has come off Madhu Kaverappa. And nothing to do between the defenders. Was that? 9 tackle points each, and only the defenders have not done it well. And that question that was being asked before the start of the match. See, that is why it's very, very good to go out there and have your questions very correctly. Why is the team not performing in the booster round? And when will we see Sagar? That was a question that was being put out by Dheeraj for Sonics. See, and what was the answer that I gave? The Raiders are not hunting in pairs. That exactly is the result of this match. The defense was fine. The Raiders did not hunt in pairs, and that is why Madhu Kaverappa has gone in and got the best Raider of the match. Yeah, there was no doubt that it was going to be Madhu Kaverappa itself. 22 points. I mean, it was a scintillating performance, honestly, and we got to see his highlights throughout the game. The best defender for the Sonics, from the Sonics, a total of 9 tackles, just 4 tackle points for Ritesh Kumar. 1 super tackle, not to forget, but a tackle success rate of 44. Not the ideal day for him, but I'm sure he will be happy that he could pick this up. And the Sonics still looking for that victory here, Naveen. Yeah, they become only the second last, isn't it? Palani Tuskers and Sonics not winning a match yet. Humpy Heroes get their first victory, and they have wiped out a lot of score difference. They were number 7 before this, and look at that victory. What has given them with that huge margin? They have gone ahead, and they are now on the 5th spot. So that's what I was telling you, where Humpy Heroes have faced up all the challenging teams. They have faced up Nilgiri Knights, they have faced up Palani Tuskers, where they had that tie, and they have faced up against the Periyar Panthers. So they have almost come through with all the difficulties earlier in the booster round, and now they have the goal set to go up and be there at least on the top 3 or the top 4. Right. A lovely match where the Mysuru team, the Kannada team, will be really happy and enjoying. Periyar Panthers take upon the Chola Veerans, and Chola Veerans have won all the matches prior to this. Can that be another change? That'll be coming in at 8 p.m. Ryan, thank you so much. Go out there, have lovely Ragi Muddes. I'm sure you'll love it. And thank you so much for all the fun that we had, Ryan. See you soon, everybody. Live and exclusive on Fan Code at 8 p.m. Come back soon.
A pleasant and also enjoyable win come here for the Humpy Heroes against Insonic in style. Welcome to the post-match presentation of match number 80 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, our broadcast partner FanCode, Fantasy partner Dream 11, Physio partner Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy, Hospitality partner Ginger Hotel, our healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. And in the presentation today, we have two special guests. One, a brilliant little child, along with Miss Kavita G, First Division Assistant Commercial Tax Officer. Huge welcome in the post-match presentation. ये मुकाबला खेला गया हम्पी हीरोज बनाम सिंसोनिक और अंत में आते आते हम्पी हीरोज के शानदार जानदार प्रदर्शन के साथ इस मुकाबले को उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ अपने नाम किया. सीधा चलना चाहेंगे अवार्ड्स की तरफ. शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ जो रहेंगे हम्पी हीरोज की शॉकिंग परफॉर्मेंस के साथ. आज उन्होंने बताया कि उनकी टीम उनके लिए सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस बिल्कुल दिखाएगी. मधु कवीरप्पा 22 rate points in his kitty. Let's have a look at his performance, please. Just an enormous performance by this marvelous Madhu Kavirappa. And now the time for the best defender of the match. And we would like to give this to Sinsonic team player Ritesh Kumar, जिन्होंने अपने नाम किया 4 टैकल पॉइंट्स और प्राप्त किया ये शानदार टैकल. देखते हैं. And now the time for the Kabaddi Kamal of the match. So लग रहा था एक बार कि क्या यहाँ पर ये जो टीम है सिंसोनिक वो सुपर टैकल के साथ अपनी टीम को वापस लेकर आएगी. बट ट्रेडर ने कहा कि चलिए हार मानना मैंने सीखा नहीं है और तेजी के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया और दिखाया शानदार मूव ऑफ द मैच. वो लगाया था तेजा नायक ने. So that's all from the post-match presentation of match number 80. Thank you so much for joining us.
Check 1 2 3 testing the mic. Yuva Kabaddi series. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hey Lelia bhai, audible. Hi.
नमस्कार, स्वागत टेस्ट कबाल आप सभी का। मैच नंबर 81, एक और पड़ोसियों की लड़ाई। पेविया पैंथर्स बनाम चोला वीरन्स जिन्होंने बूस्टर राउंड के अंदर वो तीनों ही डोजेस लगा लिए, 3 के 3 मैचेस जीत कर ये टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन। चलिए आप सभी को ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, दोनों टीम्स को मैच पे बुलाते हैं। पेविया पैंथर्स और चोला वीरन्स आमने सामने। ओवर टू हर्षित। तो आयुष ये मुकाबला बड़े कांटे का होगा। एक तरफ होंगे साउदर्न इंडिया की सबसे प्रसिद्ध डायनेस्टी की टीम चोला वीरन्स, तो दूसरी तरफ होंगे सबसे खतरनाक नॉर्थ वेस्टर्न के पैंथर्स। क्या पैंथर्स मार पाएंगे झपट्टा या फिर चोला वीरन्स के खिलाड़ी दिखलाएंगे अपने प्रदर्शन में लड़क, जोश, जज्बा और जुनून की। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी के समक्ष द टीम ऑफ पैंथर्स, पेरियर पैंथर्स। With 3 wins in a 3-match streak, they are on fire and high on confidence. Let's invite Chola Veerans. साउथ वर्सेस नॉर्थ वेस्ट। देखना यह है कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम होगी बेस्ट। चोला वीरन्स क्या अपने विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रख पाएगी या फिर पेविया पैंथर्स उनको पटकनी दे के दिखाएगी। राजस्थान के आए हुए शेर क्या मैट के ऊपर होंगे ढेर या फिर अपने ओपोनेंट को वो पटकनी देकर साबित कर देंगे कि विनिंग स्ट्रीक को भी तोड़ा जा सकता है। पेविया पैंथर्स मोनू प्रसाद, आज एक नई खिलाड़ी को मौका दिया गया है और बात करेंगे क्यों। रोहित यादव, गोपाल सिंह, ये वो ट्रायो रहने वाला है जो रेडर की भूमिका निभाएंगे। राइट कवर के ऊपर आपको राहुल नजर आएंगे, तो लेफ्ट कवर की भूमिका मंजीत निभाएंगे। मंजीत मित्रा की परफॉर्मेंस ठीक ठाक से रही है, सी बैटल अपने आप से लड़ रहे हैं। राइट कॉर्नर के ऊपर अनुज सैनी, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लोकेश गोसलिया। लोकेश टीम के कप्तान भी है। अनुज लोकेश अद्भुत कॉर्नर की ये जोड़ी है। करण राम, सरदार चौधरी को बाहर रख के मोनू प्रसाद को अंदर खिलाया गया। नकुल सैनी, मुकेश, रिचपाल, ये वो खिलाड़ी है जो फिलहाल सब्स्टिट्यूट में, लेकिन देखना ये कि क्या कोच इनको शुरुआती क्षणों में ही मौके दे देंगे सब्स्टिट्यूट करके। फिलहाल कॉम्बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर जो कबड्डी के गाते हैं गीत। स्वागत है नवनीत। शुक्रिया। और यहाँ पर चोला वीरन्स की टीम हमें नजर आ रही है। मध्य में रहेंगे मोहन दास, 16 नंबर की जर्सी में देखेंगे। राइट कवर और लेफ्ट कवर की बात करें तो दाहिने तरफ गौतम मुरुगन और बाई तरफ है मोनोघर मारी मुतु। राइट इन और लेफ्ट इन की बात करें तो विघ्नेश मुरुगेशन और लेफ्ट इन पर तलविल वनम। राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर पर है प्रवीण कुमार और महेंद्र प्रसाद। इसके अलावा यप्पन, इनियन, विघ्नेश और रंजीत, ये है चोला वीरन्स के बेंच पर। हेड टू हेड मुकाबले 3 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 2 मुकाबले टाई रहे हैं। एक मुकाबला जीता है चोला वीरन्स की टीम से। इससे ये साफ पता चलता है कि दोनों ही पड़ोसी फिलहाल जो पॉइंट्स टेबल पे हैं, इनकी भिड़ंत में कंपटीशन बहुत टफ होता है, बहुत टाइट होता है। स्कोर डिफरेंस ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन चीजें नहीं चल रही है। क्या इस बूस्टर राउंड के अंदर कोई बड़ा मैसिव स्कोर डिफरेंस देखा जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन सी टीम करके दिखाएगी? दोनों ही टीम के कप्तान डिफेंडर जरूर है, लेकिन फिलहाल बात करेंगे टॉप 3 रेडर्स की। गगन, जिन्होंने 151 का आंकड़ा पार कर लिया है, 16 मैचेस उसके लिए उनको लगे। संस्कार 139 पॉइंट्स के साथ 18 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं। दुर्गेश कुमार थोड़े से पिचड़ से जरूर गए हैं और क्योंकि खेलते हुए नजर नहीं आए, 131 पॉइंट 15 मैचेस के अंदर, लेकिन उम्मीद जरूर की जाएगी कि जैसे जैसे मैचेस और आगे बढ़े इन आंकड़ों के अंदर और इजाफा हो। जी हाँ, और दूसरी तरफ डिफेंडर्स की बात करेंगे। देखिए लोकेश गोसलिया जो टीम के कप्तान भी है, 18 मैच 52 पॉइंट। अंकित हरिराम जाट 19 मैच 52 पॉइंट। और राजेंद्र हंसराज भाकर की बात करें तो 17 मैच में 42 पॉइंट है। लोकेश गोसलिया टीम के कप्तान भी है, सबसे बेस्ट डिफेंडर भी है। साथ ही साथ युवा कबड्डी सीरीज के इस एडिशन में अभी तक सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स किसी खिलाड़ी ने निकाले हैं तो लोकेश है। इसका मतलब ये कि डिफेंस तो पेविया पैंथर्स का सदा हुआ है। चोला वीरन्स अनबीटन है बूस्टर राउंड के अंदर, कॉन्फिडेंस हाई होगा। चोला वीरन्स ने टॉस जीता है, लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया है। पेविया पैंथर्स मुकाबले की पहली रेड लगाएंगे। नवनीत, चोला वीरन्स के लिए हर चीज अद्भुतता की तरह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
इनफैक्ट टॉस भी नहीं गंवाया इस टीम ने। यह इतिहास भी अच्छा है और भविष्य भी। लोकेश गोशलिया 18 मैच में 52 पॉइंट और स्ट्राइक रेट एग्जैक्टली 50%। लेकिन बड़े खिलाड़ियों का शिकार बनाने के लिए खिलाड़ी जाना जाता है, तो दूसरी टीम के अंदर भी खिलाड़ियों की कमी नहीं है। मोहनदास, इनके ऊपर आज हमारी निगाहें रहेंगी। 10 मैचेस खेले हैं, रेड पॉइंट्स 37 आए, रेडिंग का स्ट्राइक रेट 44.57 का। आज हमने सोचा है कि इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि हर दिन अलग होता है और उम्मीद की जाती है किसी ऐसे खिलाड़ी से, किसी ऐसे रेडर से जो अपनी टीम के लिए दिए गए दिन के ऊपर परफॉर्म कर दिखाए और मैच को अपने नाम करें। 3 बैक टू बैक मैचेस जीतना बिल्कुल आसान नहीं। बूस्टर राउंड के अंदर साबित कर रही है अपने आप को चोला वीरन्स। लेकिन पैविया पैंथर्स इन टोटल 19 मैचेस खेले, 11 में जीत मिली, 8 गंवाने पड़े, एक भी टाई इस एडिशन में इस टीम ने खेला नहीं है। लेकिन ओपोनेंट के सामने बैक टू बैक 2 टाई खेल चुकी है। 57% से इनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। क्या पैविया पैंथर्स सबसे एग्रेसिव टीम है समर एडिशन की? ये सवाल पूछा है अजय धीरज रेड्डी ने। सवाल का जवाब निश्चित तौर के ऊपर मिलेगा जरूर, और आप लोग भी अपने सवाल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर युवा कबड्डी सीरीज पे जाके बता सकते हैं। नवनीत, क्या आपको लगता है कि बेस्ट टीम आपके हिसाब से कौन सी है और सबसे एग्रेसिव भी? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीम है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो मैं इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डिफेंसिव यूनिट से बात करें तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि कॉर्नर की पोजीशन सबसे अच्छी यदि कोई संभाल सकती है तो पैविया पैंथर्स की टीम है। लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए यदि आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि चोला वीरन्स थोड़ी सी भारी पड़ती हुई नजर आती है एज फार एज दिस राउंड इज कंसर्न। लेकिन ओवरऑल बहुत अभी लड़ाई बाकी है, तो दोस्त बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आज द एक्सपर्ट के लिए एक और क्वेश्चन आया नवनीत। Why is our team captain अरुण कुमार not playing today? निखिल ने पूछा है ये सवाल, और इसका जवाब निश्चित तौर पे शायद कोच बेहतर बता पाएंगे। अरुण कुमार टीम के कप्तान है, उनको टीम के अंदर होना चाहिए था, और सब्स्टिट्यूशंस के अंदर भी यदि वो आपको नजर आए ना नजर आए, कई सारी चीजें परिवर्तित होती है। और हर खेल के अंदर आप ये देखेंगे कई बार इंजरी कंसर्न हो जाते हैं, कई बार स्ट्रैटेजी इस टीम की नहीं होती है, उसी के चलते कोच ऐसे फैसले लेते हैं। जी हाँ, इंजरीज और जो टीम के कोचेज रहते हैं उनका फैसला लेते हैं, और यहाँ पर दृश्य बेहद खूबसूरत। इस दृश्य का मतलब यह है समय हो चुका है काउंटडाउन का। जोश, जज्बा, जुनून, आज के दिन का ये मुकाबला नंबर लास्ट शुरू करते हैं रेफरी के इस विसल के साथ। रोहित पहली रेड लगाने के लिए पैविया पैंथर्स की तरफ से चोला वीरन्स के उस डिफेंस में जहां गौतम मौजूद है। रोहित यादव अपनी टीम की अगुवाई करेंगे पहली रेड के साथ में। पैविया पैंथर्स एक ऐसा यूनिट जो डिफेंस पैक है, लेकिन चोला वीरन्स का डिफेंस भी आप कम नहीं आंक सकते। उनके डिफेंडर्स के अंदर वो क्षमता है कि वो कैसे भी रेडर को भली भांति समझकर और उसी स्टाइल के अंदर रोक के बताएं। एम्प्टी रेड पैविया पैंथर्स की कॉम बॉक्स में फिर स्वागत है नवनीत का। शुक्रिया। जी हाँ, पहली रेड खाली हाथ गए थे और यहाँ पर आए हैं मोहनदास, विश्व मोहन, कमाल का नाम। यहाँ पर चोला वीरन्स की तरफ से आए हैं मोहनदास, और पूरे 7 खिलाड़ी फिलहाल मौजूद है। और यहाँ पर ऐसा लगा कि अचानक से रुक से गए थे और उस रुके हुए खिलाड़ी को पकड़ लिया गया। राइट। का डिफेंस है, बिल्कुल। वो टेक्निकल इशू की वजह से, ग्लिच की वजह से मैं वो माइक ऑफ करके और कंटिन्यू कर गया। मोनू प्रसाद रेड लगाने के लिए आए जरूर है, और पिछली रेड के अंदर हमने देखा था जो डिफेंस था, मंजीत ने अद्भुत तरीके से फ्रंट ब्लॉक किया, साथ ही कवर के खिलाड़ी ने थाइस के ऊपर धावा बोला, और उसी के चलते पैविया पैंथर्स की टीम को पहला पॉइंट डिफेंस में मिला है। यहाँ पेरियर पैंथर्स का खाता खुल गया है, लेकिन चोला वीरन्स फिलहाल अभी तक इंतजार में है। यहाँ पर पेरियर पैंथर्स की तरफ से डू और डाई रेड आया है। गोपाल सिंह
यहाँ पर 6 खिलाड़ी का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है गोपाल सिंह के खिलाफ, क्या उसे बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पर डू और डाई रेड में गोपाल को जाना होगा मैच से बाहर। 1 point चोला वीरांस। और चोलिया वीरन्स का भी खाता खुल चुका है। गोपाल को उन्होंने शिकार बनाया और किस खिलाड़ी ने? गौतम ने। अपनी टीम के लिए यदि कप्तान स्टेप अप कर दे तो बाकी सारे खिलाड़ियों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो बूस्टर जो बूस्टर राउंड में चाहिए आ जाता है। विघ्नेश को रेड पे भेजा। चोला वीरन्स, पेविया पैंथर्स दोनों एक ही स्ट्रैटेजी पे खेल रही है नवनीत, वो ये है कि अपने रेडर्स को रोटेट करिए। जी हाँ, रोटेशन बहुत जरूरी है और रिसाइकिल भी बहुत जरूरी है। काफी वेस्ट प्रोडक्शन जो होता है और उस चीज का अगर हम लोग रोटेट करते रहे, रीयूज करते रहे तो पृथ्वी बची रहेगी। इसी बीच रोहित यादव आए हैं और वो आराम से वापस गए, क्योंकि चोला वीरन्स की तरफ से 2 बैक टू बैक एम्प्टी रेड आ चुकी थी, इसीलिए तीसरी रेड किसी भी टीम की खाली नहीं जा सकती। डू और डाई की परिस्थिति। मोहनदास रेड करने के लिए, डिफेंस हाउस बैक है, बोनस से काम चल जाएगा। रोहित को शिकार किया तो टच करके बाहर किया। रोहित ने इनकी पोजीशन के ऊपर खुद स्वीकारा कि उनको वो टच आया है और चोला वीरन्स के लिए इससे बढ़िया डू और डाई क्या हो सकती है। ऐसा कहीं लगा ही नहीं था कि स्ट्रगल हुई है। बड़ी आसानी के साथ में अपने पूरे पांव को स्ट्रेच किया और अद्भुत पॉइंट निकाला। ये अद्भुत पॉइंट निकाला। यहाँ पर अनुज सैनी आए हैं पेविया पैंथर्स की तरफ से और जो पूरा साउथ का डिफेंस है यहाँ पर इंतजार कर रहा है अनुज सैनी का। और इंतजार तो डॉन का भी 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, पर क्या यहाँ पर अनुज सैनी को पकड़ना मुश्किल है। वापस गए हैं खाली हाथ। चलिए, अभी तो 4.5 मिनट का खेल शुरू हुआ है और मेरे दोस्त के अंदर का वो बॉलीवुड का फ्लेवर आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार रहता है। पेविया पैंथर्स के लिए अब डू और डाई की सिचुएशन आएगी। नवनीत एंजॉय कीजिए, लुत्फ उठाइए। मोनू प्रसाद यहाँ पर आए हैं और देखिए वक्त गुजर रहा है, 20 सेकंड बचे हैं। मोनू प्रसाद क्या डू और डाई रेड में सफल रहेंगे? आने वाला वक्त बतलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है मुझे। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पर प्रेशर में निखर गए हैं। दबाव दबाव निश्चित तौर पे एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ खिलाड़ी बिखरते हैं तो कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं। मल्टी पॉइंटर रेड लगाई है, 2 पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले गौतम को बाहर किया, महेंद्र भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनको भी बाहर जाना पड़ेगा। शायद इन्वॉल्वमेंट जो था वो सबसे पहले गौतम का ही था। बिल्कुल फ्रंट ब्लॉक करना चाह रहे थे लेकिन महेंद्र उनको किस तरीके से बाहर दे दिया गया वो समझना शायद पिछले फ्रेम में ज्यादा आसान होता। 1 अंक का फासला पेविया पैंथर्स के पक्ष में है जरूर, लेकिन मुकाबला अभी भी बराबरी पे चल रहा है। यहाँ पर बराबरी पर चलता हुआ 7 खिलाड़ी मौजूद है। विघ्नेश आए हैं और विघ्नेश मेरे ख्याल से गणेश जी का भी नाम है। विघ्न को जो खत्म करते हैं 1 नंबर की जर्सी पहने हैं और यहाँ 5 मिनट का खेल हो गया है, वक्त गुजर रहा है। विघ्नेश वापस जाएंगे मेरे ख्याल से। जी हाँ, वापस गए हैं। गोपाल सिंह एक और रोटेशन करके दिखाया पेविया पैंथर्स की टीम ने और यही आवश्यकता है। जितने ज्यादा रोटेशन आप करेंगे आपकी टीम के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 5 का डिफेंस है। बहुत ज्यादा हाई लाइन जाने की कोशिश करेगी भी नहीं चोला वीरन्स की टीम। बोनस एक्टिवेट है नहीं। यदि रेडर को पॉइंट चाहिए तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा, किसी खिलाड़ी को टच खिलाकर वापस आना पड़ेगा, जो कि आसान होता नहीं है। एक और एम्प्टी रेड। नवनीत, आज जिस तरीके से हमें वो थोड़ी ज्यादा इज्जत दी गई थी वो आपको कैसी लगी? आस्क द एक्सपर्ट आज से युवा कबड्डी सीरीज में शुरू हो चुका है डू और डाई रेड के साथ। या बिल्कुल आज द एक्सपर्ट शुरू हो गया है और अगर जब जो यहाँ पर मैच को देखने वाले जनता है अब जब वो इस तरीके से जुड़ते हैं तो बेहद अच्छा लगता है और एक कनेक्शन का फील होता है। कनेक्शन इस खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लोकेश गोशलिया टीम के कप्तान, एंकल होल्ड के माहिर। एक बार एंकल के ऊपर धावा बोलते हैं तो रेडर की रेड को तोड़ते हैं और कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, आंखें हटाई नहीं, एंकल को पकड़ा, साथ ही साथ ट्विस्ट करके रेडर को बाहर फेंका। बाहर फेंका और यहाँ पर इस बार अंदर आए हैं रोहित यादव। देखिए 4 का घर और इस घर को नहीं तोड़ पाएंगे रोहित, उन्हें बाहर कर दिया गया है। विघ्नेश ने उनको बताया कि हमारे इस 4 के घर में एक साइड वाला गेट भी है और वहां से भी आप एग्जिट ले सकते हैं। हालांकि आप चाहेंगे नहीं, लेकिन हमारी मर्जी, हम आपको वैसे ही बाहर भेजेंगे। डैश करा, कॉम्बिनेशन की आवश्यकता इतनी पड़ी भी नहीं, लेकिन जज्बातों के अंदर
थोड़ा सा भी रेडर यदि बह जाते हैं, अपने आंखें फेर लेते हैं डिफेंडर से, तो फिर डिफेंडर यही कारनामा करते हुए नजर आते हैं। शानदार कारनामा यहाँ पर विघ्नेश आए हैं। विघ्नेश और लोकेश आपस में बातचीत करते हुए, मोनू भी लोकेश का हाथ थाम करके बैठे कि विघ्नेश अंदर आएंगे तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन मोनू वहां अकेले चले गए, अकेले चल गए हैं, अकेले पड़ गए हैं और मोनू को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी चूक इतने बड़े स्तर पे मोनू से कैसे हो सकती है? सोलो टैकल करने की, सोलो डैश करने की कोशिश की थी विघ्नेश को। विघ्नेश बहुत साधारण रेडर नहीं है, ये वो खिलाड़ी है जिसके ऊपर आज चोला वीरन्स की टीम निर्भरता दिखाती हुई नजर आएगी। मंजीत मित्रा कवर के खिलाड़ी खेलते जरूर है अपनी टीम के लिए कवर की पोजीशन पे, लेकिन आज रेड के अंदर भी आए हैं। पेविया पैंथर्स ने ये स्ट्रेटेजी सबसे अद्भुत तरीके से निभाई है। जो पहला क्वेश्चन आया था ना नवनीत हमें कि क्या पेविया पैंथर्स इस एडिशन की सबसे अच्छी टीम मानी जा सकती है, उसका जवाब शायद हाँ हो सकता है। कारण ये कि अनुज सैनी जो आपके कॉर्नर के खिलाड़ी है, उनको भी आपने ऑलराउंडर रेडर बना दिया, बीच बीच में आप मंजीत से भी रेड करा रहे हैं। और यहाँ पर है तमिल वनम चोला वीरन्स की तरफ से 4-4। 8 मिनट का खेल हो गया है, गेम थोड़ा स्लो चल रहा है, बहुत बार डू और डाई रेट पर खेला जा रहा है। और तमिल वनम कुप्पू सैमी वापस गए हैं। मैं तो थोड़ी सी जुबान सुख प्राप्ति के लिए तमिज कह देता हूँ इनको, इनका निकनेम बना लिया मैंने, ताकि कहना भी थोड़ा आसान हो जाता है और हमारे जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है। अनुज सैनी 4-4 से मुकाबला बराबरी पे है, दाएं से बाएं चहलकदमी कर जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अभी तक उन्हें कोई पॉइंट मिलेगा। और हर बीतते दिन के साथ में इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस एज ए रेडर बढ़ता नजर आ रहा है। डू और डाई के ऊपर दोनों टीम मुकाबले को खेलेगी। चोला वीरन्स जैसे ही एम्प्टी हैंडेड जाएगी, पेविया पैंथर्स डू और डाई लगाएगी। डू और डाई लगाएगी और देखना है गोपाल क्या करते हैं। गोपाल यहाँ पर 6 खिलाड़ी इंतजार करते हुए गोपाल का, और क्योंकि देखिए बोनस एक्टिवेटेड है तो वहां पर बोनस लेने का प्रयास किया गया, सफल रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि बोनस भी मिला है। 1 पॉइंट चोला वीरन्स। यही तो मुश्किल रही है। पेविया पैंथर्स के रेडर्स ने इस मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं किया है, सिर्फ 1 पॉइंट आया था, वो भी मोनू लेकर आए थे। यहाँ गोपाल को गौतम ने डैश किया है और ताकत गौतम की हम सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा लंबे कद काटी के नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि वो डैश करने की एफर्ट्स में ज्यादातर सफलता पाते हैं। लोकेश के सामने बैक हिट एग्जीक्यूट हुआ जरूर था, लेकिन अभी तक कोई टच नहीं। अगर टच होता तो विघ्नेश अभी तक इस कैंप के अंदर होते नहीं। एंकल होल्ड में चूक, विघ्नेश को सफलता, चोला वीरन्स का डू और डाई सफल। रेडर से 1 पॉइंट चोला वीरन्स। जर्सी नंबर 6 आउट। ये जर्सी नंबर 6 आउट हो गए और विघ्नेश देखिए किस तरीके से अपना पैर छुड़ा लिए। और एक कहावत है कि जब एक कुशल तैराक होता है तो अगर उसके पैरों में जंजीर बांध ली जाए तो वो तैर नहीं पाता है, लेकिन वहां पर उस जंजीर को तोड़ करके मध्य रेखा को क्रॉस किया था मंजीत। फिलहाल कवर की पोजीशन के अंदर चेंज हुआ, पहले गौतम चेन के अंदर थे, फिर वहां शफल दिखाकर उन्होंने बाहर आने की कोशिश की, उसमें उनको सफलता मिली है। अभी भी वो आपको नजर आएंगे, 3 की चेन बीच में है, 2 खिलाड़ी कॉर्नर की पोजीशन पे इनके साथ में होल्ड कर रखे हुए, 2 अंकों का फासला है चोला वीरन्स के पक्ष में। बड़ा स्लो पेस एनकाउंटर चल रहा है, सुपर टैकल की सिचुएशन पेविया पैंथर्स के लिए ऑन है। मोहनदास को यदि रोका जाता है तो 1 के बनिस्बत 2 अंक मिलेंगे, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण रिवाइवल। पेविया पैंथर्स चाहेगा अपने रेडर्स को वापस लाना, रेडर्स मैट के ऊपर पेविया पैंथर्स के लिए नहीं मौजूद। लोकेश अनुज दोनों कॉर्नर खेलते हैं, मंजीत कवर की पोजीशन खेलते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, ये एक सवाल उठ रहा है। जी हाँ, ये सवाल उठ रहा है। मोहनदास वापस गए हैं और मंजीत मित्रा यहाँ पर देखिए 7 का घर है और मंजीत यहाँ पर अपना वक्त ले रहे हैं और गेम बहुत ही स्लो पेस में चल रहा है। मगर मुझे रणनीति बिल्कुल समझ नहीं आ रही पेविया पैंथर्स के कोच की। पेविया पैंथर्स ने सब्स्टिट्यूट करके मंजीत को बाहर भेजा है, रिजपाल को अंदर बुलाया है। क्या ये मंजीत से बेहतर डिफेंडर साबित हो सकते हैं? सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, रिजपाल नए खिलाड़ी अंदर, मोहनदास बैक टू बैक रेड लगाने के लिए आएंगे, बॉक को पार किया और कैंट का पूरा इस्तेमाल करके वापस चले जाएंगे। पेविया पैंथर्स को डू और डाई पे खिलाना चाह रहे हैं, डू और डाई। रिजपाल जाट डिफेंस हाउस बैक, बोनस इनके लिए एक्टिवेट,
दाएं से बाएं चहलकदमी जरूर कर रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर के सामने कॉर्नर के खिलाड़ी से गलती हुई है। लेफ्ट कॉर्नर से ऐसी चूक की आवश्यकता थी नहीं, एंकल होल्ड लगाने के लिए गए, हाफ हार्टेड गए और उसी का खामियाजा महेंद्र प्रसाद को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, हाफ हार्टेड और कुछ भी हो, जब आप पूरे दिल से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। यहाँ पर डुअर डायरेक्ट विघ्नेश की तरफ से और विघ्नेश ने दिशा और दशा दोनों खो दी। आसानी से लोकेश गोशलिया ने उन्हें बाहर कर दिया है। लोकेश ने बहुत लंबी दौड़ लगाई थी, उनके पास में वो ऑप्शन था कि सीधी दौड़ लगा के जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो पूरा आर्क बनाया। उसका कारण ये था कि यदि डैश में कामयाबी ना मिले तो एटलीस्ट फ्रंट ब्लॉक कर कर अपने ओपोनेंट को रोका जा सके। और जितने भी युवा हैं, जो कि युवा सीरीज से भी युवा हैं, उनके लिए सीखने लायक ये चीज है। डिफेंस के अंदर ऐसे ही खेल खेला जाता है। रिचपाल जाट पिछली बार डू और डाई को सही साबित कर आए थे, कॉर्नर की पोजीशन को शिकार बनाकर आए थे, लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं है कि इनका ज्यादा क्रेडिट था। वो गलती कॉर्नर के खिलाड़ी महेंद्र की थी। इस बार भी कॉर्नर से गलती हुई, साथ ही साथ कवर भी बाहर होते हुए नजर आएंगे। प्लीज कम ये बाहर नजर होते हुए आएंगे। 6 और 6 ये स्कोर लाइन है। रेफरी ने एम्पायर्स को साथ में बुला लिया है। पहले ये बैक किक था जो मुझे ऐसा लगा है कि वो कनेक्ट हुआ, फिर गौतम का टच आया। 2 पॉइंट तो निश्चित तौर के ऊपर है। क्या 3 दिए जा सकते हैं नहीं, ये एक सवाल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 2 पॉइंट ही दिए जाएंगे। रेडर से 2 पॉइंट पेरियार पैंथर। नंबर 9 प्लीज। रेडर प्लीज स्टैंड हियर। नंबर 6 प्लीज। प्लीज कम। ऑलराइट देन, रिव्यू की मांग की है चोला वीरन्स ने। रिव्यू अंपायर, चोला वीरन्स चैलेंजेस रेडर आउट, आर डिसीजन 3 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। निर्णय तो 2 पॉइंट का दिया गया था नवनीत। ये बैक किक जो कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर टच हुआ है, उसके बाद कॉर्नर ने डाई लगा के रोकने की कोशिश की। गौतम अभी भी दौड़ रहे थे, गौतम का डैश भी आया। रेडर अभी भी लॉबी के अंदर है। रेडर ने अपने हाथ को, जाट साहब ने अपने हाथ को एक्सटेंड करने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से ये सेफ पॉइंट दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिड लाइन को पार किया है, फिर उनको बाहर धकेला गया। देखते हैं थर्ड एम्पायर का क्या मानना, क्योंकि उनका नॉलेज हमारे नॉलेज से कई गुना। जी हाँ, और मैं भी आपके विचार से सहमत रखता हूँ। मुझे भी लगा कि हाथ क्रॉस कर गया था उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था और यहाँ पर जो फैसला होगा वो ऑन फील्ड अंपायर की तरफ जाएगा और यहाँ पर चोला वीरन्स का जो वो हरी बत्ती है वो शायद लाल हो जाएगी। अगर ये निर्णय रिचपाल के पक्ष में जाता है तो निश्चित तौर पे बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। डिफेंस के तौर पे इनको लाया गया था, लेकिन फिर रेड के अंदर बैक टू बैक 2 रेड्स इन्होंने सक्सेसफुल लगाई। ये तीसरी है जिसके ऊपर चर्चाएं की जा रही है। रिव्यू अनसक्सेसफुल 3 पॉइंट्स पेरियार पैंथर। रिव्यू अनसक्सेसफुल 3 पॉइंट्स सुपर रेड पेवियर पैंथर्स के पक्ष में आएगी। ये इनकी लीड बढ़ाएगी। गौतम बाहर जा रहे हैं, उनका साथ तमेज जो कि मेन रेडर है वो निभा रहे हैं। मोनोकर को भी बाहर की राह होनी पड़ेगी। जी हाँ, इस वक्त मोहनदास फिर से एक बार यहाँ पर फर्स्ट हाफ का खेल चालू है। 7 मिनट से कम का खेल बचा है और देखिए किस तरीके से घेराबंदी की जा रही है। लेकिन मोहनदास अपने फुटवर्क पर काम करते हुए और वो जो घेरा है उसे तीतर बीतर करते हुए, लेकिन समय गुजर रहा है। यहाँ पर समय गुजरा और मोहनदास वापस। और मोहनदास की सबसे बड़ी कमी यही रही है, नंबर ऑफ रेड्स भले उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा लगाई है, लेकिन पॉइंट सिर्फ एक ही मिला है। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, रेड पेवियर पैंथर्स की तरफ से है। रिचपाल ने कमाल कर दिया है, इस बार मोहन को शिकार कर दिया है। बैक किक परफेक्ट एग्जीक्यूशन, पेवियर पैंथर्स डबल डिजिट्स पे पहुंचेगी। चोला वीरन्स ऑल आउट के बहुत करीब। सब्स्टिट्यूशन चोला वीरन्स 2 in 14 out।
क्योंकि चोला वीरन्स की टीम का सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी बचा था। चोला वीरन्स ने कहा चलिए डिफेंस को हटाते हैं, रेडर के ऊपर फोकस करते हैं। रंजीत को अंदर भेजा गया है। 4 अंकों का ये फासला पेविया पैंथर्स के पक्ष में है। बोनस से काम चलेगा सिर्फ 1 पॉइंट के रूप में। यदि चोला वीरन्स की टीम को कुछ रन के लिए वो ऑल आउट को टालना है तो रिवाइवल लाना पड़ेगा रंजीत को, जो मुझे लगता नहीं है आखिरी के 10 सेकंड के अंदर इतना इजी इस खिलाड़ी के लिए होने वाला है। लंबे कदकाठी के हैं, चहलकर्मी भी अच्छी दिखा रहे हैं। लोकेश, कोई टच है या नहीं? बोनस पॉइंट चोला वीरन्स, रेड। सिर्फ बोनस मिला, लोकेश सेव। यहाँ पर सुपर टैकल है, लेकिन समय यहाँ पर चाह रहे हैं रिचपाल की खत्म हो जाए, और यहाँ पर मुझे लगा आउट ऑफ बॉन्ड हो गया खिलाड़ी। रेडर सेव 1+2 3 पॉइंट पेरियार पैंथर्स, ऑल आउट चोला वीरन्स, ऑल इन। जिस स्ट्रैटेजी के साथ रिचपाल ने ये खेल दिखाया है, बहुत इंप्रेस किया है मुझे। स्टार्टिंग 7 के अंदर जगह जीत आनी चाहिए इस खिलाड़ी को। नवनीत, आपने देखा जैसे ही वो रेड लगाने के लिए गए, उन्होंने स्ट्रेट अवे पॉइंट निकालने की कोशिश नहीं की। वो उनको पता था कि मुकाबला स्लो चल रहा है, दोनों टीम ज्यादातर डू और डाई के ऊपर खेलने की कोशिश कर रही है, तो यदि 3-4 सेकंड भी वेस्ट किए जाए तो उनकी टीम के पक्ष में जाएगा ये निर्णय। विघ्नेश वापस रेड पे, 2 अंक ऑलरेडी निकाले हैं। इस बार गलती हुई। कितनी देर तक आप अपने आप को इस तरह से ऐसी सिचुएशन में बचा के रख सकते हैं राहुल? नंबर 6 आउट। यह जर्सी नंबर 6 आउट। विघ्नेश को पकड़ने का प्रयास किया गया, असफल प्रयास था, और 1 पॉइंट मिला है चोला वीरन्स को। आउट होने के बाद उनके लिए ये एक पॉजिटिव स्टार्ट है, और ऑल आउट होने के बाद आप लगातार नहीं चाहते कि आपकी टीम आउट होते रहे। रोहित यादव आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जा रहा था कि क्या बोनस मिला है, शायद नहीं, और यहाँ पर डैश करके बाहर कर दिया गया है रोहित यादव। कोई चांस नहीं, और क्या तेजी से खेल यहाँ पर दिखाया है। बोनस पॉइंट पेरियार पैंथर्स, रेडर आउट 1 पॉइंट चोला वीरन्स। प्रवीण कुमार का इनिशिएशन था, लेकिन उससे पहले बोनस जरूर निकाल लिया। उसी के चलते रोहित को 1 पॉइंट मिलेगा। डाइविंग एंकल होल्ड के ऊपर सिर्फ 1 एंकल होल्ड में आई। विघ्नेश पीछे से सपोर्ट दिखाया, साथ ही साथ मोनोग्राम वहां मौजूद थे, तो उसी के चलते वो जो पॉइंट है वो डिफेंस के पक्ष में जाएगा जरूर। लेकिन फिलहाल सुनते हैं कोच क्या कह रहे हैं। கையை வச்சுனா அடி, ஒன்னு நீ அடி, 2 கார்னர் ரெடியா புரியுதா? நீ ஆடுங்க, ஃப்ரீயா ஆடுங்க. இந்த 5 பாயிண்ட் டிஃபென்ஸ்னா மனம் உடைக்கணும். 5 பாயிண்ட் தான் ரீட் புரியுதா? ஆடு கால, ஆனா உள்ள ரீச் கொடுக்காத அதிகமா என்ன. चोला वीरन्स की टीम में उनके कैंप में कुछ चर्चा जरूर हुई है। अब वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्जैक्टली उनके कोच ने कहा क्या होगा, लेकिन तमिस को रेड पे भेज दिया है। पेविया पैंथर्स के बीच में ये जो 5 अंकों का फासला है, चोला वीरन्स निश्चित तौर पे वो कम करना चाहेगी। ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, अपने सारे स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस इस समय उनके लिए एक्टिवेट है नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 का घर है, और उसी के चलते उनको एम्प्टी हैंडेड वापस जाना पड़ेगा। एम्प्टी हैंडेड वापस जाना पड़ेगा गोपाल सिंह यहाँ पर, और बहुत ही स्लो कर दिया गया है गेम को। 14 और 9 का स्कोर है। फुटवर्क लगातार जारी है, पर प्रयास यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। गोपाल सिंह भी एम्प्टी हैंडेड चले गए। गोपाल ने अभी तक अपना खाता खोला नहीं है। पेविया पैंथर्स के लिए रेड इस खिलाड़ी ने खूब सारी लगाई है, लेकिन पॉइंट उनको कोई मिला नहीं है। मोहनदास दूसरी तरफ चोला वीरन्स के लिए सिर्फ 1 पॉइंट निकाल कर आए हैं। इसका मतलब यह है कि इनके ज्यादा रेड्स भी इनके पक्ष में जा नहीं रहे। लोकेश से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार फ्लैंक चेंज कर रहे हैं, तो आपको खतरा सिर्फ लोकेश से नहीं अनुज से भी है। अनुज थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, लेकिन क्या एंड लाइन को पार किया उन्होंने या नहीं, ये एक सवाल है। एंड लाइन को पार किया, ये एक सवाल है। रिचपाल जाट यहाँ पर आए हैं, और रिचपाल जाट के पास भी एक सवाल है। ये जो 7 खिलाड़ी है, इसको तोड़ पाना क्या मुश्किल है? क्या पॉइंट लाएंगे, या उसी तरीके से पिछली बार एम्प्टी रेड जो हुआ था वैसा ही कुछ होगा इस बार भी? अब 2 चीजें हैं रिचपाल के साथ। एक तो उनकी कदकाठी भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, दूसरा वो है कि वो बेंड हो जाते हैं, तो इससे वो जो कंसंट्रेशन होता है डिफेंडर्स का, वो कई बार थोड़ा सा चूक जाता है। डू और डाई की सिचुएशन आई, दोनों टीम्स धीरे खेल दिखा रही है, और उसी के चलते सिचुएशन बार बार आ रही है। विघ्नेश शायद बाहर हुए हैं, लॉबी का इस्तेमाल उन्होंने पहले ही कर लिया बिना स्ट्रगल में गए। आप ऐसा कर नहीं सकते, जब तक स्ट्रगल ऑन ना हो लॉबी एक्टिवेट नहीं होती, ना ही रेडर के लिए ना ही डिफेंडर के लिए। लोकेश को बैक किक एग्जीक्यूट करते हुए उनकी बॉडी थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई थी, तो जो थी वो जो लॉबी की लाइन है उसको कट कर रही थी। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। नवनीत की अगली आवाज।
जी हाँ, डू और डाई यहाँ है और आप कहे कि लॉबी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस्तेमाल हो सकता है लेकिन आपको पॉइंट देना होगा, ये शर्त है। ये तो फिर नाजायज इस्तेमाल हो गया नवनीत, ऐसा कोई टीम क्यों करना चाहेगी? गोपाल बात, चलिए ये होता रहना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में, जब तक वो हीट बनी नहीं रहती, जोश जज्बा जुनून सिर्फ खिलाड़ी मैट के ऊपर नहीं दिखाते, हमारी भी कोशिश रहती है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते रहें, और यही तो जिंदगी का हिस्सा है ना। जो जो आपके टच में आ रहा है कोशिश करिए कि वो फ्री वाईफाई अपनी एनर्जी का उनको भी दे, उनकी एनर्जी आप भी कंज्यूम करें, ताकि वो बैलेंस चलता रहे। और यही तो है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स सभी यही सिखाती है, स्टेबिलिटी। और दो एनर्जी जब दो वाइब जब मैच हो जाती है तो चीजों में स्टेबिलिटी स्थिरता आ जाती है नवनीत। जी हाँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करने लगे और मुझे याद आ गया, पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है शायद, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन है जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारी घटनाएं है, मैं याद करता हूँ वो स्कूल के डेज, वो कॉलेज के डेज, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, बट यस राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग द स्पोर्ट अ लॉट। 5 पॉइंटों का फासला और शायद वो आखिरी रेड हो सकती थी पहले हाफ की समाप्ति। यस हियर वी गो देन, ऑफिशियल कंफर्मेशन, पहला हाफ समाप्त हो चुका है, पैविया पैंथर्स के पक्ष में गया है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि रेडर्स ने इतने पॉइंट नहीं निकाले। एक सब्स्टिट्यूशन जब किया गया था तब रिचपाल जाट आए, 5 अंक लाके अपनी टीम के लिए छाए। उनके अलावा सिर्फ 2 रेडर्स ने परफॉर्म किया है, मोनू, रोहित, एक अंक उनके नाम। तो वहीं चोला वीरन्स की टीम की तरफ से विघ्नेश को 3 पॉइंट मिले हैं, उनके साथ ही मोहनदास को 1 पॉइंट मिला है। टैकल के अंदर 3 पॉइंट के मिलेंगे पैविया पैंथर्स को, 4 जाएंगे चोला वीरन्स के पक्ष में। ऑल आउट के 2 पॉइंट पैविया पैंथर्स को, एक्स्ट्रा 2 अंकों का फासला पैविया पैंथर्स के पक्ष में। लेकिन चोला वीरन्स जो अभी तक बूस्टर राउंड के अंदर अनडिफीटेड है, क्या अपना परचम फिर लहरा सकती है? जवाब मिलेगा ब्रेक के उस पार। स्वागत आप सभी का मैच नंबर 81। आजकल कई ट्रेन चल रही है दिल्ली से झांसी, नहीं ऐसे ही बस वो थोड़ा राइम करने के लिए था। मुकाबला पैविया पैंथर्स बनाम चोला वीरन्स के बीच में चल रहा है। चोला वीरन्स शुरुआत सदीवी की, लेकिन उसके बाद पैविया पैंथर्स के डिफेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कॉम्बिनेशन टैकल उस टीम ने दिखाया, हालांकि रेडर्स थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे। ओपनर टीम चोला वीरन्स के पास में गौतम जैसा इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, जिन्होंने एक नहीं आज के मुकाबले में अभी तक 2 शिकार बनाए हैं। 2 बार उनको भी बाहर बैठाया गया, वो एक अलग कहानी है। लोकेश गोसेलिया जो कि एंकल होल्ड माने स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने अपने वही स्किल सेट दिखाए, दर्शाए। मोनू से गलती भी जरूर हुई थी, लेकिन दूसरी बार डैश करके लोकेश ने अपने साथी खिलाड़ी को दिखाया था, और यही कॉम्बिनेशन वर्क है। ये वो डैश है जिसकी मैं बात कर रहा था। फ्रंट ब्लॉक करने की भी वो स्किल सेट के साथ साथ प्रिपेयर थे। रिचपाल जाट ये खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होकर आया था, और जैसे ही आया तब से लगातार छाता हुआ नजर आ रहा है। रोहित के ऊपर प्रहार, कॉम्बिनेशन दिखाती हुई नजर आई थी चोला वीरन्स की टीम, लेकिन मुकाबले के अंदर फासला सिर्फ और सिर्फ 5 अंकों का है। बचे हुए 20 मिनट के अंदर 5 अंक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और मेरे साथी नवनीत भी जानते हैं। या शुक्रिया आयुष। विघ्नेश यहाँ पर कूद करके 1 पॉइंट लाने में सफल रहे, और कूदना आपको जरूरी है, फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है विघ्नेश। जर्सी नंबर 6 आउट। और वो कूदने से मुझे लगा कि खरगोश की याद आ गई, देखिए किस तरीके से कूदे। राइट, कूदने के बाद फिर हवा में साइकिलिंग और कर रहे थे, तो बड़े फिटनेस फ्रीक है। आपने सिर्फ कूदने का फायदा बताया, आपकी फिटनेस अच्छी रहती है। इन्होंने कहा लीजिए 1 तीर 2 निशाने करके दिखाता हूँ, सिर्फ कूदूंगा नहीं, साथ ही साथ वो साइकिलिंग करके भी आता हूँ। रिचपाल जाट 5 पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम है, 7 के डिफेंस के अंदर है। हाउस में ज्यादा खिलाड़ी आपको मिलते हैं तो मौके भी इनके पास में ज्यादा रहते हैं। लेकिन महेंद्र को टच मारा है या नहीं, महेंद्र दिशा भूल गए थे। 2 बार कंसंट्रेशन लूज हुआ है इनका। लोकेश ने जो ब्लू कलर का बैंड पहना है, ये बताता है कि वो सबसे ज्यादा टैकल निकालने वाले खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, और
पेरियर पैंथर्स, चोला वीरन्स, ये मैच खेला जा रहा है मैसूरू में, और मैसूरू सैंडल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी। बताइए बजट की बात है नवनीत, आपने सैंडल का कहा तो मैं कोई और सैंडल सोच रहा था, आपने बता दिया चंदन की लकड़ी। जी हाँ, और मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आप उस सैंडल के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा ना नवनीत, बजट की बात है, आपका ध्यान क्यों रहेगा? यू कैन अफोर्ड सैंडलवुड। नहीं, शायद ये बात होगी कि आपको सैंडल गिफ्ट करने होंगे। अनुज सैनी यहाँ पर एम्प्टी रेट के साथ वापस। आमतौर पे जितनी भी फिरकी ली जाती है उससे मैं बच जाता हूँ, लेकिन इस बार लग रहा है कि जहां से मैं फंस जाऊंगा। बहरहाल अनुज सैनी, उनकी रेड समाप्त हो चुकी है। मोहनदास की रेड है, 1 पॉइंट इस खिलाड़ी ने निकाला है। रेड कई सारी लगाई है, फुटवर्क बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन सही जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 5 का डिफेंस, एक तरफ लोकेश, दूसरी तरफ मुकेश। अब इन दोनों के बीच में फंस से गए थे। लोकेश थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, नहीं, अपने आप को डाउन रख रहे हैं, थोड़ा सा लो रख रहे हैं। तेज रफ्तार के अंदर गए जरूर, एम्प्टी हैंडेड वापस आना पड़ेगा। रिचपाल जाट यहाँ पर, देखिए बहुत ही स्लो फुटवर्क, रुक से गए हैं, वक्त गुजर रहा है। और पेरियर पैंथर्स इस समय वो 5 जो पॉइंट्स आगे है उस पर बहुत ज्यादा आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। रेडर आउट, 1 पॉइंट चोला वीरांस। चोला वीरन्स को यही तो चाहिए, कमबैक करने का मौका। यदि थोड़े से भी वीक एफर्ट दिखा देंगे, हालांकि पहली बार इस मुकाबले के अंदर रिचपाल का शिकार हुआ है। 6 पॉइंट निकाले थे, पीछे से थाई होल्ड आया और उसी के चलते गौतम ने भी अपना एफर्ट दिखाया। डू और डाई की सिचुएशन ज्यादा देर तक इस मैच के अंदर दूर नहीं रही। अभी तक इस एडिशन में जितने भी मैचेस मैंने कवर किए नवनीत, सबसे ज्यादा डू और डाई इस मैच में है। लोकेश का एंकल होल्ड, एक और शिकार, चोला वीरन्स का रेडर फिर मैच से बाहर। जी हाँ, और यहाँ पर जिस तरीके से पैर को पकड़ा गया था, बहुत ही मजबूती के साथ उन्हें बाहर कर दिया गया है। 4 के 4 खिलाड़ी, 17 और 12 का ये स्कोर। अनुज सैनी, इस बार पैर पकड़ा गया। अनुज एक वक्त लगा था कि मध्य रेखा को क्रॉस कर जाएंगे, पर फिर उन्हें हवा में उठा दिया गया है। रेडर आउट, और 1 पॉइंट अनुज यहाँ चोला पर वीरांस। बाहर जाना होगा। नंबर 14 प्लीज कम। बहुत कम बार देखने को मिलता है कि अनुज इतना डीप जाते हुए आपको नजर आएंगे। कवर की पोजीशन के ऊपर से वो एंकल होल्ड आया और उसी के चलते इनकी टीम को वो सफलता मिलेगी। पांव पकड़ के गौतम ने पीछे खींचा, पूरी टीम ने उठा के नीचे पटका, उसी के चलते ग्रीन कार्ड मिल रहा है। अब किस खिलाड़ी को, ये शायद हमने मिस कर दिया। बिल्कुल, मोहनदास यहाँ पर फिर से एक बार 4 का घर। क्या इस घर को तोड़ने में मोहनदास सफल रहेंगे या फिर ये जो घर है वो उन्हें घेर लेगा? बिल्कुल घेर लिया है घर ने। रेडर आउट, 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स। मोनू ने अपने जर्सी के पीछे वो जो नाम छपा है, शायद उसको थोड़ा ज्यादा सीरियस कर लिया। उनके लास्ट नाम का लास्ट जो लेटर है वो यू है, और यू टर्न लगाने पे मजबूर कर दिया था मोहनदास को। वापसी है, चोला वीरन्स टीम की वापसी है, लेकिन कब, कैसे, इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास होगा। 15 मिनट का खेल यहाँ से खेला जाना बाकी है। मोनू प्रसाद पिछली बार डिफेंस के अंदर सफलता मिली थी या रेड लगाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन रेड पॉइंट अभी तक इस खिलाड़ी ने इंडिविजुअल लेवल पर सिर्फ 1 निकाला है नवनीत। एक रेड पॉइंट है मोनू प्रसाद के पास, और उनका मन नहीं है दूसरा रेड पॉइंट इस बार तो निश्चित रूप से नहीं लाने का मन था। समय हो चुका है टाइम आउट का, तो चलिए सुनते हैं कोच क्या कहते हैं। राइट कवर वो एडवांस मार रहा है, तो ध्यान रखना, लूज खड़ा, सेफ रेड भी मारता हूँ, लूज खड़ा मत रहना बेटा, ठीक है ना। गोपाल 2 नंबर पर रेड, ठीक है ना। वो मारने की सोच रहा है, जो अनुज की कितनी बार मार दी, तो थोड़ा ध्यान, ठीक है ना। गौतम की बात चल रही है, गौतम थोड़ा सा एडवांस टैकल मार रहे हैं, और इसीलिए जो भी खिलाड़ी रेड लगाने के लिए जाए बस थका हुआ सा खड़ा न रहे, यही कोच ने कहा है। और ये भी कहा है कि अनुज को देखो कितनी बार उन्होंने पकड़ लिया। अब अनुज का तो स्पेसिफिकली मुझे पता नहीं है, लेकिन चोला वीरन्स की तरफ से गौतम ने टैकल तो 4 निकाले, ये तय है। विघ्नेश, और इस वक्त 14 मिनट का खेल हुआ है,
और एम्प्टी रेड यहाँ पर लग रहा है विघ्नेश भी लगाएंगे, लेकिन चोला वीरेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो 5 पॉइंट का डिफरेंस है, लगातार 5 पॉइंट पर रह रहा है। यहाँ पर गोपाल सिंह आए हैं। जी हाँ, एक भी पॉइंट इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में निकाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समय को किल कर आ रहे हैं। ये एक ऐसा लिंक है जो अपनी टीम को और डू और डाई को जोड़ के रख रहा है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ कर रहा है। जी हाँ। और अगर आयुष आपको रेड लगाना होगा तो आप कौन सी रेड ज्यादातर लगाएंगे, एम्प्टी रेड या सुपर रेड? एम्प्टी रेड या सुपर रेड? अब यदि वर्चुअल गेम हुआ तो मैं सुपर रेड लगाऊंगा। अगर रियल लाइफ में मुझे रेड लगाने जाना पड़ा तो मुझे लगता नहीं है कि मैं सुपर टैकल से भी बच पाऊंगा। खिलाड़ी चाहे एक भी क्यों ना बचाओ, बाहर मैं ही जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस हर खिलाड़ी में होना चाहिए जैसा आपके पास है। डू और डाई रेड यहाँ पर गोपाल सिंह लगा रहे हैं और यहाँ पर पकड़े जाएंगे गोपाल सिंह। रेडर आउट, 1 पॉइंट चोला एक वीरांस। इस रन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एंकल होल्ड आया था विघ्नेश का। स्पेक्टेटर्स वहां मुकाबले देख रहे हो, शायद ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितने सेकंड के अंदर वो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे फैन कोड के ऊपर आप तक पहुंच जाता है। रनिंग एंड टच मारने की कोशिश कॉर्नर के खिलाड़ी को की थी। विघ्नेश जो कि इनकी पोजीशन पे थे, उन्होंने एंकल होल्ड किया और कॉम्बिनेशन टैकल के चलते चोला वीरंस ने एक और अंक लिया। फासला फर्स्ट हाफ की समाप्ति के बाद भी 5 अंकों का था। पिछले रेड पॉइंट के बाद, पिछले डिफेंसिव पॉइंट के बाद बैग योर पार्डन, अब 4 का हो गया। डू और डाई की सिचुएशन, ये अपन रेड के ऊपर डाइविंग एंकल होल्ड, अद्भुत। रेडर प्लीज, नंबर 1। डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या कोई और खिलाड़ी भी लॉबी से बाहर गया है या नहीं, ये शायद रिप्ले में ज्यादा कंफर्म होगा। पैंथर्स के खिलाड़ी के चेहरे के ऊपर वो थोड़ी सी शिकन नजर आ रही है। शायद अनसेटिस्फाइड है। एंड लाइन एम्पायर को भी बुला लिया गया। शायद उनसे पूछा नहीं है, उनको सिर्फ बताया गया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स। रेडर को आउट दिया, 1 पॉइंट मिला है पेवियर पैंथर्स की टीम को। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से वो जो डाइविंग एंकल होल्ड आया था, रिप्ले में कंफर्म करते हैं। मुकेश वहां पर मौजूद थे, थाई होल्ड करने की कोशिश की, हाथ थोड़ा सा स्लिप हुआ, लेकिन अपने आप को रेडर से दूर नहीं होने दिया। एंकल के ऊपर दोनों हाथों से वो तगड़ी पकड़ बना के रखी। रिचपाल जाट आए हैं। 1914 ये स्कोर है। पेरियर पैंथर्स चोला वीरंस। 12 मिनट का खेल शेष और 6 पॉइंट मिल चुके हैं रिचपाल जाट को और उनके नाम में है रिच, तो काफी आज को पॉइंट से लबालब रिच है। लेकिन रिच बनना चाहेंगे। 6 पॉइंट से काम चलेगा नहीं। इंश्योर कीजिए कि पेवियर पैंथर्स की टीम ये मैच जीत कर आए, और वो तभी जीत सकती है कि कोई रेडर परफॉर्म करे। डिफेंस अच्छा खेल रहा है। रिचपाल के अलावा किसी और खिलाड़ी ने ज्यादा पॉइंट निकाले नहीं है। उसी के चलते रिचपाल के ऊपर कंधों पे वो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। पिछली रेड रिचपाल की एम्प्टी रही थी, यदि इस बार भी एम्प्टी रेंडर जाते हुए आपको नजर आएंगे, इसका मतलब यह है कि पेवियर पैंथर्स को अगली रेड डू और डाई में खेलनी पड़ेगी। रिचपाल के कंधों पर भार, लेकिन यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों को भी कंधों से कंधा मिलाना पड़ेगा और तभी वो जोश, जज्बा, जुनून नजर आएगा। आइए, चोला वीरंस सिर्फ यही कह रही होगी कि आपको डू और डाई पे खेलना है, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मोहनदास आए, बॉक लाइन को पार किया, एम्प्टी हैंडेड वापस चले गए। डू और डाई की सिचुएशन और रेड करने के लिए रिचपाल 2 बैक टू बैक एम्प्टी रेड लगाई। तीसरी रेड पे रिचपाल खुद आए हैं, क्योंकि पेवियर पैंथर्स की टीम को पता है कि अभी ऐसा और कोई रेडर उनके पास बचा नहीं है। डिफेंस अच्छा खेल रहा है, अपने डिफेंडर्स को वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाह रहे। रिचपाल जाट को भेज दिया गया है। कवर के सामने डाइविंग एंकल होल्ड, ओह बैग योर पार्डन फॉर दैट। डाइव लगा के टच मारने की कोशिश की है, गौतम को टच किया है। अब शायद वो काफ का एरिया था, रिप्ले में कंफर्म करेंगे। उस एंगल से एक क्षण के लिए मुझे समझ नहीं आया। ये एंगल बेहतर है। डाइव लगाई, थाई टच हुई और उसी के चलते वो पॉइंट मिलेगा रिचपाल को। डू और डाई से सेफली अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आए हैं। डू और डाई वहां थी तो यहां भी है, लुत्फ उठाइए नवनीत। जी हाँ, यहाँ पर भी है डू और डाई रेड और इस हाफ में भी 10 मिनट का वक्त गुजर गया है। विघ्नेश, क्या वो कमाल कर पाते हैं जो कि चोला वीरंस के फैन, उनकी टीम और उनके पूरे मैनेजमेंट को उनसे उम्मीदें हैं, और शायद बोनस चुरा करके आ गए। चोला वीरंस स्मार्ट मूव है, एटलीस्ट पॉइंट्स आने दीजिए।
कोच के चेहरे के ऊपर टेंशन हर बीतते पल के साथ बढ़ेगी, क्योंकि ये लो पेस्ड एनकाउंटर है और 5 अंकों का फासला जो कि 10 मिनट पे कवर नहीं किया गया है, तो क्या बचे हुए 10 मिनट में कवर हो सकता है, ये कोच सोच रहे होंगे। अनुज सैनी आज अपनी टीम के लिए इतनी ज्यादा कॉर्नर नहीं खेल रहे, रेड ज्यादा लगा रहे हैं। अब मुश्किल की बात ये है कि जब जब रेड लगाने जा रहे हैं गौतम से पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि गौतम अभी मैट के ऊपर मौजूद नहीं है, अनुज को भेज दिया गया। हो सकता है एम्प्टी हैंडेड वापस आ जाए, लेकिन अभी भी खुद को मैट पे बनाए रखेंगे, ये एक अच्छी चीज। टाइम आउट चोला वीरांस। புரியுதா நான் கொஞ்சம் அப்படி இல்லை ஏமாத்து 2 இருப்பான் அவன் கையை வைப்பான் டப்புன்னு ஆங்கிள் அட்வான்டேஜ் என்ன பண்ணுவான் கையை வச்சு லாபி யூஸ் பண்ணுவானுங்க என்ன நீ பண்ண ஸ்கோர் बीच में नवनीत मैंने 2 बार सोचा था कि वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर तीसरी बात में मैंने सोचा कि यदि ब्रेक नहीं भी होती तो भी मुझे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आनी थी। 5 अंकों का फासला तो अभी भी बना हुआ है। विघ्नेश को रेड पे भेजा गया है, उनका सीधा सीधा सामना लोकेश गोसलिया से होना है। लोकेश के सामने अपने राइट फुट को वो नचाने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस क्या पूरी तरीके से निकाला है? निकाला है। जी बिल्कुल निकाला है। 9 मिनट का खेल शेष, 20 और 16 पेरियर पैंथर्स 4 पॉइंट का लीड बना करके है। अनुज सैनी 0 पॉइंट लेफ्ट। और मुझे याद है कि एक मैच में ये लगातार बहुत सारे पॉइंट लाए थे।